माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, वणक्कम. Memorandum of Business, February 9, 2022. Papers to be laid on the table. Sri V. Muralidharan ji. Respected Deputy Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleagues, General V.K. Singh ji, Sri Ramdas Athawale ji, Sri Nityanand Rai ji, Sri Rajiv Chandrasekhar ji, Sri A. Narayan Swami ji, Sri Ajay Kumar ji, Susri Pratima Bhaumik ji, and Dr. Munjapara Mahendra Bhai ji, I lay on the table of the House the papers listed against their names from serial number 1 to 4 and from 7 to 9 in today's revised list of business. Further, I lay the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. Messages from Loksabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that Lok Sabha at its sitting held on the 8th February 2022 adopted the following three motions. One, that this House do recommend to Rajyasabha that Rajyasabha do agree to nominate 7 members from Rajyasabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the term beginning on the 1st May 2022 and ending on 30th April 2023. And do communicate to the Lok Sabha the names of the members so nominated by Rajya Sabha. 2. That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 7 members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the House for the term beginning on the 1st May 2022 and ending on 30th April 2023. And do communicate to the Lok Sabha the names of the members so nominated by Rajya Sabha. And 3, that the House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate 10 members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term beginning on 1st May 2022 and ending on 30th April 2023. And do communicate to the Lok Sabha the names of the members so nominated by Rajya Sabha. Thank you. Report of the Committee on Papers laid on the table. Rajya Sabha Sri K.C. Ramurthy. Sir, I rise to present the 166th report in English and Hindi of the Committee on Papers laid on the table, Rajya Sabha, on laying annual reports and audited accounts of Sports Authority of India and Lakshmi Bai National Institute of Physical Education. Thank you, sir. Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports. Sri Vinay P. Sasrudhe ji. महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंचीय कला और ललित कला शिक्षा में सुधार यानी परफॉर्मिंग आर्ट और फाइन आर्ट के एजुकेशन में रिफॉर्म्स इस विषय पर विभाग से संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 335वां प्रतिवेदन अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रस्तुत करता हूं। 0 hour, श्री अवीर रंजन विश्वास जी। श्री already Chairman Saab has clarified this position. Already Jairam Ramesh ji. For those 2 days you were not in the house, I remember. Yes, please. Yes, we know. Sri Aveer Ranjan Vishwas ji. It's please 0 hour. Sri Aveer Ranjan Vishwas not present. Sri Jose K. Mani, please. Jose K. Mani, please read. So thank you, sir. I invite the attention of the August House. Mainly a humanitarian crisis facing the entire Kerala, irrespective of it is not only in the villages, rural areas, urban areas, municipalities and corporations, sir. It is nothing but the people of Kerala lives in constant fear to instant wild animal attacks, sir. Last month alone, there are dozen incidents of such cases, sir. You know, sir, Kerala is a densely populated state, a small state, densely populated, and it has a huge forest cover, about 29% when compared to nearby states, sir. Now, there's an unfortunate incident happened
2 days back, sir. A little girl of 5 years old traveling in Tichur district in Adirapalli, traveling along with her parents in a bike. In the middle of the main road, she was stamped and killed by a wild elephant in front of the parents, and parents are seriously in the hospital, sir. Sir, I would like to say that, sir, mainly this is because of the act which is about 49 years back, 1972, the Wild Protection Act was introduced, sir. That is about 49 years back. That is introduced to protect the wildlife, presuming that. Please conclude. Sir, such a very important, sir, the pathetic condition. You have only sir. 2 minutes, sir. Yeah, Please right, conclude. Sir. Yeah, sir, and this bill was introduced presuming that the wildlife will not encroach the habitat area, sir. Now the time has elapsed, 49 years being gone by, the climate has changed. Now you see the animals, the population has increased. Even if you take the wild boar 1,000 times, sir, it's most important, sir, that Kerala is facing a humanitarian crisis, sir. So mic is off now. Manya AD Singh, please. Not going on record. Please, Manya AD Singh, please. You have 2 minutes only, please continue. It's not going on record. It's not going on record. I really wonder, Let him I speak. really It is wonder not going on if you- record, please. Not going on record. How can I speak? आप जानते हैं 0 hour सिर्फ 2 Unless you मिनट tell him to. Not going on record. Please आप बोले. I will not help when I will call other I members. really wonder if we have a rational Please. foreign policy. It's not going on record. Neighborhood which is मैंने आपको मना किया, आप नहीं बोल सकते, आपका समय खत्म हो गया. Please, no. We Please. are living in a Not going on record. which is After totally 2 minutes, it is not on and record. we are bent upon Please. isolating our neighbors. Today, hundreds of students of Afghanistan are stranded in Afghanistan, Kabul and other places whom we are denying visa. Why are we, average Afghan is a very pro-Indian person. And why is yesterday or maybe day before, Dr. Abdullah wrote a letter also, mail also to our Videsh Mantri regarding the visas to be given to the Afghan students whose life is in, so far as education is concerned, will be in jeopardy. And when we know that Afghanistan is very pro-India, we can easily raise a battalion of Afghanis like the Gorkhas and put them in Kashmir to give Pakistan a befitting reply in the ways that they are doing infiltration in Kashmir. Thank you very much. Thank you. माननीय सदस्य सिर्फ 2 मिनट ही बोल सकते हैं आप इस पे. ऑटोमेटिकली माइक ऑफ हो जाता है. इट टू नॉट गो ऑन रिकॉर्ड. अननेसेसरी दूसरे का आप समय लेते हैं. माननीय श्री विकास रंजन भट्टाचार्य. Sir, this is a very important issue. The child labor institutes are running throughout the country, but particularly the West Bengal, I find the institute is running, the teachers are teaching, but they are not getting their salary. Therefore, the Honorable Minister should take care of this situation so that the teachers do not go unfed and ultimately institutes are closed. That has to be taken care of. Thank you. Dr. Sumer Singh Solanki. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय. नर्मदे हर. मैं आपकी अनुमति से सदन में एक महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों के जनजातीय समाज में सिकल सेल रोग बढ़ता प्रकोप हम सबके लिए एक गंभीर चिंता का विषय है. सिकल सेल रोग जनजातीय क्षेत्र में एक गंभीर चुनौती बना हुआ है. यह रोग एक अनुवांशिक बीमारी है जिसे ठीक करना कठिन है. इस गंभीर बीमारी ने भारतवर्ष के मध्य क्षेत्र, पश्चिम, दक्षिण क्षेत्र के जनजातीय समूहों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है. माननीय सभापति महोदय, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ जनजातीय समाज के लोगों की जांच में करीब 11 लाख लोग इस गंभीर बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिसमें महिलाएं एवं बच्चों की स्थिति बहुत चिंताजनक है. मैं सदन का ध्यान मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर और झाबुआ सहित मध्य प्रदेश के अनेक आदिवासी बहुल जिलों की ओर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार 52,000 से अधिक लोगों का सिकल सेल टेस्ट किया गया, जिसमें 8,000 लोग इस रोग से ग्रसित पाए गए. मेरे जनजातीय भाई और बहनों की जांच की जाती है तो यह आंकड़ा और भी भयावह हो सकता है. क्योंकि इस बीमारी का इलाज भी बहुत महंगा है, इसलिए जनजातीय समाज के गरीब भाइयों और बहनों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है.
मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस बीमारी के उपचार में सार्थक प्रयास शुरू किए हैं। इस और कभी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि जनजातीय समाज की भावी पीढ़ी के जीवन को इस बीमारी से सुरक्षित करने के लिए जनजातीय क्षेत्र के अस्पतालों में सिकल सेल रोगियों की जांच और इलाज अत्याधुनिक तकनीकी से हो, ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का निवेदन करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। श्रीमती वंदना चौहान जी। Sir, from the Loksabha. From Loksabha, please. Yes, sir. So Vandana in ji. recent times, we are witness to extremely serious impacts of climate change in our country. So rightly so, India has made ambitious commitments at Paris at the COP26. Out of the two commitments, we are doing extremely well on the front of fossil-free energy. However, on creating carbon sinks to sequester 2.5 to 3 billion tons through forests and green cover, we are extremely lagging behind. In light of this challenge, sir, the recently released State of Forest Report 2021 assumes great significance. We have been mentioning in a tone of great jubilation that the country's forest and tree cover have increased by 2,261 square kilometers. What is worrying is that the term forest cover in this report, sir, includes monoculture crop plantation, coffee, coconut, rubber plantations, orchards, bamboo plantation, even destructive palm plantations, plantations along roads, rails and canals, all areas above 1 hectare having canopy of more than 10%. Sir, this categorization may be in line with the UNFCCC. Such plantations may sequester carbon, but we cannot, by any stretch of imagination, equate them to what we understand as forests, where there is interplay of various life forms and have influence on soil, air, and water. Sir, the fear is that with this kind of computation, tendency to cut down pristine forests may grow to compensate it with monoculture. Honorable PM has said time and again that our objective is not just to conserve forest quantitatively, but to enrich it qualitatively. We need to walk the talk, sir. Through you, sir, I urge that the government makes amends in the categorization system in computation of the forest cover. Also, the data and details is not in public domain. Let the researchers and conclude, Vandana ji. experts The time is sir, over. I urge the government to Thank do you. so. Thank you, sir. माननीय कुमार केतकर जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Not only me, but the whole nation wants to know what is the status of the Clean Ganga project. Prime Minister himself is the chairman of the National Ganga Council, and it was promised that by 2019, Ganga will be cleaned up. Now, Central Pollution Board has said that not only it is not clean, it is unlikely to be clean for many years, and it is not certainly for bathing purposes, while our Prime Minister himself goes and shows that it can be used for bathing. Effectively, it has been used primarily for Shavavahini. More dead bodies have been floating in Ganga than actually even bathing, and more money has been spent on puja part than on Clean Ganga project. From 20,000 crores to 30,000 crores, budget has gone, but nothing has happened. Ganga remains as unclean or more unclean. It was jab this days mein Ganga behti hai, now it has become Ram Teri Ganga Maili. I want to know what is the status of the Ganga project and what is the expenditure allotted and how much money has been spent. Thank you. Thank you, Kumar Ketkar ji. माननीय प्रसन्न आचार्य जी। Sir, my submission is regarding the change of name of Odisha High Court. Sir, the state of Odisha was formed on 1st of April 1936 after a prolonged agitation by the Odia people led by Utkal Gaurav Barrister Madhusudan Das. And sir, after 12 years of the formation of the state of Odisha, the High Court of Odisha was set up on 26th of July 1948. Sir, due to the constant demand of the Odia people, the name of the state was changed to Odisha from Orissa in the year 2011 through the 113th Amendment of the Constitution. Sir, but the name of the High Court still continues to be Orissa High Court, not Odisha High Court. Sir, as the people of Odisha are sentimentally
and emotionally attached to the word Odisha. And our language is Odia, not Oriya. So therefore, sir, there has been constant demand to change the name of Odisha High Court as High Court of Odisha. Similarly, sir, the High Court of Bombay, High Court of Calcutta and High Court of Madras, which are the three oldest high courts of the country set up during the British period, there has been demand for change of the name of these high courts also. In 2016, government brought a bill in Loksabha, but somehow the then 14th Loksabha was dissolved and the bill lapsed. Therefore, sir, I would request the government to bring another legislation, sir, because as there is no central law in which the proposal of change of names of high courts could be addressed, the government has to bring a separate legislation for this. I will urge upon the law minister to kindly bring a bill in this house to change the name of Odisha High Court to High Court of Odisha and also other courts where there has been demand to change the name. Thank you, sir. Thank you. Mane Honorable Sri P. Wilson ji. P. Wilson. Thank you, Deputy Chairman, sir. Please. Honorable Deputy Chairman, sir, Here. I raised to bring to the kind attention of this House an urgent and pressing issue with regards to increasing the retirement age of the High Court judges from 62 to 65 and Supreme Court judges from 65 to 70 years. Sir, judiciary is one of the pillars and lifeline of democracy. It is the final arbiter and interpreter of the Constitution and has played a very crucial role in protecting and shaping the history of this nation. Whether we are on the treasury benches or opposition benches, we finally approach only the judiciary for protecting our rights. Sir, there is a broad-based consensus among all parties and members that it is time we do this to strengthen our judiciary, which is suffering from vacancies and large pendency of cases. We all need the judiciary to be strong and robust. We have not increased the age of retirement of judges since 1963. With advancement in technology and medicine, we are healthier than ever and are able to function well in our 70s, even 80s. Our learned Attorney General is 90 years old of this age and is highly effective. I am personally aware of this because I have argued some cases against him. Sir, many standing committee reports have also consistently recommended this increase in retirement age of judges of High Court. These committee reports have not been deliberated by the government. Then what is the use of the recommendation of the committee? We are spending so much of money on the committees and honorable members are spending a lot of valuable time in attending the meetings and preparation of reports. Why is the government not even considering them? As per Rule 277 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, the reports of the standing committees shall have persuasive value and shall be treated as considered advice by the committees. I think it is a high time to amend this rule to make the recommendation of the standing committee after placing before this House binding on the government, except if it is against the public interest. I call upon the House through our Honourable Chairman to deliberate on this aspect. Sir, I am given to understand that there is some hesitation from the bureaucrats about this bill. However, judges cannot be equated with the bureaucrats. Thank you. Please, There thank are you. eminent Time is legal over. Time is over. Sri Suresh Gopi ji, mic is off. It's not going on record. Sir, I rise in utmost Kindly send your name gratitude here. because you have given permission to me in raising a very important issue regarding peaceful and the plightful condition of the lives of babies in this country, from when they are born up to when they give birth to children and get into the grandmothering mode. I just have to make references to incidents which support my contention in this submission. Cross references from Kerala, and it could be the same case in other parts of the country as well. Sir, right from Vismaya, through many unfortunate girls who were married off, wedded off, with promises which could not be kept or fake promises, alleged promises. And the names in between the two names I have mentioned are very thick, sir. And there is another pack of girls who have met with unfortunate deaths, Krishna Priya, Nitina Mol and Manasa, just for refusing proposals. Since our Honorable President and the Union Government has been highlighting the idea of Beti Bachao, sir, we have to go into the introspection mode, checking how many girls could we save and how many girls are we going to save before
I think I fall into that getting the mic off. I think I should make my prayer. The government, forgetting cooperative federalism and taking into valuable consideration cooperative peopleism, should have Adalat for girls, for women of the country. In all the states, take a direct account, because the UNICEF reports also say that 70% of the... Time. Thank you, sir. Thank you. Dr. V. Siudasan. Respected Chair, sir, here I am raising very serious issue of the student community. So here, students are facing different kind of problems. In this COVID time, their education expenditure has been increased. The same time, University Grant Commission has decreased the number of fellowships and scholarships, sir. So you please look in the matter. Earlier, the data has been revealed by the Minister of Education to my question on this issue in this August House. Sir, the number of emeritus fellowship granted by University Grant Commission has decreased from 559 in 2007 to mere 14 in 2021. So number of S. Radhakrishnan fellowship that decreased 434 to 200. Sir, another scholarship of SC fellowship has come down from 9,503 in 2016-17 to 3,986 in 2020-21. Postdoctoral fellowship for SC and ST, the same kind of things they are facing, that was decreased 554 to 332. Sir, postdoctoral fellowship for women has come down from 642 to 434. Sir, Maulana Azad fellowship, here the UGC has cut down the fellowship that minority student has facing this huge issue. 4,144 in 2016 and 17, it has decreased to 2,348 in 2020-21. Sir, this issue of student community, this issue should be addressed in the House, and the government should address this issue, and the government should help them because they are facing lot of crisis. Their education expenditure has been increased. So thank you, sir. So the House, please intervene in this issue. Thank you. Thank you, Siudasan ji. माननीय शक्ति सिंह गोयल जी. माननीय उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं कि इस विषय को उठाने की मुझे यहाँ मंजूरी दी गई। मैंने जब ये नोटिस दिया 0 ओवर्स में रेज करने के लिए, पिछले एक सप्ताह में 3 अलग अलग हादसों में पाकिस्तान मरीन हमारे वहाँ से 3 बोट के साथ 27 मछुआरों को उठा के ले गई। पर कल रात को एक और हादसा हुआ और 10 बोट और 60 फिशरमैन एक ही रात में पाकिस्तान मरीन हमारे वहां से उठा के वो ले गए हैं। मान्यवर, जिस तरह से वहां हमारे मछुआरों के साथ व्यवहार होता है, हमारी बोट्स उठा के ले जाते हैं, उसमें से सारे पुर्जे इंजन बेंजिन निकाल लेते हैं, माने लाखों रुपया का कर्जा जो मछुआरे के ऊपर होता है, वहां जाके वो उसकी हालत जेल में तो रहते ही है। आज के दिन में 643 हमारे गुजरात के मछुआरे पाकिस्तान की जेल में कैद है। मैं आपके जरिए ये अनुरोध करना चाहूंगा सरकार को कि आप जो करना पड़े अपने डिप्लोमेसी के थ्रू लाल आंख करके करना पड़े, पर जो हमारे मछुआरे गुजरात के 643 आज के दिन में पाकिस्तान की जेल में कैद है, उनके लिए जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए। हमारा गुजरात का जो सीशोर दरिया किनारा है, पूरे देश में सबसे बड़ा वो 1660 किलोमीटर का गुजरात का सीशोर है और पाकिस्तान की सरहद से लगा हुआ है। फिशिंग एक बहुत बड़ा सरकार को भी आमदनी देने वाला, अगर हम जिसको आत्मनिर्भर कहे तो फिशरमैन आत्मनिर्भर होकर वहां पे काम करते हैं। उनको ये पहली बार नहीं, बार बार पाकिस्तान मरीन आती है, उठा के ले जाती है। तो ये मछुआरों की सलामती के लिए कुछ सरकार सोचे, ये मेरा अनुरोध आपके। धन्यवाद, धन्यवाद शक्ति सिंह जी. श्रीमती सीमा द्विवेदी जी.
माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से स्वर साम्राज्य, स्वर कोकिला, भारत रत्न, कीर्ति शेष सुशीलता दीदी का एक तैलचित्र संसद के अंदर लगवाने का विनम्र आग्रह करती हूँ। महोदय, लता दीदी का जीवन से बहुत अनोखी प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन में संगीत की जादुई अलग से सफलता की बेमिसाल इमारत लिखी है। उनका जीवन यह महान संदेश देता है कि ईश्वर ने आपको जो भी विशिष्ट योग्यता देकर इस पृथ्वी पर भेजा है, उसके साथ न्याय करने की क्षमता से भी आपको लबरेज रखा है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हमको सतत साधना करने की जरूरत है। सर, मेरा यह भी अपना मंतव्य है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि भारतीय संगीत की साधना का अध्ययन करता है और सफलतापूर्वक हासिल कर लेता है तो उसे लता मंगेशकर इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया जाए। महोदय, भारत कोकिला, उन्होंने अपने सुर साधना से अनंत आत्माओं को तृप्त किया। चारों दिशाओं में जहां उनका यश कीर्ति फैली, उसी के साथ साथ भारत का भी बहुत बड़ा नाम रोशन हुआ। उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी शालीनता व उनकी सहजता ने इस देश की सभ्यता व संस्कृति का सही प्रतिनिधित्व करती है। महोदय, उन्होंने 36 भाषाओं में संगीत की भागीरथी प्रवाहित करने वाली मातृशक्ति के स्वरूप का जो दिव्य दर्शन कराया है, उनका सम्मान करना इस देश का सौभाग्य होगा। उनका सच्चा जीवन संघर्ष सही मामले में नई पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरित करने का काम करती रहेगी। यह तैलचित्र उनके द्वारा गाए गए देशभक्ति के अमर गीतों के प्रति श्रद्धांजलि व अमिट सनद होगी। महोदय, ऐ मेरे वतन के लोगों, उनके द्वारा गाया गया यह गीत हर भारतीयों के रक्तों में नया संचार करता है। आपका समय खत्म हो रहा है माननीय सीमा जी, थैंक यू। समय खत्म हो रहा है। माननीय अबीर रंजन विश्वास, प्लीज, नथिंग नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ, टाइम इज ओवर। Sir, pertaining to the NGNRG 100 days job, initially 20 crore mandates, sir, had been allotted in the labor budget of the current fiscal, which was achieved by the state government within October 21. Further, sir, there was a request by the state government for 5 crore mandates, and that too thankfully was approved by the center, and that, sir, also has been achieved, sir, within December 21. Now, sir, essentially, keeping in mind with the financial difficulty people are in, especially the poor and the marginalized, the state government under the able leadership of our Chief Minister Srimati Mamata Banerjee was compelled to create 4.01 crore mandates in best interest of the economically weaker sections, ideally adhering to the principle of commitment of a democratically elected government in a welfare state to bail out its financially weaker sections. Sir, it is worthy to mention, pending this sanction, the marginalized and the financially weaker sections eagerly and agonizingly await the payment of rupees 826 crores related to this 4.01 crore mandates. Also, sir, it is mention worthy that in year 2020-2021, on an average, we could provide 52 jobs on an average to the job card holders, and in this current financial year, up till now, it has been 42 mandates. And sir, there has been a request from the state government to the center to allot another 8 crore mandates to take care of the respect of the fiscal. And sir, in this regard, I would like to mention that it most agonizingly, the budget for last year was 98,000 crores. This year it is 73,000 crores. The center needs to rethink on this for in larger interest of the weaker sections. Thank you, sir. Thank you. माननीय श्री के सोम प्रसाद जी, माननीय के सोम प्रसाद, not present. माननीय श्री ब्रिजलाल जी, demand for increase in allowance associated with police medals. महोदय, देश के राज्य की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को माननीय राष्ट्रपति द्वारा बहादुरी और अदम्य साहस के लिए मेडल दिए जाते हैं। एक मेडल कराता है प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, और उसके बाद जो और मेडल दिए जाते हैं उसको बार कहा जाता है। इस पर अलाउंस 2018 के पहले 3,000 रुपया महीना था। इसी तरह दूसरा बहादुरी के लिए मेडल दिया जाता है पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री,
उसका अलाउंस है 2000 रुपीज़ पर मंथ एंड 2000 फॉर एवरी बार। महोदय 24 जून 2018 को इसके अलाउंस में इंक्रीज हुआ। प्रेसिडेंट पुलिस माननीय ब्रिजलाल जी, सॉरी, क्वेश्चन आवर, टाइम इज ओवर। क्वेश्चन आवर, टाइम इज ओवर, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 76, डॉक्टर विकास महात्मे। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। मैं शुरुआत में सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने शिक्षा में गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या बढ़ाने के लिए जो गर्ल्स हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ दी है उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। लेकिन उसी प्रकार आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इसमें लड़कियों की संख्या, गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या कम है, तो उसके लिए सरकार द्वारा क्या उपाय योजना की जाती है ताकि यह गर्ल्स स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े? धन्यवाद। और साथ ही में मैं बस एक सवाल हो गया, दूसरा मौका आपको। नागपुर में इसकी संख्या क्या है और दूसरों को मौका मिलेगा। एक सवाल आपने पूछ लिया, प्लीज नागपुर के साथ में जवाब देना, प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। विद द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वी हैव रेज्ड ए कॉल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये हम लोग केवल कागज में नहीं रखे, ये हम हर कदम में ये उठाते हैं। जैसे मान लीजिए आईआईटी, जो 67 साल में 16 आईआईटी हुआ, और ये 7.5 साल में 7 आईआईटी भी फिर हो गया। और जब मैंने देखा इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में जब लड़कियों को संख्या कितना होता है, ये भी हम लोग स्टडी किया। और ये स्टडी करने के बाद जब हम ऐसे लगा जो इसमें संख्या कम होता है, तब ने हम डिसीजन लिया कि इसको बढ़ाना चाहिए। जब अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट, जब बच्चे जब नहीं आ सकते हैं, उसमें सुपर न्यूमरी करके हम लोग 2018-19 में 17%, 19-20 में 20%, ना yes 14% in 2018 and 19, and 17% in 2019 and 20, and 20% in 2020 and 21। और जो संख्या के बारे में बताए प्रश्न किया माननीय सदस्य जी, 2018-19 में 800 लड़कियों को एक्स्ट्रा लिया है, 2019-20 में 1122, 2020-21 में 1583, और 2021-22 में 1534 सुपर न्यूमरी फीमेल स्टूडेंट्स को लिया गया है। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। We all know that during COVID, what was affected most was the education. So I want to know from the minister, honorable minister, what measures government took for the admissions, because the admissions should not be less. So what measures were taken to increase the number of admissions in these colleges, engineering colleges specifically? सदस्य ने ये हमारे जो कोविड संकट के समय बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। सारे देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से बहुत अच्छे से जूझ रहे हैं, और अच्छे से ये जैसे सुनिए ना, जैसे हेल्थ में वैक्सीनेशन दुनिया में सबसे अच्छा किया, इसी के तरह हमारे नए शिक्षा नीति ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। इसलिए हम कोविड सिचुएशन में इंजीनियरिंग में बहुत सारे कदम लिया है। पहला कदम नंबर 1, जो वहाँ माननीय मंत्री जी ब्रीफली जवाब दें, बहुत सारे लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% था पहले, उसको हम लोग हटा दिया। जो जेई एडवांस में वो 75% था, उसको हटा दिया, और 1 एडिशनल चांस भी दिया 2020 में, जो रजिस्टर्ड किया लेकिन परीक्षा में अपियर नहीं हो पाए, उसको हम लोग मौका दिया। इसके छोड़कर 2021 में जेई मेन में तो हम 4 बार परीक्षा हुआ, और इसके साथ एआईसीटीई के द्वारा इस बार 13 लैंग्वेज में हमारी जेई परीक्षा हुआ। थैंक यू। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया उपसभापति महोदय। मेरा आपके माध्यम से
माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि हाल के वर्षों में आईआईटीज में और कई सारे यूनिवर्सिटीज में नॉन फाउंड सूटेबल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मनोवृत्ति एक प्रवृत्ति का हिस्सा बनती जा रही है, खास तौर पर एससी, एसटी एंड ओबीसी अपॉइंटमेंट में। क्या सरकार इसको संज्ञान में लेकर के कुछ बेसिक इंटरवेंशन करने को सोच रही है? महोदय, माननीय सदस्य को ये बताने चाहता हूं मैं कि हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये इंक्लूसिव है, ये माने अकाउंटेबिलिटी एंड टू ऑल। नेचुरली ये हम लोग सबको लेकर ही चलते हैं। ये हम लोग हमारे संज्ञान में है। हम विकास रंजन भट्टाचार्य जी। 6,535 sanctioned posts are lying vacant in the central universities, which includes IIT and other institutes of technology. What steps are going to be taken to fill up these vacancies? Thank you. Which is more fundamental. Thank you. Thank you. हमारी appointment of teacher is a continuous process, and in our national education policy, we are always eager to this, and it is stated, including IITs, to fill the vacant positions in their institution in mission mode. We are taking it in mission mode with a period of 1 year, that is from 5th September 2021 to 4th September 2022. To monitor the action taken and progress made, IITs were directed to include a chapter in their annual report. Look at annual report depicting the status of filling up this post, including the agenda in their board of governance, giving status of action taken in this regard, and to send a monthly report to the secretary. We are very sincere on this. Mr. Kamakhya Prasad Tasa. चेयरमैन सर, मैं मिनिस्टर को विस्तृत आंसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा क्वेश्चन है, जो डिटेल्स उन्होंने दिया है यूजी वैकेंट सीट्स, यूजी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जितना है पीजी और पीएचडी में ज़्यादा हो रहा है। प्रति वर्ष इतना वैकेंसी होने का कारण क्या है, जहां पर आदमी लोग पीजी और पीएचडी के लिए क्या इच्छुक नहीं है, या क्या कारण से इतना वैकेंसी अराइज किया, इसको माननीय मंत्री बताइए। महोदय, माननीय सदस्य का ऑब्जर्वेशन एकदम ठीक ही है। हाँ, वैसे हमारे देश आगे बढ़ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट the high level attrition in masters and PhD program due to better employment opportunity. जब बच्चे लोग रिसर्च में जाते हैं उसी समय उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। And the family reason sometimes for earning after graduation and better placement in our education opportunities in foreign nations, बाहर भी जाते हैं। हमारे ये के बच्चे को बाहर भी बहुत लोगों की डिमांड है। इसके साथ साथ प्रायोरिटी टुवर्ड्स मैनेजमेंट एंड अलाइड सब्जेक्ट्स टू द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये हम जो कहते हैं ना अच्छे दिन, वो स्टार्टअप बहुत सारे आज वर्ल्ड में हम 3 नंबर पोजीशन में हमारे स्टार्टअप है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ग्रेजुएशन with soft loan opportunity, and they are making the startup, and the higher salary or income or employment after graduation that the research fellow ऐसे जैसा होता है इससे ज़्यादा मिलता है उनको। And thank you. Question number 77, श्रीमती गीता एलास चंद्र प्रभा जी अनुपस्थित। माननीय मंत्री जी। A statement is laid on the table of the House, sir. श्री राम कुमार वर्मा। माननीय उपसभापति जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं केंद्र सरकार को और मंत्रालय को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिव्यांगजन के लिए बहुत सारी स्कीम्स और उनके लिए
2016 का एक्ट के द्वारा वो किया। मैं जानना ये चाहता हूँ कि इसमें नेशनल इंस्टीट्यूशन और CRC के सेंटर खोले गए। मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, तो राजस्थान प्रदेश की स्थिति क्या है और क्या CRC सेंटर राजस्थान में खोलने का विचार है क्या? Sir, we have taken a major steps on this regard. We have 9 national institutes are there. We have 9 regional centers are there. Composite regional centers, we have started 21. Even wherever the CRC are there, we are getting the reports. One proposal before the government. Let the proposals come. After that, we will see whether it is essential or not, sir. माननीय प्रसन्न आचार्य जी. Sir, as this question relates to persons with disabilities, whom we call in a very honorable way the Dibhyangajana, I would like to know from the honorable minister whether any study or assessment has been made to know how many Dibyangajanas are in the country who are qualified and capable of seeking jobs and who are seeking jobs in government and private sector. Whether government will consider to increase the percentage of reservation for these Dibyangajan in the government sector and the private sector as well, so that these qualified Dibyangajan can get jobs as per their qualifications. Thank you. Sir, in the country, we have made a census in 2011. There is 2,68,14,994 Divyangajan is there. With regarding male, 1,49,88,593 males are there. Females are there, 1,18,26,401, sir. But what I must know, that is earlier, there was only disabilities are included only the 7, sir. Only 7 earlier. After that, we made an act on 2016, the range of disabilities. We included nearly 21 disabilities for this disability program, sir. But we have increased this reservation policy from 3% to 4% reservation in the employment as well in the private sector also, sir. We are looking, we have no any statistics from there, sir. Thank you. Mr. KJ Alphonse. I'd like to know from the Honorable Minister whether they would be able, government would be able to provide free artificial limbs to all those who are required. There are a very large number of people who, if it is provided, sir, they could have a life. Thank you. Sir, honorable member, it's a good question he has made, sir. Under ADIP scheme, grants in aid from 7 years, we have spent nearly 1,311 crores was utilized during the last 7 years. Current year benefited nearly 21,59,000 lakh people were benefited, sir. Now we have made the camps of nearly 11,505 camps we have attended, sir. Out of these mega camps, 1 campus in Gwalior was graced by the Honorable President, and 5 camps were graced by the Honorable Prime Minister at the Varanasi, Navsari, Vadodara, Rajkot, and Prayanjan, sir. We have made some special operations for the Divyangas, sir. Kohler implement nearly 3,965. We have made an operation, sir. It is for this, here in this speech, sir. This is from the help of this CSR fund, sir. Metallized tricycles are there, sir. We have given 27,028 metallized tricycles, sir. We have given in the country, sir. At the same time, there is so many programs, camps we have conducted, sir. Scheme of the Assistance with Disabilities Persons for the purchase. There are 6 production units of the artificial Honorable limbs. Minister, please reply briefly because Sir, others can get sir, opportunity. this is the very helpful to the handicapped, Right. sir, disabled, sir. This is Yes, I know. Nobody is there to convey the minister to had aids and assistance for their constituency, sir. This Alamco is there. It is, we have got the manufacturing units, sir. The Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India is the country such as in Kanpur, Bangalore, Bhubaneswar, Ujjaini, Jabalpur, Mahali, and Alchem is producing over there 350 different types of aids and appliances in the Divyangas, sir.
The quality of these products are second to the. Please none be of the brief world. now. Do But not. we cannot always. Please be brief. Please be brief. Thank you. माननीय सदस्यगण, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप में से मेंबर्स बार बार कहते हैं हमारे क्वेश्चंस नहीं आए। माननीय मंत्रीगण और माननीय सदस्यों दोनों से आग्रह है कि अगर ब्रीफली आप पूछेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को अपॉर्चुनिटी होगा। अगर माननीय मंत्रियों को विस्तार से डाटा देना है तो संबंधित व्यक्ति को भेज दें। माननीय श्री नीरज शेखर जी, क्वेश्चन नंबर 78। प्रश्न संख्या 78। माननीय मंत्री जी, पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न में आप भी एसोसिएट करिएगा, मैं चाहूंगा। माननीय मंत्री जी का जो जवाब है, मैं पहले बधाई देना चाहूंगा। मैं फिर लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि हम नेशनल हाईवे 4 लेन कर रहे हैं और ग्रीन फील्ड भी बना रहे हैं। इसका मैं चाहूंगा एक स्पष्टीकरण आ जाए कि ग्रीन फील्ड भी बन रहा है कि जो वर्तमान नेशनल हाईवे 31 है, जो गाजीपुर से माझी घाट तक है, उसको 4 लेन कर रहे हैं हम लोग, और ग्रीन एक्सप्रेस भी बन रहा है। उसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने जो कहा है कि इसमें जो दिया है कब तक काम शुरू हुआ, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने 2016 में इसका शिलान्यास किया था और अब 2022 है। तो मैं चाहूँगा कि ये भी स्पष्ट हो जाए कब काम शुरू होगा, क्योंकि अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ और बड़े बड़े गड्ढे हैं उस नेशनल हाईवे में। सर, ये जो रोड के बारे में जिक्र कर रहे हैं, एक पुराना रोड है जिसके बारे में माननीय सदस्य की सक्रियता से उसके ऊपर तकरीबन 81 करोड़ का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि वो रोड काफ़ी खराब हालत में थी। उसके बाद इस चीज़ के ऊपर विचार किया गया कि क्या इस रोड के अलावा हम एक छोटी रोड बना सकते हैं जो उसका रास्ता थोड़ा छोटा हो। इसलिए एक नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट बन रहा है जो कि शुरू होकर गंगा पार करके जाएगा और इसके अंदर एक स्पर दिया गया है जो कि बक्सर तक जाएगा। ये जो रोड जो नया जो हमारा 4 लेनिंग है गाजीपुर से बलिया और यूपी बिहार बॉर्डर तक, इसमें डीपीआर बन चुकी है, 4 लेन का रोड होगा और इसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो रहा है क्योंकि डीपीआर इसकी बन चुकी है। इसके अंदर एक चीज के लिए लैंड रिक्वायरमेंट जो है 3A हो चुका है, 3D होना बाकी है। हम 3D इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा इसी के साथ जा रहा था, तो दोनों के बीच में तालमेल करने के लिए, ताकि सरकार का पैसा एक ही जगह पर लगे, एक ही अलाइनमेंट के अंदर 2 रोडों का कोई फायदा नहीं था, इसलिए थोड़ी सी उसमें देरी है। जहां तक प्लीज do not talk like this. You are not supposed to talk like this, Mr. Biswa. Please reply. दूसरा जो कि पुराना जो कि हमारा नेशनल हाईवे 31 है, इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। जैसे मैंने बताया 130 किलोमीटर का है और तकरीबन 81 करोड़ रुपया इस पर सैंक्शन हो चुका है, काम चालू। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा। सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय नीरज जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इन्होंने कहा रिविलगंज में बाईपास बन रहा है, लेकिन आप जानते हैं, खुद आपने अनुभव किया होगा बलिया शहर में जहां आवश्यकता है बाईपास की, क्योंकि इसका भी वहां पे उन्होंने कहा था माननीय मंत्री जी ने कि बाईपास बनेगा, क्योंकि आज के दिन रोजाना वहां पर जाम जैसी स्थिति पूरे दिन बनी रहती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बलिया में भी बाईपास बनेगा क्या? सर, जो पहला इनका सवाल था कि क्या दोनों रोड बन रहे हैं, उसका उत्तर है दोनों बन रहे हैं। ग्रीनफील्ड भी बन रहा है, पुराने वाले को ठीक किया जा रहा है। दूसरी चीज जो कि जहां तक बलिया का सवाल है, पहले प्रपोजल था कि बलिया के अंदर एक ओवरब्रिज दिया जाए, एलिवेटेड सेक्शन दिया जाए, उसके लिए वहां पर स्थान कम है, इसलिए बाईपास का प्रावधान है। साथ ही आगे जाकर रेवलगंज का बाईपास भी बनेगा, ताकि शहर को बाईपास करके हम उसको आगे रोड से मिला सकें और उसको आगे हाजीपुर तक ले जा सकें। बलिया के कंजेशन के लिए जरूरी था कि इसमें बाईपास बने, वो बाईपास ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का बनेगा। धन्यवाद।
Mani M. Sanmugam ji. Question relates to NH of Gazipur to Hajipur. Your question is related to this, then you can ask. Sir, Please. I want to ask a question Please. regarding the national highways. It's related to Gazipur to Hajipur, sir. Sir, I Shri, want to ask the question of the Tamil Nadu. Ramila Tamil Vichar Nadu, bhai. sir. Ramila Vichar bhai. Bara. It is a national highway, sir. Bara. Sir, he is not asking about Tamil Nadu, he wants to ask question about Sir, this question relates to Gazipur to Hajipur. I have made it clear. Sir, I am asking and this is the national highways. convention and rule of the Sir, House. I am asking Please. national highways, sir. Please. What is the Shri progress of Kanak the... Medla Ravindra Kumar, your question is Gazipur to Hajipur. No, my lord, regard to highways. Come to the next question. Ask on the next question, I will give you opportunity. Question number 80, Dr. Vinay P. Sahasrabuddhe. Dr. Vinay Sahasrabuddhe, please. Question number 80. Question number 80. Question number 80. It's for 16.7.3. Question, Mani Mantri ji. Sir, the answer. First supplementary. Yeah, that is what I'm saying. So the answer very clearly shows that for whatever the reason, but the polytechnics and ITIs in Maharashtra who were provided with a huge amount of financial support. It's postponed, already postponed, coming on 16.3. It's mentioned. Sir, the member has requested that he will be present on 16.3, so this question has been postponed. Please. 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 सर मेरा सप्लीमेंट्री ये है कि महाराष्ट्र के पॉलिटेक्निक और आईटीआईज को बहुत अच्छे तरीके से केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता मुहैया कराने के बावजूद महाराष्ट्र के पॉलिटेक्निक और आईटीआईज उस सहायता का सरकार की लापरवाही के कारण शायद उपयोग नहीं कर पा रहे। जैसे इस जवाब में बताया गया है कि 130 करोड़ महाराष्ट्र को दिया गया था, मगर 18 से लेकर 21 तक कोई उपयोग नहीं किया। आईटीआई नासिक को लगभग यहां पर लिखा गया है कि 6 करोड़ रुपया दिया गया था, उपयोग नहीं किया। इसकी वजह क्या मैं जान सकता हूं? Sir, the polytechnics and ITIs are a very important part of our education, higher education and skilling network. Polytechnics are administered by the Ministry of HRD, Ministry of Education and the AICT. And and the ITIs are administered by the Skill India, that is the MSD ministry, sir, of which whom I represent. Sir, the question that is being raised by the honorable member relates to the fact that money has been allocated. Money has been allocated to polytechnics and ITIs in the state of Maharashtra. However, they have not been able to have that money released to them. And the reason for that is very simple, sir. There is a condition that the state government that is responsible for the administration, day-to-day administration of these institutions, have to submit a utilization certificate. And those, as long as those utilization certificates are not submitted, no release can be made under the Government of India rules, sir. Thank you. Second supplementary. Sir, I would also like to know sir, what are the reasons for their inability to provide the utilization certificate? Not going on records, please. Whether, sir, there are any allegations of maladministration and corruption which is rampant in Maharashtra. I would like to know whether there are any allegations pertaining to corruption and maladministration in Maharashtra. The not providing of utilization certificates is certainly a matter of concern, because these relate to education and skilling institutions that relate to and that affect the lives of youth. So if the member has any information relating to why these utilization certificates are not forthcoming, I would invite him to submit the same to me and I will look into it, sir. Thank you. Mani Shri Anil Desai ji. Sir, Honorable Minister has given a very elaborate answer regarding the provisions which are made in especially polytechnics and ITIs, which come under Skill Development Ministry.
and my colleague while saying that he has Question, please. blatantly, no, I want to make a mention. Blatant accusations on the Maharashtra government is absolutely not tenable, and it is not Please put accepted. question, Manya Mildesai Because ji. the fact of the matter in this answer, whatever is been given by the Honorable Minister, mentions that these are the things which come from the center and provisions to be Are you asked. not asking question? I'm asking the Minister, sir, to Right. you. Can Minister say, or can Minister give me answer on this, that there are several private polytechnics are there after the Skill Development Ministry has instituted and given impetus to this particular sector to generate employment in Please the be state. brief, Anil ji. And there is nothing of state government as such, and even I would like to ask the Minister to see from the Maharashtra government, even I know Please for certain put question, that- otherwise that I'll move to other polytechnics and ITIs have time and again asked for the assistance which have not Are you come are from you the asking your ministry. question What or is the not? answer for neglecting state of Maharashtra? Question which is a Dr. V. Sivasan, please. Development centers are very less now, so the Adivasis and Dalits, It's not explanation. are facing lot of Questions problems. are, you are supposed to ask a I am question, you will requesting reply. the question Please. Please. whether government has any plan to start new skill development centers in Adivasi areas, rural India. अभी देख, प्लीज माननीय मंत्री आप बताएं। माननीय सदस्यगण, आपको सवाल पूछने हैं, आप 0 आवर नहीं पढ़ रहे हैं, कृपया सवाल पूछिए प्लीज सवाल क्वेश्चन हिज आंसर एंड हिज आंसर यू गिव प्लीज he is replying to that, you go and listen. This question. His question you reply if you feel it will. Please. Sir, the honourable member. Please. Sir, the honourable member is agitated about something that I don't think he should be agitated about. The question was why, when money has been allotted to certain institutions that are important for the development of skilling and education. He is replying. He is replying to that. So I clarified that the utilization certificates have not come from Government of Maharashtra. And it is important for the member to make sure that the utilization certificate comes. Because this money is allocated, Now he is allotted to the... Now B. Sivasan's reply. Sir, I would urge through you, sir, to request the member to ask the Government of Maharashtra to submit the utilization certificate so that the funding can be released. That is all. That is over. Sir, V. Sivasan reply. Yes, sir, V. Sivasan. the question by... Reply. Sir, as far as the question by Honorable Member Shivdasan is concerned, sir, this question pertains to Maharashtra, it pertains to ITIs and polytechnics, and he is asking questions about the broader Skill India network. I can assure him, sir, that we are very focused on growing the Skill India and taking it to every cluster, including tribals of India. So if there is any specific information he wants, he is welcome to visit me in the office and I will share it with him, sir. Question number 81, Sri Rakesh Sinha. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, सभापति महोदय, हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेज के रूप में माओवाद प्लीज यू नो द रूल पोजीशंस माननीय जयराम रमेश जी, आपस में बात ना करें। यू नो मोर अबाउट इट, प्लीज जो भी प्लीज जो विचारधारा न सिर्फ हिंसा पर आधारित है बल्कि देश को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास कर रहा है। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इसमें अर्बन नक्सल का जो समर्थन मिल रहा है, जो लोग पत्रकार और शिक्षाविद के नाम पर छिपकर इस नक्सलवाद को, माओवाद को बढ़ा रहे हैं, और यह आयातित विचारधारा को मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि इस आयातित विचारधारा विश्वविद्यालय और पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जो अर्बन नक्सल के नाम पर देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और उस अर्बन नक्सल को कुछ मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही हैं, उस अर्बन नक्सल को सिर्फ आपका सवाल रिकॉर्ड पे जा रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। प्लीज उनके विदेशों से उनके संबंध, उनको मिलने वाले फंड के बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। सवाल पूछे।
माननीय मंत्री जी और सभापति महोदय, माननीय सदस्य राकेश जी ने एक ही बार में कई प्रश्न पूछा है और बड़ी ही बारीकी से पूछा है। मैं उनको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सदन को भी कि भारत में माओवादी विचारधारा हमेशा, जैसा उन्होंने कहा है कि विचारधारा आयाती थे, उस पर मैं कह रहा हूँ कि भारत में माओवादी की विचारधारा हमेशा विदेशी माओवादी संगठनों और विचारकों से प्रभावित होते रहे। अगर इसके विरुद्ध देश में कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस मुद्दे को उठाते हैं और इनकी सहायता के लिए आगे भी आते हैं। सीपीआई माओवादी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर माओवादी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। उपसभापति महोदय, वामपंथी उग्रवाद की विचारधारा विध्वंसक एवं मानवता विरोधी है, जबकि प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति और सोच की गोद में पल रही भारतीय विचारधारा रचनात्मक एवं मानवतावादी है। भारत विरोधी नारा लगाने वाले और भारतीय महापुरुषों का अपमान करने वाले विचार कभी भारतीय विचारधारा का अंग नहीं हो सकते। ऐसी विचारधारा विदेशी विचारधारा से ही ओतप्रोत है। भारतीय जो रचनात्मक और मानवतावाद की विचारधारा है के वाहक दुनिया में लोकप्रिय एवं गरीबों के मसीहा माननीय नरेंद्र मोदी हैं। वामपंथ विचारधारा की विचारधारा भारत में आई भी और पली बढ़ी भी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी तेजी से समाप्ति की ओर भी बढ़ रहा है। जहां तक इन्होंने शहरी वामपंथ उग्रवाद की बात कही, भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना वामपंथ उग्रवाद की शहरी गतिविधियों सहित इसके सभी स्वरूपों से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है। यह हम जानते हैं कि वामपंथ उग्रवाद की कोई भी गतिविधि सोची समझी रणनीति के तहत की जाती है, जो देश की सुरक्षा और विकास में भी बाधक बनती है, चाहे वह शहरी क्षेत्र की गतिविधियां हो। यह भी सर्वविदित है कि वामपंथ उग्रवाद लोकतंत्र में विश्वास और हथियार के बल पर व्यवस्था बदलकर एक डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। जहां तक तो इस तरह से जो माननीय राकेश सिन्हा जी का प्रश्न है, आप कहते हैं तो मैं इसको इस संक्षिप्त में हमने इनका उत्तर दिया है। अगर और विस्तार में जानना चाहेंगे तो कभी उनको हम प्लीज माननीय सदस्यगण प्लीज सेकंड सप्लीमेंट्री आप पूछे इसके पहले प्लीज आप एक सेकंड सप्लीमेंट्री लिंकेज के विषय बताएं। सेकंड सप्लीमेंट्री आपको ना प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप सबसे मेरा आग्रह है, सवाल पूछते वक्त आप जीरो आवर करने लगते हैं, उत्तर देते वक्त माननीय मंत्री लंबा होते हैं, और सवाल से अगर संतुष्ट है तो उसकी क्या प्रक्रिया आप सदस्य जानते हैं। सारी चीजें रूल्स के तहत चेयर करता है। चेयर के हाथ में क्या, आप अगर अच्छी तरह सवाल पूछे, माननीय मंत्री अच्छी तरह जवाब दे तो हम और सवालों का जवाब पा सकते हैं। प्लीज सेकंड सप्लीमेंट्री प्लीज, और सीट पर बैठ करके प्लीज ना बोले। क्वेश्चन आवर में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं झांसा, प्लीज बैठ जाए। प्लीज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन क्वेश्चन आवर, प्लीज सभापति आप बैठे सभापति महोदय आप बोले, सिर्फ आप, इट्स नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड, प्लीज आप बोले। 2015 में सरकार ने नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान के तहत सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच से वेलफेयर ड्रिवन अप्रोच की ओर ले गया, जिससे नक्सलवाद पर बहुत नियंत्रण हुआ। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत वर्षों में सरकार के द्वारा उठाए गए कदम से 60 जिलों में जो नक्सलवाद फैला हुआ है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसके साथ साथ सभापति महोदय, धन्यवाद, एक सवाल हो गया आपका। सभापति महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग अर्बन नक्सलवाद को लेजिटिमेसी देते हैं वो देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, और मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। राकेश जी, एक सवाल हो गया, प्लीज संक्षेप में। माननीय महोदय, संक्षेप में बोल रहा हूं। माननीय मोदी जी की सरकार ने वामपंथी उग्रवाद की समस्या को प्रभावी तरीके से हल करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को 2015 में मंजूरी दी।
बहुआयामी कार्य नीति पर आधारित है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकास संबंधी उपाय, आदिवासियों और स्थानीय समुदाय के अधिकारों और हक को सुनिश्चित करना आदि शामिल है। इस योजना के दृढ़ क्रियान्वयन के फलस्वरूप पूरे देश में वामपंथ उग्रवाद के परिदृश्य में अत्यधिक सुधार हुआ है। महोदय, इसके परिणाम स्वरूप हिंसा की घटनाओं में, जैसा जानना चाह रहे थे, विगत कुछ वर्षों से, मैं चाहूंगा कि उसको मैं संक्षिप्त में बताऊं। हिंसा की घटनाओं में 70% की उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2009 के 2028 के उच्चतम स्तर से घटकर 2021 में 509 हो गई है, 509। इसके परिणाम स्वरूप मौतों में तो कमी आई ही है, भौगोलिक विस्तार में भी इसमें कमी आई है। इसी तरह परिणामी मौतों की संख्या 2010 के 1005 के अब तक के उच्चतम स्तर से 85% घटकर 2021 में 147 हो गई है, 147। वामपंथी उग्रवादी विचारधारा के शिकार जिलों की संख्या 2010 में जो 96 थी, वह 2021 में घटकर 46 रह गई है, 46 रह गई है। माननीय उनका प्रश्न था सर, तो मैं जवाब तो दे दूं। वर्ष 2013 के परिदृश्य में 2021 में हिंसक घटनाओं में 55.2% की कमी 1136 से घटकर 509 और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों में 50.4% कमी, यानी 397 से घटकर 147 हो गई है। माननीय मंत्री जी, डिटेल रिपोर्ट है तो भेज दे प्लीज। कंक्लूड, लेट अस मैं कंक्लूड कर रहा हूं महोदय। और सशस्त्र माओवादी काडरों के खात्मे में 36% की वृद्धि, यानी 100% से 126 हुई है। दूसरी ओर सुरक्षा बलों के जवानों के हताहत होने में 56.5% की कमी, 155 से घटकर 50। माननीय मंत्री जी, 50 पर आंकड़े, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूं महोदय। यह आंकड़े सुरक्षा बलों के प्रभावी ऑपरेशंस और गृह मंत्रालय द्वारा किए गए क्षमता का निर्माण और बार बार माननीय गृह मंत्री द्वारा राज्यों के साथ समन्वय बैठक करके डॉक्टर यह स्थिति लाई गई है। क्षमता निर्माण मंत्री जी, दर्शाते हैं। मैं दूसरे सवाल को बुला रहा हूं। माननीय मंत्री जी, प्लीज, कारण लगातार वामपंथी उग्रवादी की बड़ी तादाद और हिंसा रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं। डॉक्टर प्रशांत नंदा। Thank you, sir. Sir, the Government of India has been requested to consider provision of dedicated helicopter to the state at the earliest for stationing at Koraput, which will cater to the operational requirement of most affected districts of like Malkangiri, Kandhamal and Kalahandi. The Honorable Chief Minister of Odisha has raised this issue in the review meeting on LWA taken by the Union Home Minister on 26/9/2021. What actions have been taken? महोदय, माननीय गृह मंत्री जी, जब क्षेत्रीय काउंसिल की मीटिंग होती है या फिर माओवादी की समाप्ति से के संबंध में जब राज्यों से समन्वय की मीटिंग करते हैं और जब राज्य और केंद्र के सहयोग से माओवादी को समाप्त करने के लिए हम कदम उठाते हैं और जब हम पहल करते हैं, तो उसमें भी यह विषय आता जरूर है। जैसा उन्होंने बताया है, एमएचए ने बड़ी ही तथा एयरफोर्स हेलीकॉप्टर, एमएचए के जो हेलीकॉप्टर हमारे जो बीएसएफ के पास होते हैं और जो हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के पास है, भारत सरकार की एयरफोर्स के पास, जब जरूरत होती है तो हम दोनों हेलीकॉप्टरों का प्रयोग राज्य के कहने पे जरूरतों के हिसाब से और अपनी जरूरतों के हिसाब से हम उसको उपलब्ध कराते हैं। हम उसमें कोई कमी नहीं होने देते हैं। ठीक नहीं, कोई कमी नहीं होने देते। सर, हेलीकॉप्टर पर पूछ रहे थे, बार बार उन्होंने जो कहा कि इस हेलीकॉप्टर को बिल्कुल इस क्षेत्र के लिए ही प्रभावी ढंग से लगाया जाए, तो हेलीकॉप्टर प्रभावी ढंग से ही लगाई जाती है। केंद्र सरकार की जो इकाइयां हैं, सभी इकाइयां
इस देश की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसलिए हम नक्सलवाद के क्षेत्र की समाप्ति के लिए, उसके खात्मा के लिए हम भारत सरकार की एयरफोर्स और MHA के हेलीकॉप्टर का हम उपयोग करते धन्यवाद। हैं। धन्यवाद और माननीय सरकार बार बार इसकी कई राज्यों ने इसकी सराहना भी की है और हम धन्यवाद। कई राज्यों के एयरपोर्ट पर माननीय मंत्री जी, अपने MHA के हेलीकॉप्टर माननीय मंत्री जी, को वहां प्लीज, स्टैंड बाई में रखते हैं और प्लीज, कार्रवाई को प्रभावी प्लीज। बनाते हैं। श्री विनय विश्वम जी, विनय विश्वम जी, विनय विश्वम जी, यू नो कि अगर माननीय मंत्री जी के सवाल आपके अपेक्षा के अनुसार नहीं है तो देयर आर रूल्स फॉर दैट, फॉलो दैट। प्लीज माननीय विनय विश्वम जी, प्लीज। Yes, your question will come on record, Vinay ji. Yes, Please. sir, thank you. Sir, But be brief, please. not so unbrief like that. Sir, is the government aware of the fact that unlike the right-wing extremism, which has a foreign influence, emanates from Italy and Germany, the left-wing extremism has got a it has a question. It has a socio-economic root under its base. Is the government aware of that fact? If so, whether the government has a plan to address that question of socio-economic deprivation, that's the Indian reality. Thank you. Thank you. We can सभापति महोदय, one minute. Please, माननीय मंत्री सभापति महोदय, आप बोले, माननीय मंत्री जी का जवाब। उप सभापति महोदय, माननीय विनय जी, आप दोनों आपस में बात ना करें। उप सभापति महोदय, भारत का इतिहास गवाह है कि हम सामाजिक रूप Not से going on record, विनय जी। रूप से Not going on record, विनय जी, प्लीज। सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से न्यायपूर्ण कार्रवाइयों को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके नेतृत्व में किस प्रकार से कर रही है और इसी का परिणाम है सर, सामाजिक और आर्थिक पहलों का ही परिणाम है कि आज उस प्रकार से उस You please talk outside, Mr. John Britus, talk outside, please. सर, और सुनिए सर, और कहीं भी यह उदाहरण नहीं है कि उग्रवादी, वामपंथी उग्रवादी संगठन विकास चाहते हैं। यही कारण है कि विकास बाधित होता रहा है और जब से वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमी आई है, मैं उसको कहने के लिए बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कह रहा हूं कि उन क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान और आर्थिक विकास भी हुए हैं। यहां तक कि इतने बड़ी मात्रा में शिक्षण संस्थान खोले गए हैं जो सामाजिक सरोकारों से, संस्कारों से और ज्ञानों से जुड़ी हुई है। आप उठाकर हर आंकड़ों को देखिए, चाहे वह सड़क का निर्माण हो, चाहे दूरसंचार के टावर का निर्माण हो, चाहे विद्यालयों का निर्माण हो, चाहे उस प्रकार की जितनी भी अवसंरचनाएं हैं, उसका निर्माण यह दर्शाती है कि हम आर्थिक विकास भी कर रहे हैं, वहां संरचनात्मक विकास भी हो रहा है, आर्थिक उन्नति भी हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति भी हो रही है और सामाजिक वातावरण में शांति की व्यवस्था भी स्थापित हो रही है। धन्यवाद। माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, प्रकाश जावड़ेकर। सर, देश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसमें 2014 पर कितना बढ़ोतरी हो रहा था, अब कितना कमी आई है, मंत्री जी ने बताया है। मेरा सवाल यह है कि ऐसी हिंसा के जो संगठन चलते हैं उसका ओवरग्राउंड सपोर्ट होता है और उसको आर्म्स सप्लाईज होते हैं, तो ये आर्म्स सप्लाईज और ओवरग्राउंड सपोर्ट रोकने के लिए क्या कदम उठाए? धन्यवाद। थोड़ा माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी से हम चाहेंगे कि इस प्रश्न को थोड़ा सा और एक बार मैंने बताने की कृपा करेंगे। तो कोई भी नक्सलवादी या माओवादियों की जो
माओवादियों की जो कार्रवाई होती है हिंसा की, उसके आम सप्लाई जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उसको प्रतिबंध करने के लिए क्या किया है? और ओवरग्राउंड सपोर्ट होता है, शहर में बैठे हैं, बाकी जगह बैठे हैं, धन्यवाद और उसको सपोर्ट करते हैं, प्लीज, उसको रोकने के लिए क्या किया? ब्रीफली जवाब दें माननीय मंत्री जी। जब सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना जो बनाई गई है उसमें समग्रता है। जो भी माओवादियों के पास से जो भी हथियार बरामद किए जाते हैं या उसके रोकने के लिए जो उपाय हैं, बड़ी तत्परता से राज्य के साथ समन्वय करके केंद्र सरकार ऑपरेशनों को प्रभावी बनाते हैं और उस ऑपरेशन के माध्यम से जो हथियार आते हैं उसको सीज करती है। और सीज जब हम करते हैं तो उसको, और एनआईए का जो गठन हुआ है उस प्रकार के स्वभाव के या माओवादियों के इस प्रकार के गंभीर केसों को हम एनआईए को देते हैं। यूएपीए एक्ट के तहत इस पर हम कार्रवाई करते हैं, जिस एक्ट को सशक्तिकरण किया गया है। और जहां तक अर्बन नक्सल की बात गतिविधियों की करते हैं, जिसको हम तो अर्बन नक्सल का शब्द नहीं, हम तो जब हम वामपंथी उग्रवाद की बात करते हैं तो शहर हो या कहीं हो, हम उस पर उसकी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, उस पर हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। और एलडब्ल्यू प्रभावित क्षेत्र में जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाती है उसका चार्ज समान रूप से तैनाती चार्ज की गुना में केवल 10% ही है, इसलिए वह कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। जिसमें बाहरी आक्रमण, देश की सुरक्षा जैसे बड़े कर्तव्य भी शामिल है, उसमें उसको हम बड़ा प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। केंद्र सरकार राज्यों की कई योजनाओं के माध्यम से समर्थन प्राप्त करता है, जिससे राज्यों की सुरक्षा संबंधी व्यय तथा सुरक्षा तंत्र को हम मजबूत करने के लिए फंड्स प्रदान करती है। 4824 करोड़ रुपए के अधिक फंड केंद्र सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में ब्रीफली प्लीज 5 वर्षों में प्रभावित राज्यों को SCA, SRE तथा SIS योजना के तहत दिए गए हैं। हम इसकी बात इसलिए करते हैं कि जब चाहे वह आर्म्स की बात हो, चाहे उस पर नियंत्रण की बात हो, चाहे उस पर कार्रवाई की बात हो, उसको हम प्रभावी ढंग से हम राज्यों के साथ मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, विभिन्न योजनाओं माननीय मंत्री जी के साथ हम उसको धन्यवाद। प्लीज पुनः मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय सदस्य और मंत्रियों से कि आप अगर ब्रीफली उत्तर नहीं देंगे तो सवाल आगे नहीं बढ़ सकते। प्लीज। क्वेश्चन नंबर 82 श्रीमती रूपा गांगुली एब्सेंट। माननीय मंत्री जी लोकसभा। अच्छा प्लीज माननीय मंत्री जी फर्स्ट सप्लीमेंट्री रूपा जी। Honorable Chairman, answer given by the Honorable Minister is pretty clear and elaborate. बीच में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, एक क्वेश्चन सिस्टम का थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। 15-20 दिन पहले से जवाब क्वेश्चन जमा करने का कोई मतलब नहीं बनता आजकल लगता है। सर एक चीज़ है, I have a little suggestion as well as a question. सवाल not suggestion please रूपा जी। Yes sir. एक तो क्वेश्चन है, जैसे नॉर्मल चीज़ होते हैं, स्कूल के बाहर जो बच्चे को भर्ती करने और वापस ले जाने के लिए जो पेरेंट बैठे रहते घंटों भर, उनके वहाँ कुछ एक ट्रेनिंग सिस्टम या कुछ वॉलंटरी सिस्टम किया जा सकता है जहाँ पे गार्जियंस को इन्वॉल्व किया जाए। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट है, कुछ लोग नाउन ज़्यादा याद नहीं रख सकते, कुछ लोग नंबर्स बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, तो ऐसे कुछ चीज़ें जैसे अलर्टनेस टेस्ट, ये सारे टेस्ट अगर हम डालें और पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन सवाल ब्रीफली पूछे। Whether the government is considering to utilize the guardians as a participant, in educational institutions. Whether you have any question or not, Rupa ji. Yeah, I've said the question. Please put your question. Otherwise, I'll move to other MPs. I've given the question, sir. Please. Whether government is considering to utilize the guardians' productivity and utilizing in educational institutions. Thank you. महोदय, माननीय सदस्य ने जब हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति इम्प्लीमेंटेशन का समय में उन्होंने एक अच्छा सोच बताया, तो हमारे जो देश के स्वाधीन होने के बाद 73 इयर्स लग गया कॉलोनियल जो एजुकेशन सिस्टम उसको चेंज करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नया शिक्षा नीति
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च किया और इसके तहत इसमें जो पैरा 2.7, पैरा 2.9, पैरा 3.6, पैरा 3.7 इसमें जो एसेंस है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जो देश को आगे बढ़ने के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो स्लोगन दिए थे, उसके बाद ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पर सबका प्रयास ये भी जोड़ दिया। तो इसमें हम लोग जो गार्जियंस जो बैठे हैं, इसके हम लोग एक विद्यांजलि एक पोर्टल बनाया है। ये विद्यांजलि पोर्टल में जो स्कूल्स वो भी रजिस्टर करेंगे और जो सारे गार्जियन सलामनी वो भी रजिस्टर करते हैं। हम सदन को बता के मैंने भी खुश होंगे। अभी स्कूल्स 1,23,868 स्कूल ने रजिस्टर किया। अभी वॉलंटियर्स 16,686 रजिस्टर्ड किया और जो स्कूल्स चिल्ड्रन इम्पैक्टेड वो भी 11,644। Thank you. Second supplementary, Rupa ji. Yeah. Question, second supplementary. Yes, sir. मॉरल एजुकेशन में ये घर और स्कूल्स के एक साथ डेवलपमेंट के लिए कैसे कैसे क्या क्या किया जाए और थोड़ा सा इलैबोरेटली बोलिए। Thank you. मॉडल एजुकेशन में हम बहुत सारे स्टेप्स अकॉर्डिंग टू एनईपी लिए हैं। इसमें जो है हमारे करिकुलम में क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल रीजनिंग, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मीन्स इसमें सेवा है, अहिंसा है, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, सैक्रिफाइस, टॉलरेंस, ऐसे बहुत कुछ है। प्लूरलिज्म, राइटियस कंडक्ट, जेंडर सेंसिटिविटी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल, ये सारे करिकुलम में है। हमारे एनसीईआरटी ने बहुत सारे किताबें बनाए। हम पहले जो नैतिक शिक्षा नीति एक सब्जेक्ट के रूप में देखते थे, अभी हमारे होल स्कूल अप्रोच हो गया। सबके अंदर ये नैतिकता, मॉरल एजुकेशन रहेगा। धन्यवाद। माननीय श्री जवाहर सरकार जी। So the honorable member had asked a very specific question. Is there a moral education course or not? There's a lot of complicated reply with a lot of information that has come in, but the question is not answered. Then the first reference is to the National Curriculum Framework in 2005. As you know, that framework talks about human rights, justice, tolerance. Question, please. Please, question. They talk about virtues that we seem to have forgotten. That's my first submission. And during that phase, 2000 phase, certain textbooks did mention moral education. But whether they are in use, because the NCERT produces a lot of books, whether they are in use is not stated. Then we come to the next one. Sir, please put your one question. The question is, yes. Let him come up and say. Yes, please. In the end, the question is passed on to the state saying this is a concurrent subject. The question that was asked was a very pointed and a very direct one. Let him say that we are having moral education course, because moral education is a very flexible term. Intolerance can also be a moral education, please. Whatever can be. We are doing this on the basis of such and such values in such and such place. बाद में भी जवाब दे सकते हैं, ऐसी क्या? Please, thank you. Mahoday, I would like to remember the honorable member that what he told, that was in the paper only, that was not executed till now. But our government, what has done, that is being executed. And that I would like to speak, that moral education is in all aspects of the curriculum. It is in all the curriculum, across all textbooks and subjects. And there are so many things. Yes, I can show you. This is so many things, not in the books. It is being inculcated in all schools
even in the UGC guidelines to the higher education also, everybody will follow it in practical. Thank you. माननीय जुगल सिंह लोखंडवाला. धन्यवाद उपसभापति महोदय. मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि आईटी का जो अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई सब्जेक्ट या तो उनको पढ़ाने के लिए कोई प्रावधान है? देखिए, हमारे नई शिक्षा नीति में जो हमने सोचा, दिस इज द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, that is in the, and then the preparatory. Naturally, in the digital education, we will, whenever the digital education course will be in the schools, and definitely all the arrangements will be there. Thank you. माननीय त्रिचू शिवाजी. Sir, this is a matter of great concern. That the deterioration in the society is only because of lack of moral education at primary school levels. Sir, the National Curriculum Framework 2005 and the New Education Policy 2020 only sets the guidelines and direction for framework of syllabus. So the question is whether there is a defined syllabus at primary school levels. The reply states that most of the majority of the schools comes under the state government, since it's concurrent list. Because it's concurrent list, many things are imposed by the union government on the states also, like NEET examination. I would like to know, sir, what is the status of moral education in the CBSE syllabus, and whether any direction has been given to dedicate as 1 hour or 1 period at least in a week for moral education. It was like those in those earlier days. Only that will bring that, whether the government has a proposal for that. Thank you. माननीय मंत्री जी. Honorable member has expressed his thought rightly. But previous question I have already answered that our approach is not subject specific, it is a whole school approach. In all the subjects, yes, it is that in the whole school approach. That means, no, you cannot, the member could not understand because he is on that frame. Because whenever a teacher will come, his approach will be on that. And the school, home, parents, society. Please. It's more than one. This hour has been fixed. How many hours will be? That has been fixed. According to CBSE guidelines and UGC, they have fixed the guidelines for moral education in 1 year. How many hours? It has been fixed. Thank you. Both from the CBSE side and from the UGC side. Yes, it has been fixed. Thank you. Question number 83, माननीय श्री MB श्रेयांश कुमार. Yes, please. Honorable Minister, माननीय मंत्री जी. Well, Chairman, the statement is laid on the table of the House. First supplementary, माननीय. So there are so many NGOs and voluntary organizations working in the drug addiction field and government-sponsored program on various institutions. But still, drug abuse is spreading in a big way, sir. So many cases have been filed by narcotic department. Will the government try and find more effective ways to deal with the problem? माननीय मंत्री जी, please. Sir, anyway, whether we survey is conducted before the national survey in the pattern substance used in the 2018, sir. The survey is pattern trends and substance use of committed by the Minister of Social Justice and Empowerment for the collaborate with the United Nations Office on Drugs and Crime was conducted 2004, sir. The household survey was comprehensive and study report that was prevails current use of alcohol 21%, sir. Cannabis is 3%, sir. Amphetamines is 7%, sir. Among men and age 60 years, among the current users, about 26 school alcohol users were reported to be dependent, sir, while 25% cannabis use. Please.
Please, I have already explained the process. If you are not satisfied with the answer, please follow that. Yes, we have taken so many steps, sir. We have started, we have Navchetana models, how we will generate awareness regarding effective substance abuse, sir. We have done number of Nasha Mukta Bharat Abhiyans in the country, sir. We have some Navchetana program for the school children between the age of 11, 18 years, teachers-led intervention, sir. Navchetana one-day awareness generation, the preventive education programs, school children at class between 6th and 8th, sir. The program for the awareness to follow up the schools, children from the class. Time is over. Now this is discussed. Budget discussed. Mr. Muhammad Abdullah, please continue. Please continue. Please continue. Please continue your speech. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, the time was allotted 15 minutes for me, but yesterday, when I was in my 10th minute, it was interrupted. So today I need 3 minutes more, sir. Today 2-3 more minutes. Sir, the budget imposes 30% tax on the transaction of cryptocurrency, sir. To note here, the cryptocurrencies are not yet legalized in this country, but the taxation states that it is legal only by paying tax. It is still illegal, but it tells if you pay the tax, it will become legal. Though it is become legal, there is no regulatory body for cryptocurrency. Still, there is no any regulatory body cryptocurrency. Yesterday also I asked another one thing. You can sell the drugs which is illegal. Sir, please order in the house, sir. Sir, house to order. Please, आपस महेश पोदार जी, please आपस में बात न करें. Yesterday also I asked, sir. Please. We can sell the drugs which is illegal. If you pay a tax, it will become legal. But there is no any regulatory body. Do you find any difference between these two, sir? Selling the drugs and the cryptocurrency, tax on cryptocurrency. Is there any system that exists in the world like this, sir? There is a practice of taxing legalized system across the world. I mean, whether any tax is implemented, it comes along with an act. It comes along with an act. Any tax implemented, it comes along with an act. Even some acts may be implemented without the tax component. For instance, I like to remind from the past the Salt Tax an act with the tax component and the Self-Respect Marriage of Tamil Nadu an act without the tax component. But for the first time ever in the history of the world, sir, the first time ever in the history of the world, our union government is there to enforce the tax without any act. There is no act for any such act for the cryptocurrency, but tax is there. Yeah. Also one thing, sir. I am amazed to see the financial advisors of this union government, who are the world foremost sages. This is because they advised that sanitary napkins should be taxed at 12%, but for diamond it has been reduced to 5%. My friend Priyanka Chaudhary is there, Mausam Noor madam is there, Madam Rajini is there. You ask any of them, which is the important for a girl? It is a sanitary napkin or a diamond? Which is the important for one? Lakhs and crores of our sisters in this country, they are badly needed and they are unable to buy a single pack. But the 12% of the tax has been imposed on that. Honorable Sir, the stepmotherly treatment of Tamil Nadu and the Tamilians by the union government stands exposed again in this budget. One of the long-standing demands from the Delta district of Pudukkottai is the opening of a new railway line to Thanjavur from Pudukkottai. The survey, which has been completed and submitted by the British just before independence. This government has failed to take concrete steps to take the Delta district of Tamil Nadu into confidence, and this is evident not only in the railways department, but also by the ghost of the hydrocarbon projects, which is still hunt the farmers. Hundreds and thousands of people from Tamil Nadu cutting across caste and religion have contributed not just to the nation, but to the entire world. The union government is acting with a vendetta against us. Sir, due to the paucity of time, I am now in the last part of my speech. To sum up, presenting a budget, especially in the midst of an economic crisis, it is an opportunity to communicate a government vision for the country. This budget fails to do and is completely disconnected from the ground reality. Instead of tackling the problems at hand,
the union government is diverting attention away by feigning to plan India at 100. The budget did not have any mention of the increasing problem of inequality that the country is facing now. Also, it is not focused on two of the country's most pressing problems, the unemployment and the crisis affecting agriculture and the informal sector. Also, it is a fact that a few billionaires and a few large companies have benefited greatly, multiplying their profitability and assets. Even as a pandemic has devastated the lives of hundreds of millions. The Oxfam reports reveals that 80% of households in the country suffered a decline in their income in the year marked by the tremendous loss of life and livelihoods. Whereas on the other side, the number of Indian billionaires grew from 102 to 142. This remains one of the popular saying about the budget. I don't read the budget, but anyway, you can say the poorer are let down, the salaried class is hit hard, and the budget is sell out to the rich. The rich get richer and the poor get poorer. What else happened when the tax on diamonds are reduced by 5% and corporate surcharge is reduced to 7%, while the tax on umbrellas are increased by 20%. Tax on umbrella is increased by 20%. The government should adequately tax the corporate in such dire time and generate money from social security. It is the duty of the government to take care of its citizens. Our DMK party leader and Tamil Nadu Chief Minister, Sri MK, said, after tackling charge as a CM, he said, he was elected to be the Chief Minister of Tamil Nadu, not just for the people who voted for DMK. Likewise, I pray the union government to run a government not for its corporate paymasters, but for each and every citizen of India. History will judge you for your action. History will judge you only by your actions. I pray the government and Honorable Prime Minister to follow very famous quote by Peraringer Anna while working for the people. நாடு என்பது வெறும் பூகோள படமல்ல. நாடு என்பது வெறும் பூகோள படமல்ல. அங்கு வாழுகின்ற மக்களின் உணர்ச்சிகளின் தொகுப்பு. The meaning is, the country is not just a geographical map. The country is not just a geographical map. It is an emotional sum of the people who lives there. So I kindly request the government to consider it. The union government should keep it in mind that the emotion and aspirations of its citizens and should take commensurate steps in the direction to develop both the country and its citizens. I once again thank the leader of my party and the Honorable Chairman for allowing me to take part in this debate on the Union Budget 22-23. Honorable Vice Chairman, sir, I conclude. Thank you. Thank you, Mohammed Abdullah ji. Now I request Dr. Amar Patnaik. Thank you, sir. Sir, I would like to begin by quoting Joseph Stiglitz, the Nobel Prize winning economist, who said that the world is facing three existential crises. One, inequality. Second, climate change. And third, democracy, crisis of confidence in our political and economic institutions. He goes on to say that what we measure affects what we do. And if we measure the wrong thing, we will do the wrong thing. If we focus only on material well-being, on say whether the production of goods rather than on health, education and the environment, we become distorted in the same way that these measures are distorted. We become more materialistic. So even though the GDP is not designed to measure the well-being of people, it is basically designed to find out the producing economic growth, the pattern of spending on goods and services. And therefore, if we want to put people as the first, we have to move beyond GDP, what Stiglitz is saying, what Amartya Sen has said, and many other economists are saying. Sir, I would like to use this framework in analyzing the budget. So first I will start with climate change. So on energy transition and climate action, this budget devotes about 8 paragraphs. I must
compliment the Honorable Finance Minister for bringing the focus on climate action and climate change, which was one of the existential crises pointed out and flagged by Joseph Stiglitz. The budget talks about co-firing 5 to 7% biomass, swapping of batteries, green bonds for generating resources for funding this climate change. It talks about a low carbon strategy in the longer run for the economy. It talks about green energy and clean mobility systems as sunrise opportunities. It also talks about circular economy. So there are three things important when we talk about climate change, climate action. One is the mitigation measures, the second is the adaptation measures, and third, very important, is measurement, performance, accounting for it. Sir, in the budget, while speaking about all these things, giving a clear direction for the country, as far as climate change is concerned, which is really commendable, unfortunately, only rupees 3,030 crore has been earmarked for Ministry of Environment, which is 20% higher than the last year's allotment, but only 0.012% of India's total GDP. The commitment also has to come by matching allotments in the relevant heads of account. The biodiversity has been flagged as an enabling asset. I do agree, all the House would agree. However, the amount is only rupees 8.5 crore, less by 3.5 crore. As per the Economic Survey 2020-21, India's climate action funding has so far been met domestically. But for meeting the COP26 commitments, we need $1 trillion of money, $1 trillion US dollars of money. Therefore, my suggestion to the Honorable Finance Minister is that we need to incentivize private investment in the clean energy trajectory by having a national adaptation investment fund, and which is very transparently set up. Currently it is there, but the private sector's investment is not there so far. We need to encourage private sector to invest in adaptation finance, adaptation projects, and most importantly, India as a whole has to spend money on climate resilient development pathways, which Honorable Chief Minister of Orissa has been saying that we need to have a long-term strategy for disaster management in the eastern coast of India, which is generally ravaged by cyclones at regular intervals, and a huge amount of money goes. Sir, I would like to say why it is important. Sir, it is important because the FAO's report says that during the 2003 to 13 period, the climate-related economic loss to humanity was of the order of US $1.5 trillion. And all of us know that it is the poor who are disproportionately affected by any kind of climate change, and therefore by giving emphasis on climate, the budget has done the right thing. However, as I said, it is very important to bring it into our budget, into our mainstreaming, into our figures. Orissa is the first state in the country, under the able leadership of Honorable Chief Minister, we prepared the first climate budget, and probably the only state which has done so far in last year in 2020-21. Similar thing needs to be done at the Government of India level. Sir, what is good for the goose is not good for the gander. The word capital is not good for Marxian political scientists, but capital is good for public financial specialists and economists. Similarly, what is good for top 1% of the population may not be good for the bottom 50% of the population. What we see in the 2022-23 budget is an overabundance of capital expenditure, technology, and I spoke about climate action, ease of doing business, which will all have positive impact in the economy. However, there is an undernourishment of health, education, rural economy, farmers' welfare, women and child, and of the states themselves. Sir, the
budget has betted heavily on capital expenditure last year, last to last year, and even the current year. It is a supply side solution. But I would like to state and make a case whether it has worked, so far. In India, the multiplier effect by the central government of capital expenditure is 2.45. For the states, it is 2.0. This is assessed by RBI as well as by the National Institute of Public Finance and Policy. They have mentioned it in 2014 report, RBI Bulletin 2020 report. So a rupees 1 crore investment is supposed to generate much more than 1 crore increase in GDP. However, this multiplier effect, has it worked? Now it should convert itself in terms of generating fixed capital investment. So what we see, the gross fixed capital formation has decreased from 34.3% in 2011-12 to 26.6% in 2021. It has decreased from 34.3% to 26.6% as per the first revised estimates. So the one-dimensional track of completely putting all the eggs in the basket of capital expenditure may not work. I'll give you another figure. The private final consumption, which accounts for 55 to 56% of the GDP, is growing only at 5%. The manufacturing sector contributing 17% to the GDP, the employment in that sector has reduced by half during 2016-17 to 2021. It is the SEDA CMI bulletin. So there are two concerns about capital expenditure, two primary concerns. One is what is called as the hurdle rate, the cost of finance. Unless the internal rate of return is more than the cost of finance, nobody would come to invest. And that is what has happened. The IRR on a global range is between 8 to 12%. In India, it is only 6 to 8%. Therefore, PPP mode projects will have problems unless the cost of borrowing goes down. Something has to be done about cost of capital in this country. Not now, it has not happened before. I think a signal has to come from government at some time. So now I want to talk about the time lag, the time delays. So according to the Ministry of Surface Transport, MOSPI, it is in their database. December 2021, as of December 2021, out of 1,673 total projects, 25%, approximately 445, have incurred a cost overrun. 557, that is 30%, are delayed with an average time run of 45.69 months. So where does the multiplier effect come in? The multiplier effect gets delayed. The trickle down gets delayed. The wage creation at the bottom of the pyramid gets delayed. And that is what has happened in the private, that is what has happened so far for not being able to generate the gross fixed capital formation. And this has resulted in what we have discussed so far. Many members have discussed, and therefore I am not going to discuss about unemployment. What about the social sector? I said it is undernourished. Out of 21 primary sectors, I do not take the total allocation as a percentage of the total budgeted BE this year, but I'm taking it as a percentage of the GDP. Out of 21 sectors, in 8 sectors it has decreased as a percentage of GDP compared to last year. In 8 sectors there are no change. In 5 sectors it is marginal increase to the extent of 0.1%. Therefore there is nothing which has happened in the social sector. Then how do you create a level playing field? In the entire budget, one has talked about opportunities to be given, opportunities being created, and we know opportunities can be created only when we spend on things like health and education. I will talk about these two things, health and education now. Now, as far as health is concerned, the budget started with health, and I thought that the allocations would have become astoundingly high. Currently, if we look at the allocations in health, it is 0.33% of the GDP.
which is less than the last year and less than or even almost equal to the last year before last. We currently have 1 bed per 1,000 people against global average of 2.9. We are lower than even the BRIC countries. We have 1 doctor per 1,500 when the requirement is per 1,000. We have 1 nurse for 670 when the requirement is 1 nurse per 300 as per the 15th Finance Commission report. So the investment in health is definitely required. I look forward to it, and I think there is still some way in which we have to get investment into the health sector in this country, particularly the primary healthcare sector. The Standing Committee had also suggested investment in primary healthcare to be requiring a push, a definitive push. Now I talk about agriculture. Now, if I talk about agriculture, I would like to say that unless the Swaminathan Committee report is implemented as has been demanded by Honorable Chief Minister of Orissa several times, the farmers' income probably cannot get doubled. In fact, the budget doesn't talk about doubling of farmers' income as of 2022 at all. The procurement has decreased from 126 to 120.8 metric ton. Number of farmers who have been benefited has decreased from 19.7 million to 16.3 million. The reduction in the price support schemes, which does the procurement, is to the extent of about 62%. At a time when we are talking about empowering the farmers, increasing their income, the procurement allocation has come down, and it is a matter of concern. What is also a matter of concern is the fact that Agricultural Investment Fund, in which 1 lakh crore was supposed to be spent in 6 years. After 2 years, the spending is 6,627 crore only, that is approved. Spending is a mere 2.6%, 2,654 crore. So at the rural economy level, at the agriculture level, there is tremendous amount of distress. Please so conclude, Dr. Ji. Finally, I will end by talking about... Your last minute. 1 minute, yeah. Finally, I'll talk about federal equity. Now, if we talk about federal equity, the amount of resource allocation to the states, as Honorable Prime Minister said yesterday, it is in the states' development that the development of the country can take place. But what has happened that the percentage of devolution to the state as a percentage of total gross tax revenue has declined from 30.02% to 29.61%. And the quantum of cess, however, which is completely appropriated by the center, has increased from 3.7 lakh crores to 4.45 lakh crores. I can tell you, since I do not have the time, that if you do a calculation of the cess and surcharge which was levied on education and health, one in 2004-05, the other in 2018, and take that allocation out of the current allocation, then you find an abysmal figure as the percentage of investment on education and health, which is a matter of worry. Please conclude, sir. My point of saying all this is that, Madam Finance Minister, that definitely there is growth in the economy, definitely there is a direction on climate change, there is a definite direction on using technology for giving benefits, which is very positive. But the problem is, all is still not well. It is not business as usual. The rural economy may not be under distress, but it is under stress. And therefore, the emphasis on rural economy in terms of NREGS, in terms of investment in agricultural investment fund, in terms of providing housing, has to continue. As far as housing is concerned, I must bring to the notice of this House that the Prime Minister, Honorable Prime Minister, said housing for all by 2022. Then why not to 8.5 lakh Udiyas? Let them be Lakpatis. Let them be Lakpatis. The figure, the prayer of the government of Orissa is pending for so long. So I would end once again by thanking the Prime Minister for the budget proposals, for giving a direction, and would request her to consider the suggestions given by me. Thank you so much. The next speaker, Shri K.R. Suresh Reddy. Thank you, Chair. So I rise to congratulate the Finance Minister on a 4th consecutive speech.
a budget 4 in a row is a new mantra, as they say in cricket. 4 in a row is the new mantra. Hat-trick is over now. Anyone who bowls and takes 4 in a row is a sure match winner. I hope this would happen even here. But when I heard the Honorable Finance Minister's speech for 90 minutes, the only thing confident I could see was her delivering the speech. Today, with great and a heavy heart, I must tell the Finance Minister that her 90-minute speech has left 90 crore Indians out of her budget. I say this for the following reason, sir. Because this proclaimed progressive budget has alienated a majority of the poor people. I say this because agriculture, which is the backbone of our country, and Kisan, the ever-burden bearer, which constitutes 60% of the workforce agriculture, contributing 18% to GDP, and out of which, in the entire agriculture, 82% of them are small and marginal farmers, having small holdings of 1 to 5 acres. This Azadi Ka Amrit Mahotsav and entering into Amrit Kal without tangible progressive opportunities to farmers is regressive and Rahu Kal for them. Para 28 of the budget speech of the Finance Minister mentions about the rice and wheat procurement. उसमें बड़े जोर से मैडम ने बताया कि 2,37 लाख करोड़ हमने डायरेक्ट पेमेंट किया 163 लाख फार्मर्स को। जब ये बात आई तो मैं नोटिस किया सर हाउस में कि तालियां कम बजे उसमें। तालियां सिर्फ मैडम के लेफ्ट साइड से थोड़ा बहुत बचा, मगर ओवरऑल हाउस में वो मूड नहीं था। और उसकी वजह ये मैं समझता हूँ कि ये साल 2022 was the year of the promise. The promise was to double the farmers' income. इसका मतलब ये है कि तालियां ज़्यादा बजते थे अगर आपके अनाउंसमेंट में इंस्टेड ऑफ 2,37 लाख करोड़ अगर आप बताते कि हमने 4,74 लाख करोड़ हमने किसानों को ट्रांसफ़र किया, तो बात होती थी कि भाई हमारा इनकम डबल हुआ। मगर आप ये बात को मानने को तैयार नहीं है, डबल करने की इच्छा नहीं दिख रही आपके पॉलिसीज़ में, तो छोटा मोटा चॉकलेट की तरह कुछ पॉलिसीज़ बताते रहते हैं आप। फॉर एग्जांपल आपका प्राइम मिनिस्टर किसान प्रोग्राम, तो उसमें आप बताएं कि हम 70,000 करोड़ फार्मर्स को जो है सो हम बांटे, और इसको कहते हैं डबलिंग द इनकम तो नहीं होता, ये अश्योर्ड इनकम है। अगर आप 4 लाख, जैसे मैं बताया 4,74,000 में आप ये 2,37 लाख करोड़ आप बचाए क्योंकि डबल नहीं किए, और ये 2,37 लाख करोड़ में आपका 70,000 भी अगर हम निकालते हैं तो फिर भी आज ये गवर्नमेंट 1,67,000 करोड़ आप एमएसपी फार्मर इनकम डबल ना करने से सरकार ने ये पैसे बचा लिया है। सर अगर आप कहते हैं कि भाई एमएसपी हम तो कुछ बढ़ाते गए, तो आप देखिए एग्रीकल्चर का जो इनपुट होता है किसान का, वो भी वही अंदाज से और ज़्यादा अंदाज से बढ़ गया है। आप इसके साथ साथ प्रोक्योरमेंट में 10,000 करोड़ इस साल आप कम कर चुके हैं। आपका रीसेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो हमको तेलंगाना एक उदाहरण है कि पैडी प्रोक्योरमेंट में किसान को, तेलंगाना सरकार को कितने कठिनाइयाँ आपने करवाया कि भाई वी हैड टू कम विद अ बेगिंग बोल, चीफ मिनिस्टर हैड टू कम, रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, plead in the government. Half the cabinet was here, entire MPs were camping here, most of the MLAs were here, just requesting the government कि भाई आप हमारा प्रोड्यूस लेंगे नहीं लेंगे, रबी में आप लेंगे नहीं लेंगे। तो आपका पॉलिसी इतना वेग है कि
हमने पूछा कि रबी का प्रोक्योरमेंट आप लेंगे, तो आपने बताया कि आज नहीं, हम मार्च में करेंगे अनाउंसमेंट। जब किसान का काम शुरू होता है दिसंबर में, आप मार्च में बताने की बात, ये आपका किस तरीके से आपका पॉलिसी है, किस तरीके से किसान खेती को आप देखते। एक छोटा सा मिसाल है, ये कोई स्विगी सर्विस नहीं है कि जब भूख लगा जब खाना मंगाया आप, क्योंकि किसान को तो टाइम लगता है। ये दिसंबर से लेके मार्च अप्रैल तक ये काम चलते रहती है, और उसका जो है सो आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाई इसमें किसान को ये तकलीफ उठाना पड़ा। साहब, एक असेसमेंट हुआ था, सिचुएशंस असेसमेंट सर्वे ऑफ फार्मर्स, उन्होंने बताया कि आज के हालात में जो खेतीबाड़ी करता है उसका 40% आमदनी और कम होते जा रही है। और देखिए, लाठी पे लाठी किसान पे। इसके साथ साथ और क्या हो रहा है, आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी आप कम कर दिए, आप करीबन 35 to 40,000 करोड़ आप इस बजट में कम कर चुके हैं। इसमें किसान की तकलीफ और बढ़ेगी। फूड सब्सिडी आपने 80,000 करोड़ कम करे। सेंट्रल मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो करीबन 3,596 करोड़ का था, उसको आप कम करके 1,500 करोड़ पे लाए। क्रॉप इंश्योरेंस आपने करीबन 16,000 करोड़ से 15,000 करोड़ पे लाए। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 2,700 करोड़ से 1,500 करोड़ तक लाए। और इवन रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च पे सिर्फ 500 करोड़ लगाए, ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक बेयर दे टेंड टू स्पेंड मोर। सर, Reddy ji, your last minute. I'm already the last. No, no, yes, yes. Your party has given you 8 minutes. और 5 मिनट है सर। 8 minutes. You have completed. No, 12 minutes I was told, sir. No, no, 8 minutes is given and 7 minutes is over. Sir. Second speaker is not speaking, he is speaking. Then it is okay. So what is my entire time now, sir? Now another 8 minutes you have. Another 8 minutes. Thank you, sir. Sir, इसके साथ साथ मनरेगा का डिमांड बढ़ रहा है, बट आपका बजट एलोकेशंस कम हो रहे हैं। साहब, आप डिमांड ड्रिवन बोल रहे हैं। जब डिमांड ड्रिवन है तो जो ग्रामीण लेबर है उनको विश्वास, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बिल्ड करते? जब 1,11,000 करोड़ खर्च हुआ था 2 years बैक, तो आप बताइए इस साल भी हम आपके साथ ठहरेंगे। कम करते जा रहे हैं कि उस पर ज्यादा भरोसा मत करो। हो सकता है आपके कुछ कारण हो सकते हैं आपका, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि द शेयर अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर इन द रूरल इंडिया will force and compel the government to increase the allocation. अगर आपका दिल नहीं मानता बढ़ाने के लिए, मगर वहां की जरूरतें आपको मजबूर करेगा कि आप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कुछ और है ही नहीं इस पे। सर, there was some apprehensions in the government कि भाई ये misuse हो रहा है and it needs to be revamped, या asset creation ठीक नहीं हो रहा। पहले से करीबन 5-6 साल से केसीआर साहब हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार कहते आ रहे कि भाई इसको आप एग्रीकल्चर से जुड़ाइए। लिंकिंग अप विद एग्रीकल्चर विल क्रिएट सम रिलीफ फॉर द फार्मर। इट विल ऑल्सो इंश्योर कि आपका मिसयूज की जो आरोप है या एसेट क्रिएशन का जो डाउट है, ये सब अगर किसान के साथ आप मिलाएंगे तो ये सब ठीक होगा, क्योंकि किसान एक ईमानदार है। प्राण जाएगा पर वचन न जाएगा, तो ईमानदार रहेगा, आपका हर एक पैसे का हिसाब किताब आपको वो बताएगा। सो लिंक इट अप विद एग्रीकल्चर इज द रिक्वेस्ट सर। सर, एग्रीकल्चर की प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आपका इनकम डबल करना चाहते हैं तो इसकी ग्रोथ रेट 3.5% नहीं बल्कि 14% एग्रीकल्चर का रहना चाहिए। 14% हो रहा है। तेलंगाना इज एन लाइव एग्जाम्पल। तेलंगाना एग्रीकल्चर इज ग्रोइंग एट 14%. Here, overall, it's going at 3.5%. And unless you bring it to a reasonable height, the doubling of incomes will only be a mirage, will only be a dream, sir. इसीलिए आज तेलंगाना में जो पहले तेलंगाना बनने से पहले आम लेबर किसान जो दुबई मस्कट नौकरी के लिए जाते थे, वो सब वापस आ रहे। आज आराम से सुकून से उनकी खेती बाड़ी की काम हो रही है और गाँव में बिल्कुल nice livelihood is given to them and a brotherhood is spreading, sir. So, para 30 to 35 of the budget speech, the finance minister talks about a lot of private participation,
in agriculture, private agri-tech players, PPP mode, financial startups, money creation of unicorns. Going by our past experience, ये बातें देखे तो सुने तो हमको ये डर महसूस हो रहा है ऑनरेबल चेयर कि कहीं से ये 3 एग्रीकल्चर लॉस जो है कहीं बैकडोर एंट्री तो नहीं हो रहा है. तो इसीलिए दिस इज एन अप्रहेंशन वी नीड टू क्लियर, क्योंकि द स्लो रिकवरी इन कंजम्पशन is the reduced profitability of agriculture, which squeeze the reduced incomes and demand. The evidence is very clear. आज एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस का जो परसेंटेज राइस है वो सिर्फ 5.2 है और अदर नॉन एग्रीकल्चर्स का 11.4% है. और ये मनरेगा का डिमांड बढ़ने का वजह ये है क्योंकि एग्रीकल्चर में मुनाफा नहीं है. एग्रीकल्चर लैंड ओनर भी लैंड लेबरर बन रहा है. दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल. और मैं इस माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस देश को यू हैव टू अश्योर द कंट्री, यू हैव टू अश्योर द फार्मर्स दैट एमएसपी विल रिमेन. और इस आप आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आप ये भी बताइए, आप कहीं आपके प्लान्स बताए उसमें एक जो है सो एमएसपी रहेगा एंड एमएससीपी विल कंटिन्यू टू स्टे. सर, आफ्टर एग्रीकल्चर द नेक्स्ट बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर इज एमएसएमई. और एमएसएमई के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है. सिर्फ 1-2 बात मैं यहाँ दौड़ाना चाहता हूँ कि भाई ये करीबन 6.3 करोड़ एमएसएमईस इस देश में हैं और आप 2 इसके ऊपर धक्के पे धक्के गिरे, एक मैन मेड और एक जो है सो नेचुरल कैलामिटी. मैन मेड था आपका डीमोनेटाइजेशन और आपका जीएसटी. आप देखिए एमएसएमई में डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद करीबन 10,000 बिजनेस ओनर्स 2019 में सुसाइड करे और 11,716 suicides were committed in 2020. And the biggest impact of your demonetization as per RBI was on MSME was the demonetization. और आप जो भी remedial steps लिए हैं वो लेट थे और कम थे. अब आप पैंडेमिक के बाद आपने कुछ बताया कि भाई हम इंटरेस्ट लोन विदाउट कोलैटरल देने के वायदा किए, बट माय रिक्वेस्ट इज यू हैव टू लुक एट द वेवर ऑफ इंटरेस्ट. जब फैक्ट्रीज बंद थे, एक साल बंद थे, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट जो है सो बढ़ते गया, वो आप निकाल दीजिए. और उनके ऊपर फिक्स्ड पावर कॉस्ट था, कारखाना चला या ना चला मगर उनका बिजली का बिल आते गया, वो उसको आप जो है सो ऑब्जर्व करिए. दिस विल बी सम रिलीफ. और ये एमएसएमई के साथ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी आपने ये बताया कि भाई हम कुछ पैसे देंगे. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स अ लॉट टू द जीडीपी, सो व्हाई डोंट यू टेक इट एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर. The facilities given to infrastructure, long-term learning, etc., should be given to these MSMEs as, to this hospitality sector, as you've been giving it to the other infrastructure sector. And the other key issue here in Madam Finance Minister's speech was an emphasis on digital, which is very good. Everything digital was a word which came up almost in all the pages. And we appreciate it. Definitely, we change with the times, and you have to. But my agony is, if the same analogy, if the same principle, if the same policy was adopted way back in 2014 or 2015, things would have been much, much better for the country. And a small example for that is the ITIR, the Information Technology Investment Region, which was sanctioned to Hyderabad. You kept it on hold. It was a major, major boost for the country. It was a very creative investment idea where, Chairman Sir, it would have fit into what you call it, your ecosystem, because Hyderabad was also a non-seismic region, less earthquakes. तो उससे अच्छे बड़ा जगह हैदराबाद से जगह बहुत कम है हिंदुस्तान में जहाँ ऐसे इंडस्ट्री सेट कर सकते हैं, मगर आप कुछ नहीं कर सके. ITIR में काफ़ी आपने लापरवाही की, उसकी वजह से करीबन 53 plus 15, almost 70 to 75 lakh jobs have been lost in the last 5-7 years. So this is something, and of course, not to mention about the revenue and other issues. So when yesterday
the Prime Minister, when he mentioned about the bifurcation of AP and Telangana, probably this was something playing in his mind. This is what seems to be coming out, because what was mentioned by the Honorable Prime Minister yesterday, sir, it is something very, very disturbing for the people, because it is through a lot of struggle. One of the biggest struggles ever witnessed in the history of India was the bifurcation of Andhra Pradesh. Under the leadership of our Chief Minister, KCR Garu, we went through 14 years of struggle to eventually get it. Agar House mein Telangana ka bill pass hua, to pass hua, kyunki House is supreme. Nobody can question the authority of the House. Nobody can question the authority of the chair. Not even the Prime Minister can question the authority of this House, sir. But yesterday, he raised it. Agar aapko takleef hua, bifurcation mein, मैं पूछना चाह रहा हूं कि कितने बार वो reorganization bill यहाँ पे amendment को आया है? Did you make any amendments in the last 8 years? The demands from Telangana, the demands from Andhra are continuously coming up. But still, you refuse to refer it. You refuse to chair even a single meeting. और वहाँ पे क्या हो रहा है, sir? Please conclude, sir. Sir, just 1 minute. So this is an important thing. I'll just 1 minute, sir. I'm concluding with one last thing. मैं तो काफी पूछते गया, तो एक छोटा सा मेरे को एक WhatsApp का फॉरवर्ड याद आता है कि एक नेता ने अपने दोस्तों को 8-10 लोगों को अपने घर पे चाय पे बुलाया और बोला, भाई मेरे घर में सबसे अच्छा चाय बनती है। तो सबने गए, 10 लोग, उम्मीद में कि अच्छा चाय मिलेगा वहाँ। और जब घर गए और उनके बावर्ची को बोले, भैया चाय बनाओ, तो उन्होंने कहा, सब 130 सेकेंड्स, और चीनी नहीं है। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चाय लाओ। और चाय आ गया तो वो नेता ने कहा, देखो भाई ये स्पेशल चाय है, मगर इसमें 1 कप में चीनी नहीं है, शुगर नहीं है। जिसको भी वो कप आएगा वो सबको आज रात में भोजन पे ले जाएगा। तो 8-10 लोग जितने भी बैठे वो सब ने कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसी ने भी कम नहीं किया। तो मैं भी यही कहूंगा कि वेरी स्वीट बजट, बट डू जस्टिस टू आवर रीजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। द नेक्स्ट स्पीकर श्री विजय साई रेड्डी। Thank you, Vice Chairman, sir. We should appreciate the Honorable Finance Minister for presenting this budget in most difficult and trying times. Initially, sir, we all thought that it would be, Honorable Finance Minister would submit the budget for UP and Punjab. However, as the budget speech of the Honorable Finance Minister went on, and it was nobody's budget, no one's budget. And I can confidently say that it is a stylish budget with no substance. I'm sorry to say that. Sir, to put it in a different words, it's a budget like an operation successful but patient is dead. This budget may be a good budget for the country according to the Honorable Finance Minister, but for AP it is bad and worst. Sir, my point is Atmanirbharata of the states. Honorable Finance Minister on several occasions talks about Atmanirbhar Bharat. But I am asking Madam, what is Atmanirbharata of the states? Not the center, not only the center. The center, according to me, and I'll give the statistics also, Vice Chairman, sir, using manipulative practices to reduce the share of state share of taxes from the central pool of taxes. Sir, center has deliberately I'm using the word, increasing the cess and surcharges in its gross tax revenues, which is not shared with the states. Sir, it has been brought down, the states' share has been brought down. In reality, though the 15th, according to the Honorable Finance Minister, the 15th Finance Commission has recommended 41%. In reality,
The real percentage works out to 29%. I can give the figures also, sir. It is not 41%. It is because of cess and surcharges. And I'll give petrol as an example. The central government has collected 3.35 lakh crores by way of cess on petrol, shared just 5.8% of it, that is 19,475 crores with the states. What is shared with the states? In the case of petrol, is only 5.8%. Out of 100 rupees, 5 rupee 80 paisa. Sir, by increasing the, sir, Honorable Finance Minister has coined a special word, apart from cess and surcharge, special additional excise duty. This is nothing but cess and surcharge. By increasing the special excise additional duty, nothing but cess, the center has pooled 2.87 lakh crores from which the states are not getting a single rupee, not a single rupee. This is the situation. Sir, the share of tax component in the excise duty, which is shared with the states, has decreased by 40% in the case of petrol and 59% in the case of diesel, sir. Sir, at present, I have a statistics which I would like to, Honorable Madam is present. Sir, in the case of petrol, let us presume that the cost of the petrol is 100 rupees for the sake of brevity. Basic price is 45 rupees. Basic excise duty is 1 rupee 40 paise. And special additional excise duty is 11 rupees. Out of 11 rupees, nothing goes to the state. Nothing. Not a single rupee. Road and infrastructure cess, 18 rupees. Nothing goes to the states. Agricultural infrastructure and development cess, 2 rupees 50 paisa. Nothing goes to the states. Dealers commission, of course it goes to the dealers. Taxes, whereas the states are empowered to levy VAT in the case of petrol and liquor. What is that? The maximum percentage any states can charge is only 10 to 15%. It varies from 10 to 15%. What is center getting? Central government is getting 85% and states are getting 15%. This is the justice what central government is rendering in the case of taxes, share of taxes. Sir, AP share in the divisible pool, I would like to share with the Honorable Madam. AP state, when compared to the divisible profits, AP share of taxes. In 13th Finance Commission, between 2010 and 2015, AP share is 6.9%. 14th Finance Commission, 2015 to 20, from 6.9% it has come down to 4.3%. It has come down by 2.6%. In 15th Finance Commission, it is 4.07% in 2000, whereas in the previous year, 2020-21, it was 4.111%. So year after year, Andhra Pradesh is getting, the share of taxes is coming down, and it is nothing but a stepmotherly treatment. Honorable Finance Minister is our daughter-in-law of our state. I want everybody to, all the honorable members to know about it. Sir, deciding the state share of taxes, there are certain points, that is population, forest cover, geographical area, there are various parameters. Quite surprisingly, 15% weightage is given for population. Andhra Pradesh is one state which is effectively controlling the population. And those states which are not controlling the population, they are benefited. Those states which are controlling the population, they are punished. This is the formula what the central government is following, or Finance Commission is following. Sir, comparative of AP budget, see on various sectors, how the center is spending and how Andhra Pradesh is spending.
Sir, on agriculture, Andhra Pradesh is spending 5.9% of the total expenditure, whereas center, which is agriculture, is considered to be priority sector. Center is only spending 3.8%. Education, Andhra is spending 11.8% and center is spending 2.6%. Health sector, Andhra is spending 6%, center is spending 2.2%. Rural development, Andhra is spending 7.1%, whereas center is spending 5.2%. Whereas my colleague sitting in front of me, Kanakamedala Ravindra, TDP, they criticize that state is not spending enough. And their leader, day in and day out, criticizes YSRCP government, saying that the government has failed in all respects, in all counts. This is how the politics are being played. Sir, the crucial sectors like agriculture, education, health, rural development, social welfare, Andhra Pradesh is spending more than the central government despite severe financial crisis on account of stepmotherly treatment by the central government. Sir, coming to income tax, I would like to bring to the notice of Honorable Madam. Madam, there is a 10% increase in the overall revenues on account of tax revenues. Madam, the tax exemption limit, when you came to power in 2014, was 2,50,000. And now, from 2014 to 2022, what is the inflation? Cumulative inflation is 48%, sir. Whereas, basic tax exemption limit remains the same. And I request the Honorable Madam to link this minimum tax exemption limit with that of inflation rate. Sir, with inflation reaching all-time high, but tax rates remain the same. This is the pathetic situation. And I request the Honorable Madam to further rationalize it and inflation be adjusted, again adjusted IT deductions and exemptions. Madam, there are certain difficulties, because I am also taxpayer and chartered accountant, there are certain difficulties that are being faced by the assessees. One is, there are 5 tedious documents which one has to collect in order to file the tax returns. One is Form 16 from the employer. Second is for interest income TDS certificates in Form 16A. Third is TDS certificates for other income and Form 26AS, and tax saving investment and expenditure proofs. These are all the documents which one has to collect in order to file the tax returns. My suggestion in this regard is consolidate multiple compliances across various forms into single ITR form. And form will make ITR, this suggestion would make the form filing IT friendly. Madam, there are certain, which many assessees would have brought to the notice of Honorable Finance Minister. There are certain glitches in the portal. Lakhs of taxpayers have been complaining of glitches and errors in income tax portal for months now. There are several occasions where Honorable Madam has extended the time limit for filing the tax returns, and these glitches are to be addressed very promptly, sir. Sir, reduced subsidies, which is very, very important. Sir, food subsidy has been reduced. Center claims that nobody, in fact, in the yesterday's meeting also, the center claims that nobody remained hungry during the pandemic. But the allocation of food subsidy is down by 28%. Sir, fertilizer subsidy. Reduction in fertilizer subsidy is definitely anti-farmer. Increase in the fertilizer prices has severely affected the farmers. And the allocation towards the fertilizer subsidy has been reduced by 25%. Then coming to LPG reduction.
subsidy in LPG reduction. Lakhs of poor households rely on LPG subsidy, and Centre has slashed the allocation by 11%. Certain important aspects regarding the Andhra Pradesh, I am concluding it, sir. Andhra Pradesh particularly, major infrastructure projects. And in fact, in 2014, AP Reorganization Act has been passed. And 13 or 14. South Coastal Railway Zone, Vizag-Chennai Corridor, Polavaram Irrigation Project. In fact, I have submitted to the, I met Honorable Madam and then made a submission also. Kadapa Steel Plant, Dugarajapatnam Port, and Kakinada Petrochemical Complex. These are all the pending issues which are yet to be addressed by the central government even after considerable lapse of time. Sir, national educational institutions which the central government has granted by virtue of AP Reorganization Act, all are operating from the rental premises. Not a single national institute has got its own premises. Whether it is, be it Indian Institute of Petroleum and Energy and Indian Institute of Management, Indian Institute of Technology, Central Tribal University, all are operating from temporary campuses, and I should thank Jairam Ramesh ji for drafting such a loose act, very loosely drafted act of AP Reorganization Act. He very often, now and then, repeatedly claims that he is the author of the AP Reorganization Act, and I am sorry to say that he has drafted it most loosely, sir, and which BJP is taking advantage of it. Sir, in conclusion, the AP leadership, AP BJP leadership, every day now started criticizing our party and government for no reason. What is Centre doing for AP? That AP BJP will not raise that issue. Centre is doing nothing and giving stepmotherly treatment to AP, Andhra Pradesh, whereas Andhra Pradesh BJP day in and day out criticizes the ISRCP government. And in reality, the biggest critic of the central leadership of BJP and the union budget of AP is AP state BJP leadership itself. Sir, finally, in conclusion, I would like to submit to the Honorable Madam that the government claims the mantra, most chanted mantra of BJP government is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Every year, one element is added to the slogan. Initially it is Sabka Saath, Sabka Vikas, then Sabka Vishwas, then Sabka Prayas. Every year one is added. Madam, I am asking, this budget... Please conclude. I am concluding. This budget does not ensure Saath to the states, no Saath. This budget does not ensure Vikas to the states. This budget not taken the states into Vishwas, no Vishwas on the states. This budget does not ensure supporting the prayas of the states. No Saath, no Vikas, no Vishwas, no prayas. Thank you very much, sir. Thank you for giving the opportunity. Thank you, sir. Thank you, Vijay Reddy ji. Now, the next speaker, Srimati Jarna Das Baidya. Madam, you have 7 minutes. Yes, sir. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. The Finance Minister presented the budget in the backdrop of an economic scenario when majority of the people are facing jobless and huge cuts in real income. GDP in current financial year is estimated to marginally cross the pre-pandemic levels. The private consumption expenditure is still short of the pre-pandemic levels, and industries are facing low capacity utilization and rising inventories primarily because of very low demand in the economy. Sir, मैं बोलना चाहती हूँ, जब इलेक्शन आते हैं, आश्चर्य लगता है, मैं त्रिपुरा से बिलोंग्स करती हूँ, तो
क्या बोला जाते हैं, वो जॉबलेस जो यूथ है उसको एक मोबाइल नंबर दिया गया, बोले मिस कॉल करने से नौकरी मिल जाएगा। लेकिन इलेक्शन के बाद जब मिस कॉल किया तो अब क्या है, इस नंबर से बोलते ये नंबर मौजूद नहीं है, ये नंबर गए। सोशल पेंशन 2000 रुपया करेंगे, कहा नहीं किया। और मनरेगा पर 340 रुपीज वो इंक्रीज करेंगे और 200 दिन का काम। अभी 16 डेज और 15 डेज काम होता है, इससे ज्यादा नहीं होते। और वेज भी नहीं, एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। तो ये बोलने से क्या होते है, बजट में आना चाहिए। सर जो मनरेगा पर इस बजट में हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर बाय 25,000 crores in मनरेगा and reduce food, fuel and fertilizer subsidies and also in allocation in health and rural development. सर मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, जो पीएम आवास योजना वो क्या हो रहा है, सबको घर दे रहा है, ये अच्छा बात है, सबका घर होना चाहिए। लेकिन इस घर में एलोकेशन क्या है, 1,30,000 रुपया। इसमें क्या होता है, ब्रिक फील्ड में कोई गया है, एक ब्रिक का दाम आज कितना है, 14 रुपया। इससे घर कैसे होगा, 1,30,000 में कैसे घर करेंगे। तो ये बजट में हम लोग देख रहे हैं, प्रपोज ए ग्रोथ ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बाय 1,74,909 crores from the revised estimates of 2021-22, but as percentage of GDP, the total expenditure has come down 17.8% in 2020-21 to 15.3% in 2022-23 budget estimates. तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं, बजट में सब कुछ दे रहा है, सब कुछ ग्रोथ होगा, जीडीपी बढ़ेगा, ऐसे ही बोलते। तो इस बजट में द squeegee on expenditure is not merely in the central government expenditure. These transfers are to come down from 6.915 of GDP in revised estimate 2021-22 to 6.5% in 2022-23 only. The agriculture and farmers, allocation of all major schemes for farmers have been seen budget cut. The allocation for procurement of FCI and under decentralization procurement scheme has been reduced by about 28% at a time when farmers are struggling for a legally guaranteed MSP. Allocation of farmers for fertilizer subsidy has been reduced by 25% under PM Kisan Yojana. And 12.5 crore farmer households are supposed to be provided rupees 6,000 each, which requires an allocation of rupees 75,000 crore only. Now, sir, children welfare, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन तो है ही, हम लोग भी चाहते हैं बेटी को बचना चाहिए, बेटी मर रहा है इस देश में ज़्यादा। तो चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए रुपीज 5,700 crores less than what was budget. Nothing has been done to help children cope the devastating impact of closure of schools and Anganwadis.
ऑंगनवाड़ी वर्कर 20 साल 25 साल से 75 में 1975 में शुरू हुआ। मैं भी CDPU थी, इस नौकरी करती थी इस डिपार्टमेंट में। तो अब से लेकर आज तक आंगनवाड़ी वर्कर का क्या हुआ? 20 साल नौकरी करने के बाद, काम करने के बाद कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 200, 100 बढ़ाते हैं। सर, STSC वेलफेयर, उसमें भी खामियां हैं। आप देखिए, जो मिड डे मील का जो था, रेज एलोकेशन फ्रॉम ₹10.234 crores despite of 35% of children not receiving midday meal during the last year. सर, नारी शक्ति के बारे में हमारा फिनेंस मिनिस्टर भी वुमेन है। हम लोग बहुत सारी आशाएं है, बहुत कुछ करेंगे। नारी शक्ति अपग्रेडिंग 2 lakh अंगनवाड़ीज, but allocation is frozen at the revised estimates ₹20,000 crores only. Sir, 1 minute. Jarna ji, conclude please. LPG subsidy also, कविया 60% पहले है और 60% card has been inflated budget 2022-23. Now new allocation has been budgeted for the unorganized workers who were registered through e-SARM portals. Sir, therefore, the budget 2022-23 has completely failed in identifying the priorities to provide relief for the common people. It is a betrayal. Thank you. Thank you. Now, the next speaker, Dr. M. Tambidurai. Thank you, Mr. Vice Chairman, sir, giving the opportunity to express my views on the budget. At the outset, I want to tell, sir, our ADMK coordinator, O. Pannirselvam, and also Joint Coordinator, Edappadi Palaniswamy, on Wednesday said that Union government would generate renewed hope among the people. That is our party stand. There we are supporting this budget. So I rise to register the views of my party, All India Anna DMK party, on the present budget presented by the Honorable Finance Minister. First of all, I appreciate the enormous measures taken by the government of our beloved Prime Minister Narendra Modi ji to protect the economic interests of the country during the fearful pandemic, which has devastated the dreams and aspirations of many of all over the world. In the impact of lockdown and subsequent negative growth in the economy is felt by the countries of the world without exception. Few individuals and enterprises have gained, no doubt, but by and large, almost 90% of all industries and manufacturing units, including agriculture sector, have terribly affected, and we are still not sure when it will get out of this darkness. So in spite of gloom and despair all around us, the government of Honorable Prime Minister Modi had reasonably done well in safeguarding our economy. My heartiest congratulations for what have been done and best wishes for the more power to the Prime Minister. Coming to the budget 2022-23, I am come across a survey conducted by independent services involving more than 40,000 respondents residing in 342 districts of India. The survey has indicated that 20% of citizens are thrilled with the budget and they see many benefits ranging from infrastructure growth to boosting spending and creating employment. 40% believe it will derive progress in at least our area. At the same time, sir, the absence of personal tax relief has been disappointing
to a sizable percentage of survey percentage. That is the answer. I am appealing the Honorable Finance Minister to consider this. As our Reddy also said, speaking, this inflation is more, but the income tax that when we are charging is, that is still we are continuing that. Well, if you, madam, if you allow, give more concession, the consumers, the taxpayers, definitely they will spend money that will circulate in the growth, definitely. Therefore, you have to take the opportunity to give, see, that exemption must be, that tax rate, that level has to be increased, that personal tax. Sir, and also, the finance minister has said in the budget speech that the productivity-linked incentive in the sectors for achieving the vision of Atma Nirbhar Bharat has received an excellent response. Madam Nirmala Sitaraman mentioned that there is a potential to create 60 lakh new jobs and an additional production of rupees 30 lakh crores during the next 5 years. I earnestly hope that ambitious plan comes true. India is now the factory of the world. India is now the laboratory of the world. India is now the hub of the young in the world. More than 50% of our population is young population. We have to make use of this wonderful resource which most countries do not have. The resource of human power is more important. Our young generation is getting good education, great mobility, and above all, our youth are full of aspiration and dream to have a better tomorrow for them and to their family. Hence, I please make sure that you are complete your target of 60 lakhs of new jobs. Create new mechanism to find jobs opportunity for our youth all over the world. It is not a brain drain by conquering. The world is through this, our skill labor. Sir, I would like to specially mention about the Prime Minister Gati Shakti, the 7 engines you have identified, namely roads, railways, airports, mass transport, waterways, and logistic infrastructure are the need of not only today's, but India, also tomorrow's India. With effectively and timely implemented, these 7 engines of Prime Minister Gati Shakti will transform our economy. They will provide seamless, multi-modal connectivity and effective logistics, which India is badly need of. Sir, our Finance Minister is very thought of presenting the budget. Even though there are elections in the different states, it's not tempted her. Here she is come forward to put a realistic budget. As our Reddy said previously, she is the daughter-in-law of Andhra Pradesh, but she is daughter of Tamil Nadu. I think definitely she will help more Tamil Nadu, giving more schemes. That is my expecting that way. That is there. I think as budget will at us come. Sir, Finance Minister has announced that 7 lakh crore in capital expenditure, an increase of 35% to bring the flagship economy back to the pre-pandemic level. There has been some attempt to assure farmers by committing rupees 2.37 lakh crore to produce wheat and paddy from 16.3 million farmers. The perennial problem in India is implementation. Large sums are allocated and grand schemes are announced, but they do not get spent as budgeted. The government is also outlined a blueprint for Amrit Kal, the next 25 years until the centenary of Indian independence of 2047. This is a laudable goal. Sir, I want to bring certain projects. For example, the Modi government has been working with the different models of public-private sector partnership and is constantly reviewing model concession agreements for the various modes of road construction of PPP. I was also Transport Minister, sir, Vajpayee government brought this subject. But I am requesting Honorable Finance Minister to see that Tiruchirappalli, Karur, Coimbatore has maybe linked.
through 8 ways. That project is conceived already. Because when you are coming roads like that Tiruchirappalli connecting Coimbatore, to make 8-way road, within 2 hours can reach from Coimbatore to Tiruchirappalli, connecting airport to airport. Therefore, that is an important subject which we are requesting you already. I requested our transport minister, accept the project. Project is now in the government. They have to allocate the money and spend it. And also, sir, regarding the railway thing, the other big infrastructure push for fiscal 2022-23 will be for the railways, which is getting up to carry 8,595 million passengers, almost 2.5 times the number it carried in the previous year, apart from the ferrying 1,470 million tons of cargo. Sir, regarding here also, I want to request my area, Jolarapete, Bargur, Krishnagiri, Hosur, your Bangalore, has to be connected. Already the project is announced. Because I am very thankful for the finance minister. She announced that Hosur area, this area is an industry, that is our defense corridor. When the defense corridor, we require that kind of railway infrastructure. Therefore, connecting Bangalore to that rail will go up to Puducherry. 3 states will be connected. Pondicherry, Tamil Nadu, and Karnataka will connect this kind of scheme. Therefore, please consider it and allocate the money. So, regarding the same way, sir, airports. Airports are nothing pillars we said. You know very well, you are in Karnataka. We have to come to Hosur, means we have to spend 3-4 hours to reach the airport. Therefore, our demand is to have an airport in Hosur. Hosur is already private, Tanija airport is also there. They are ready to give for lease. And also it is Udan structure already accepted. Therefore, even the state government already given the tender. I appreciate that what they have done. Therefore, I request the finance minister to see that, to bring the airport for that Hosur, that will give faster boost the development of that area, and also connecting the decongestion in the Bangalore airport, that will help us. That is the thing, sir. So another, regarding... you have another 2 minutes, sir. Sir, okay, sir, I'm going to conclude that. So apart from that, sir, generally, I have seen the newspaper, when you are more interested to internal security. As we are allocating defense, you have to allocate more for Home Ministry also. The Home Ministry must see that law and order, even the state subject, they have to give more money to state governments, then only they can do. Modernization more important. But at the same time, news has come, sharp fall in police exam revamped funds, as many states fail to utilize them. That is the, it has come. But if at all states are utilizing, center you spend it. Your IPS cadres with you. You modernize them and they depute them. We have no objection. Therefore, in turn, now, because of the law and order, many places we are facing the country deteriorating. So, there are thefts are going, child abusing, and women's insurgence and security. There are so many things. As you are giving important defense, you have to give the home, you have to save the lives of the citizens of this country. For that, you require the budget must be given more allocation for the modernization of this police force. And the centers to come forward. Without centers, the state cannot do that. And also states, sir, you know GST, after coming GST, most of the funds come to the central government. Central government is telling, yes, they are getting lakhs of crores of rupees every month, go on increasing. What about the states? The states are not getting sufficient fund. That is, since your madam is telling, but because we after coming GST, I know, our party ADMK is opposed to GST. And we have not voted for at that time. It is brought by the Congress. This they have only brought. Is now we are suffering. That is why the sources of the state governments are going down. Therefore, it has the high time to see that central governments to come forward to give more allocation. And also arrears. The GST arrears, lot of arrears state governments are paying. Tamil Nadu especially is also facing. Therefore, I request the Honourable Finance Minister to see that this can be, I'm going to conclude, sir. Sir, I like this. Finally, I want to say, our Honourable
I welcome the emergency credit linked guarantee scheme extended by up to March 2023. The 2 lakhs crores additional credit for MSME is very much needed during the pandemic situation. You have promised many more incentives and inputs to agriculture and other essential sectors. I wish you will keep your target and time schedule to complete and fulfill your promises. With these words, I wholeheartedly welcome the budgets presented by the Honorable Finance Minister, daughter of Tamil Nadu and daughter of the nation of India, to see that justice been given, and I once again congratulate for Prime Minister Modi ji has given entrusted her to present this budget. I thanks once again. Thank you, Tamidore ji. The next speaker, Shri Sukram Singh Yadav. सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी को, जिन्होंने इस देश के बजट को पेश किया और एक महिला के रूप में पेश किया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब एक महिला बजट पेश करती है तो उसकी तरक्की घर में भी होती है और घर से बाहर भी होती है। मुझे ये भी मालूम है कि इस देश की महिला वित्त मंत्री आगे देश की प्रधानमंत्री बनी, ऐसी जानकारी मेरे पास भी है। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। महोदय, बजट जो पेश किया गया है उसके बारे में मुझे कहना है कि इसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने किसानों के बारे में 2 चर्चा की है। ये सही है कि जैविक खेती को बढ़ावा देंगी, ये अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा जो ड्रोन से जो खेती होगी उसमें भी इसका लाभ किसान को मिलेगा। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और इसमें शिक्षा का अभाव रहा है। आज गांव के लोग ड्रोन से खेती करने में कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, उनको क्या उसको लाभ मिलेगा, शिक्षा का अभाव है। इस कारण उनको कैसे जानकारी होगी। मैं समझता हूं कि ये विषय मेरी सोच से परे है कि कैसे इसका लाभ उन्हें मिलेगा। जहां तक माननीय मंत्री जी ने किसानों को सुविधाएं भी बढ़ाई हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन तकलीफ बात ये होती है कि इस देश में एक बड़ा किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। जाने कितने हमारे किसान साथी इस दुनिया में नहीं रहे, उनका जीवन चला गया। लेकिन बजट में उसकी चर्चा कुछ होनी चाहिए थी, उन्हें कुछ सहायता मिलनी चाहिए थी, उसका अभाव मुझे दिखता है। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। इनकम टैक्स के बारे में बड़ी चर्चा थी कि इसमें कुछ इनकम टैक्स सीमा बढ़ाई जाएगी और लोगों के मन में विश्वास था हर बार इनकम टैक्स सीमा बढ़ती, इस बार भी बढ़ेगी। लेकिन लोगों को निराशा से हाथ लगी कि सीमा बढ़ी नहीं, लोग इंतजार करते रहे। जहाँ तक महामारी का प्रश्न है, भीषण महामारी में पूरा देश ने, पूरा विश्व चपेट में आया और इसलिए आर्थिक व्यवस्था चरमराई, हर देश की चरमराई, हिंदुस्तान की चरमराई, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन उसके आधार पर ऐसी योजनाएं बननी चाहिए थी ताकि उस अर्थव्यवस्था को हम ठीक कर सकें और भविष्य में उसका लाभ हमें मिले। एक बात और कही गई है, जो नई करेंसी चलाई जाएगी उसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी। मैं समझता हूँ, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारे देश के लोग में शिक्षा का अभाव है देश में, इसलिए जब तक हम शिक्षित नहीं कर पाएंगे लोगों को, इन दोनों करेंसियों का लाभ देशवासियों को नहीं मिल पाएगा। जहाँ तक मैं खेती के बारे में कहना चाहूँगा कि सबसे घाटे का सौदा किसानी है, खेती है। किसान जब खेत में काम करता है तो दिन रात मेहनत करता है, इसके बाद में भीषण ठंड में पानी लगाता है खेत में और भीषण गर्मी में फसल को काटता है, मारता है, तब जाकर कहीं उससे गल्ला निकलता है और गल्ले को बेच करके अपना काम चलाता है। लेकिन अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं कि देश में की गई ताकि किसान को जो उसकी आमदनी है
जो उसका श्रम है, श्रम की कीमत कहीं नहीं लगाई गई। मैं समझता हूँ दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश में किसान के श्रम को बेकार समझा गया और उसकी कीमत नहीं लगाई जाती। जब तक किसान को उसके श्रम की कीमत नहीं लगाई जाएगी, उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसके के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि छोटे किसानों को लाभ देने की योजनाएं कोई नहीं रखी गई बजट में, वो आनी चाहिए थी। कि बड़े किसानों को लाभ बहुत योजनाएं रख दी गई। मैं समझता हूँ कि बजट में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए था। जहाँ तक प्रश्न इस बात का है कि हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था कैसे रास्ते पर आएगी, पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर बहुत से लोग आए, उन्होंने इसके सुझाव अच्छे दिए। मैं समझता हूँ कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इस बारे में सोचेंगी और अर्थव्यवस्था को पटरी में कैसे लाया जाए इस पर विचार करेगी। अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैं कानपुर से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में कानपुर है, और कानपुर में मैं समझता हूँ औद्योगिक क्षेत्र है कानपुर, लेकिन अब धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ कि उद्योग धंधे बंद होते चले जा रहे हैं, कुछ कोरोना के कारण और कुछ महंगाई के कारण। जो हमारा कानपुर चमड़े के और कपड़े के उद्योग में प्रमुख माना जाता था, आज कपड़े वाला काम पूरा बंद हो चुका है। चमड़े वाली चर्चा अभी है कानपुर की, लेकिन उसमें भी जो बढ़ावा होना चाहिए था वो बढ़ावा नहीं दिया गया, इस कारण वो भी कार्य पिछड़ रहा है। दूसरी बातें मैं कहूँगा कि जो चिकित्सा का मामला है कानपुर का, चिकित्सा में ऐसे अस्पताल तो बहुत है, टीबी का अस्पताल है, हृदय रोग है, कैंसर का अस्पताल है, लेकिन कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो जैसा सारे सुविधाएं हों उसमें पीजीआई जैसा अस्पताल कानपुर में नहीं है। जबकि कानपुर आबादी के लिहाज से प्रदेश का बड़ा शहर है और मजदूर कानपुर में बहुत रहते हैं। उन सब के हिसाब से कानपुर में पीजीआई एमईआर जैसा कोई अस्पताल सुपर स्पेशलिटी का बनाया जाए ताकि कानपुर के लोगों को उसका लाभ मिल सके। ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा बजट के माध्यम से। और इसी के साथ साथ जो कानपुर देहात है, जो कानपुर नगर का ही अंग है, अब कानपुर देहात हो गया। कानपुर देहात में मैंने देखा कि मेरे सामने ही कानपुर देहात बनाया गया, लेकिन आज 32 साल हो गए कानपुर देहात बने हुए, ना नाम तय हो पाया उसका। नाम कई बार बना फिर बदला गया, आज उसका कानपुर देहात के नाम से लोग जानते हैं। और उसमें सबसे दिक्कत इस बात की है कि कानपुर देहात में उसका मुख्यालय नहीं था। माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आज से 32 साल पहले मुख्यालय बनाया माती में, लेकिन मुख्यालय तो बन गया, लेकिन जो सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए एक जिले की, वो सुविधाएं आज भी वहाँ प्राप्त नहीं है। मैं समझता हूँ वहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा रेलवे स्टेशन की नहीं है। रेलवे स्टेशन के नाम पर लालपुर है रेलवे स्टेशन, पुखराया है और रूरा है, लेकिन आज भी कोई भी ऐसा तीनों स्टेशनों में ऐसा स्टेशन नहीं है जिसको कानपुर देहात के मुख्यालय का रेलवे स्टेशन माना जाए। मेरी मांग है, चाहे रूरा हो, चाहे लालपुर हो, चाहे पुखराया हो, तीनों में से कोई ऐसा स्टेशन हो जिसकी घोषणा होनी चाहिए कि मुख्यालय का रेलवे स्टेशन ये है। ये पहली बात मेरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे कानपुर में जिस प्रकार से एक टोल टैक्स पड़ता है 12 में, और 12 का टोल टैक्स जहाँ पे टोल टैक्स लिया जाता है वो 12 और कानपुर नगर और देहात की सीमा में पड़ता है। ज़्यादातर लोग कानपुर नगर में जो रहते हैं वो रोजगार के संबंध में, नौकरी संबंध में कानपुर देहात आते हैं। उनको आने जाने में जो समय लगता है, उसी रास्ते में जो टोल टैक्स पड़ता है उससे प्रतिदिन उन्हें 150 रुपया देना पड़ता है। जब कानपुर नगर और कानपुर देहात दोनों की सीमाएं जुड़ी हुई है और उसी जिले से जोड़ तोड़कर कानपुर देहात बनाया गया है, इसके बावजूद भी उन्हें पैसा देना पड़ता है। इससे ग्रामीणों में बहुत रोष है। मेरी मांग है कि टोल टैक्स जहाँ लगा हुआ है, यहाँ पहले लगा हुआ था टोल टैक्स जहाँ वसूली होती थी, उसका सारे चेंज कर दिया जाएगा तो इसका लाभ कानपुर देहात और कानपुर नगर दोनों को मिलेगा। और कानपुर नगर से लोग आएंगे भी, उन्हें टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कानपुर देहात सीमा के बाहर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसी जगह टोल टैक्स लगा रखा है, टोल वसूली का केंद्र लगा रखा है, जिससे गांव के लोगों को जो आने जाने में है उनको असुविधा होती है। ये मैं आपसे इस माध्यम से बजट की भाषण में मैं आपसे मांग करता हूं
ये व्यवस्था भी आज कर देंगे तो लोगों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना इस सरकार ने की, ये अच्छा काम किया। हम लोग पहले ही मांग करते थे मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन चिकित्सा का जो अभाव कानपुर नगर में जिस प्रकार से है उस पर कानपुर देहात में भी है। मैं चाहूँगा कि नगर और देहात दोनों सीमाएं जुड़ी हुई है, इसलिए ऐसा अस्पताल बनवा दीजिए कानपुर में ताकि दोनों जिलों को उसका लाभ मिले। और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसा काम हो जाएगा, सबका सम्मान बढ़ जाएगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। और मैं एक बार फिर आपको बजट आपने पेश किया है उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Sukram Singh ji. The next speaker, Shri A.D. Singh. Singh ji, you have 5 minutes. I may exceed 1 or 2 minutes that you can cut from him. If he is cutting, I have no problem. If your party is giving, no problem. ये सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस स्वदेशी मंच ने भी कहा है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। ये 2019 के फिगर में 3 करोड़ था और करीब 15 मिलियन हर साल और उसमें जोड़ा जा रहा है। और अभी तक तो हम लोग कांग्रेस के टाइम में पंचवर्षीय योजना की बात करते थे, बट मुझे लगता है कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री फाइनली इज हैप्पी विद द नेहरूवियन मॉडल that we should go back to planning. So instead of 5 years, they are saying 25 years. That is one. And secondly, the huge amount of tariffs that used to be there in the 50s and 60s, same they want it this time also. The budget, I don't want, most of my colleagues have already spoken about health and rural development and everything else. So I don't think I'll take the time of the to speak on those, except that the capex which has gone in the infrastructure, I don't think they will be able to spend it. Maybe they have allotted that much to clear backlogs, for example, for NHI or something. Now I'll come straight to Atmanirbhar Bharat. Government is, whether it is our Honorable Prime Minister or the ruling party members of talking of Atmanirbhar Bharat के लिए लोग का केवल लिप सर्विस है। अब आपको इस विषय में बताता हूँ। Doing business in India is governed on the aggregate by as many as 1536 law, which on the aggregate requires 69,233 compliances. The laws are both central and state laws. These are 678 central laws that require 25,537 compliances, 858 state laws that require 43,696 compliances. These are okay with the big corporates, but for the medium industry and the small industry, वो काम क्या करेगा? Many of these laws and compliances, prison sentences are there. In fact, imprisonment clauses run into hundreds as follows: 244 central laws and 25,537 compliances have imprisonment clauses. 599 state laws and 20,895 have imprisonment clauses. I will request the Honorable FM and the Corporate Affairs Minister to set up an independent group to simply calculate the cost, both direct and indirect, in terms of time spent, for example, of the required compliances in respect of various group of industries. अगर ये इस तरह का compliance में ही हमारा time बीतेगा, तो हम business क्या कर पाएंगे? और जब हमने टैरिफ कम किया है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है. This is also the time of economic diplomacy. काफी मेंबरों ने कहा कि 1 लाख करोड़ डॉलर का इंपोर्ट चाइना से हो रहा है, बहुत चिंता का विषय है. बिल्कुल चिंता का विषय है. मगर अगर फर्ज कर ले कि आज हम 1 लाख करोड़ को 30 लाख करोड़ का बायलैटरल ट्रेड कर दें कि 15 लाख करोड़ हमारे यहाँ से जा रहा है, 15 लाख करोड़ का उनके आ रहा है, तो 1 मिनट में उनकी पॉलिसी पाकिस्तान विज़ चेंज हो जाएगी. बिकॉज टुडे इज द डे. अब फर्टिलाइजर पर लीजिए, the amount of mess they have created in the fertilizer sector. ईरान से हमारे यहाँ 50% यूरिया आता था जब यूरिया का प्राइसेस $300 के आसपास था. इन्होंने यूएस के डर से ईरान से लाना बंद कर दिया, यूरिया प्राइस $1,000 हो गया. तो हम डरते क्यों हैं? We are very clear that we respect UN sanctions, not US sanctions. Today the same thing is happening in potash. The Americans are saying that we will put sanctions on the Russians and the Belarusians. We are quiet. Nobody is interested.
तो और आप ये देखिए, जब 30 साल तक तो हम एम्बेसडर और फिएट 30,000 बनाते रहे। जब वो सेक्टर खुला तो इनफैक्ट उस समय पीलू मोदी जी ने बोला भी था कि हमारे पास 2 कार ऐसे हैं जिनका हॉर्न छोड़ के हर चीज बचता है। तो जब वो सेक्टर खुला तो टुडे वी आर एक्सपोर्टिंग 4 लाख कार्स, एंड if we add commercial vehicles like scooters and everything, it is almost 30 lakhs. So हर भारतीय बिजनेसमैन बिल्कुल सक्षम है। जब तक इन कंप्लायंसेस को आप लोग नहीं हटाइएगा, हम लोग उसी में रह जाएंगे। अब दूसरा डिपार्टमेंट का ले लीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इनकम टैक्स में अगर आप पर इंक्वायरी हुआ तो 1-2 साल में उसको एज पर लॉ ठीक कर देना है, फाइन लेना है या जो भी करना है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर आपके यहाँ आ गया तो आप समझ लीजिए कि 20 से 25 साल तो इंक्वायरी में बिताएंगे वो, उसके बाद 10-15 साल वो केस लड़िए। तो बेसिकली अगर आप 40 साल के हैं तो 80 साल तक है। और जिस दिन आपके घर आएंगे पूरे समाज में आपका बेइज्जती हो जाएगा। इन माई पर्सनल केस देयर इज अ इंक्वायरी गोइंग फ्रॉम 2010, and when my friends asked what is happening to that, I said till I die I'll be under inquiry or either in the court. तो सारे बिजनेसमैन को तो आप बंद कर रहे हैं। पिछले 5-6 साल में मैंने 600-700 करोड़ टैक्स दिए होंगे, मगर मैं चोर हूं बहुत बड़ा। तो या तो इंक्वायरी कर, हमने तो जो प्रेजेंट ईडी चीफ है इनके पहले जो थे उनको जाके हाथ जोड़ के बोला था मैंने कि मुझे चार्जशीट कर दीजिए, मुझे भेज दीजिए, मैं कोर्ट में लड़ लूंगा। तो अगर हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने तो सबसे पहले कंप्लायंसेस हटाइए। और ये कंप्लायंसेस इज ओके फॉर द बिग कॉर्पोरेट्स, दे हैव टू मच ऑफ स्टाफ, बट जो मीडियम इंडस्ट्री या वो कर रहा है उसके लिए कीजिए। तो आप इतना कानून बनाइएगा तो कुछ हो पाएगा क्या? कुछ नहीं हो पाएगा। करते रहिए आप लोग, लिप सर्विस करते रहिए। आज इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो गया है? Conclude, Singh ji. Just give me 1 minute. I wish to make it that we are not going to become Atmanirbhar by erecting barriers around us, but opening up. In the 1990s, it was famously said that each time we reduced import tariffs, our export went off. We as businessmen are not scared of or shy away from competing with China or any other country. We will take them on. Just liberate us from the excess and excesses of domestic laws that divert our time and attention and resource from the business of doing business. Thank you very much, sir. Thank you, Mr. A.D. Singh ji. Now, the next speaker is Dr. Narendra Jadhav. No, you can sit and speak, no problem. Thank you, Vice Chairman, sir. I rise to strongly, or I sit to strongly support the budget 2022-23. I wholeheartedly commend the Honorable Finance Minister for giving the nation a visionary budget aimed at inclusive and sustainable economic growth and development of the Indian economy. Vice Chairman, sir, a budget is supposed to strike a balance between economic acumen and political sagacity. The Finance Minister has struck a fine balance between the two. It is a no-nonsense budget reflecting professional integrity of the highest order. Every budget is always meant to be a contextual one. There are two overriding or dominant considerations that seem to have weighed on the Honorable Finance Minister's mind. First, the Indian economy has staged an exceptionally smart recovery, posting 9.2% real GDP growth, rising from the depth of the unprecedented corona pandemic. And the second, financial year 2023, that is the next year, it marks the beginning of the Amrut Kal, when our nation will be transiting from India at 75 to India at 100. Both of these considerations, sir, call for laying a solid foundation for India at 100. And in my view, this is precisely what the Honorable Finance Minister has achieved in this budget. I call this budget a visionary budget
because it effectively translates into action the great vision given by Honorable Prime Minister while addressing the nation on 15th August 2021. Sir, before I go into the heart of the budget, please allow me to point out some bloopers and blunders that were committed by some of our esteemed colleagues while speaking in this August House yesterday. First, I'll take on Shri Jawahar Sarkar. Shri Sarkar emphatically argued that the proposed expenditure on education as the ratio of GDP in the budget is only 1% of GDP. This is completely wrong. Even in 1951, we had a greater amount of expenditure, public expenditure on education. Actually, sir, the proposed expenditure on education is around 4% of GDP, not 1% of GDP. I would urge my learned friend to get his facts straight and not mislead this august House. Secondly, nominal GDP is expected to grow at the rate of 11.1% in the next year. Economic survey, again Mr. Chidambaram quotes, that the real GDP growth in the next year, that is financial year 2022-23, is expected to be 8%. He then questioned the finance minister and he said, does it mean that the inflation in India in the financial year 22-23 is going to be only 3.1%? That 3.1% comes from the difference between 11.1% nominal GDP growth minus the real GDP growth of 8%. According to Sri Chidambaram, only one of the two numbers are right. One of the number has to be wrong. Either the nominal GDP growth number is wrong or the real GDP growth number is wrong. Not really, Chidambaram sir. The difference between nominal GDP growth rate and the real GDP growth rate is not CPI inflation, it is not WPI inflation. The difference between the two is actually the widest measure of inflation called GDP deflator. And the inflation based on GDP deflator, which is embedded in this budget of 3.1%, is perfectly feasible. Why? Because the average inflation rate based on GDP deflator, and I have worked out for the last 5 years ending the pre-COVID year of 2019-20, it turns out that the average inflation rate based on GDP deflator in our country is 3.15%, which is not very different from 3.1%, which has been incorporated in the present budget. I am really surprised, in fact appalled, that a person who has been a finance minister for a long time can make such an elementary mistake. Chairman, sir, to my mind, the most important thing about this budget is that priority has been given to economic growth over fiscal consolidation. For financial year 21-22, that is the current financial year, Honorable FM had budgeted lowering the fiscal deficit as a ratio of GDP from 9.2% to 6.8%. And the Honorable Finance Minister has nearly succeeded in hitting that target, achieving that target, posting a revised fiscal deficit of 6.9% instead of 6.8%. This is excellent fiscal marksmanship. And for the year 22-23, sir, the Honorable FM has placed a budget estimate at only moderately lower level of 6.4% of GDP. Some members questioned this and said that this number is also very large, and when last time we had fiscal deficit of such large magnitude, we had an unprecedented crisis of 1991. These critics forget that during the 1991 crisis, it is true that fiscal deficit was very large, but at that time, our foreign exchange reserves were only $1 billion. Sir,
Today, our foreign exchange reserves are 630 billion US dollars. The situation is not comparable at all. Vice Chairman, sir, this avoidance of a sharp reduction in fiscal deficit as a percentage of GDP, especially against the backdrop of buoyant tax revenues, and that too in GST, unmistakably it implies greatly enhanced public expenditure. The best thing about this budget, sir, is exceptionally large increase in capital expenditure to the tune of as much as 7.5 lakh crore. And of this enhanced capital expenditure, again it is noteworthy that as much as 43.3% is being devoted to building world-class infrastructure of roads, railways, and so on. The strategy underlying this budget is very clear. Sharply increase public investment would entice greater private investment. It would create more jobs, more income. In turn, that would create larger consumption demand. And to meet that demand, there would be more production, and therefore there would be more jobs. This virtuous circle will lay down the foundation of a sustained economic growth as the India transit at India 75 makes a transition to India at 100. A question is being asked, sir, in some responsible quarters, why has the finance minister refrained from giving a big push to consumption, say through cut in direct taxes or through consumption vouchers? It is argued that increasing purchasing power in the hands of people would raise the consumption demand, it would mean greater production, and it would promote economic growth. Please conclude, sir. Yes, one more minute, sir. The Honorable Finance Minister does not seem to have accepted this logic. To my mind, sir, there are at least two reasons at this point of time to prefer investment-led growth to consumption-led growth. The two reasons being, the first is the number of social safety measures which were taken during the second wave of corona pandemic has been very large. Recall the 5 mini budgets to mitigate the devastating impact of the pandemic, some of which in fact are continued in this budget. More importantly, while both virtuous cycles, Sorry, your time is over. 30 seconds, sir, 30 seconds, please. While both cycles, one consumption-led and other investment-led, both are correct in principle, the virtuous cycle of investment-led growth is much stronger than the virtuous cycle of consumption-led growth. It is important to recall that economic theory talks about investment multiplier. It doesn't talk about consumption multiplier. In other words, the durable impact of enhanced public investment is much stronger than equally large increase in consumption expenditure by government. I strongly endorse this budget 22-23. Thank you, Vice Chairman, sir. Thank you. The next speaker, Shri Birendra Prasad Bhaisya. Sir, you have 5 minutes. Thank you, Chairman, sir. On behalf of my party, Assam Gana Parishad, I raise here to support the bill, sir. My time is very short, but I have to speak on a long budget, so it is difficult to conclude within the 5 minutes. I request you kindly consider, if possible for your end, kindly consider extend some more time, sir. Madam Finance Minister, I compliment you. In this critical time, you perform a good budget. Because election of the UP, election of the other state is knocking the door, people in general thought that your budget will be focused on to get vote in election, but you are not doing this thing. This budget is a growth-oriented budget. In your speech, Madam Finance Minister, you have said
we expect in coming year, our economic growth is going up to 9.2%. In this critical time, it is a very good, it will be very good growth, and definitely with this good growth, now we can compare other development country in the growth area also. Sir, Prime Minister took lots of initiative for the infrastructural development, socio-economic development of our country, sir. PM Gati Shakti is transferable approach for the economic growth and sustainable development. The approach is driven by the 7 engines, namely roads, railways, airport, ports, mass transportation, waterways, etc. In infrastructure, this budget has given lots of opportunities. Near about 25,000 crore is going to spend in the coming year for the expansion of the national highway, about 25,000 kilometers. This is a welcome move, sir. For railway also, we have taken lots of initiatives, sir. Sir, from budget we have seen, government has decided to expand the capital expenditure more than 30%, sir. When capital expenditure is going to increase, sir, definitely new railway project, new ports, new infrastructure project is coming up, sir. It will create, sir, job opportunity to our country, sir. Madam Finance Minister, in her budget, she said government has estimated to employ near about 60 lakhs people in this financial year. This is a welcome move, sir, because unemployment is a great issue for all of us, sir. We are everybody concerned about this issue, sir. Definitely, sir. I'm sure, sir, this approach will be helpful to curb the unemployment in our country, sir. We salute to our farmers, sir. During this world COVID time, our agricultural products increased by 30%, sir. And during this world period, sir, our horticulture production also increased by 33%, sir. And government lots of initiative to helping the farmer also, sir. Government is going to spend 270 lakhs crore rupees for the direct payment for minimum supporting price given to the farmers, sir. With this price, the government is in 2021-22, the estimated procurement for paddy and kharif in 2021-22 will be covered 1,208 lakhs metric tons, wheat and paddy from 163 lakhs from 160 lakhs farmers, sir. So it will be definitely helpful, sir. Sir, always from our budget, we are allocated lion's share to the defense sector, sir. And sir, developing country like USA, like France. Please conclude, sir. Sir, give me 2 minutes, sir. They are take our money, sir. We have already imported our equipments from the foreign countries, sir. For the first time in her budget, Madam has said 60% of the defense equipment produced by the country itself. This is a very welcoming, and in this regard, Madam has given priority in the research and development with combination with the DRDA, the research and development. This strategic will be helpful for us to produce our own product in defense sector, sir. Sir, one more. Now, tea industry of the country, sir. Tea industry of the country, Please tea conclude, industry sir. have a great role in our economy, sir. We earn huge foreign exchange for the tea industry, sir. And tea industry of the country today facing lots of problems, sir. In this year, sir, tea production in country is declining, sir. Not only that, sir,
In international Please, level, we are Virendra ji, facing- conclude. we are facing lots of problems with the lots I'll of go to the problems next speaker. with the tea from Kenya, tea from other countries, Sri Lanka, sir. Madam Finance Minister, looking after this region, could you help us? Could you help? Could you allot some money for development or survival The next of speaker, the tea industry of our country? Shri I Binay hope Vishwam. For in the interest of tea Thank industry, you. Madam will consider Thank you, this. thank you, With please. this, thank you very much, sir. Shri Binay Vishwam. Thank you, sir. Sir, it was in 1998 that the book appeared before the world by George Soros. He came from the same creed of the ruling class. The book was titled The Crisis of Global Capitalism. It was the beginning of a right-wing intellectual, himself is a big investor, wrote about the crisis. That crisis is increasing today. This budget of the finance minister was a very poor attempt to hide that crisis and claim that the government has made something great. I feel very sorry for her. Sir, she may be the daughter of Tamil Nadu or daughter-in-law of Karnataka, but I believe personally she is a very lady, she is a lady with integrity. That I respect her. But her budget, I should say, is a failure budget. Sir, everyone of us know, in this budget, the poor are forgotten. In the beginning of the neo-liberalization age, we had a great theory. That theory was trickle-down theory. Everybody knows the meaning. But this budget reflects a triple-up theory. Not for the poor. This budget is for the rich at the top. Whatever step it was seen. I don't want to bring the data here anymore. Just humbly mentioned here. Sir, what is there in the budget for the poor, for the workers, for the women, for the peasant, for the MSP, for the health sector? Nothing is there. There, the allocation is slashed. Subsidy is slashed. But for the poor, this is the situation. For the rich, you can see the budget was all in favor of them. And our Prime Minister was telling the other day about great words about the poor people, the migrant laborers. What they have got from this budget. The government was the reason for the great pitiable scenes that we saw on those days. They were in thousands, starting from their workplace to their villages. He accused the Congress party for that. But sir, was it the Congress party who did the lockdown with the notice of 4 hours? Sir, was it the Congress party who did talk about the Lakshman Rekha? Sir, my party has a lot of criticism against the Congress party, no doubt. Congress was the party that began this disastrous policy of the economy. We know it. But the Prime Minister and his party, the BJP, they do it in a much harsh manner, disastrous manner. That's what we see. Always this government talk about Vivekananda. So let me quote from Vivekananda. There can be no dogmas and preachings for a hungry man. No amount of preaching about gods can satisfy his hunger. He needs to be fed with bread. That bread was denied for him by the BJP government, by lockdown. That was the reason for that tragedy of this. So how can this government forget those seen in the rail tracks of Aurangabad? The people were hit by a train and killed. We remember that. And this budget forgotten them completely. Completely forgotten them. Sir, once I heard the Prime Minister
talking loud about the wealth creators. He said that the government will support the wealth creators. And who are the wealth creators for the government? It was mentioned here. For this government, wealth creators are Adani, Ambani and Tata Birla type of people. He mentioned about Tata Birla on the left also. That once upon a time we shouted Tata Birla government. Yes, we shout today. This is a Adani, Ambani government, a Tata Birla government, a government which surrendered the Air India to Tatas with a paltry cost. This is the government of the exploiters. We have no doubt about that. And that government should not forget certain facts. Sir, the real wealth creators, who are they? The peasants. They created the wealth. They are feeding us. The workers, the beggar laborers. All those wealth creators are forgotten and all the exploiters are taken care of. Sir, I don't want to go back again to the figures. Ample of them are with me, but you have rung the bell. Sir, the ecosystem was the word she was using always. Ecosystem. The ecosystem of the economy is shattered by the carbon emission from this government. So the ecosystem cannot be saved with this level of emission of carbon from the financial policy of this government. It has to be protected. That is the need of the hour. I think my party believes that BJP cannot do it. It's a party which preaches a lot for the poor, but that's a party which acts only for the rich. And that rich will not save this country. They are only concerned about their profits and that alone. Sir, the words of Pope Francis is very important today for the whole world. I respect him. The world respects him. Our Prime Minister invited him to India also. We all wait for him to come to India. Pope Francis once told, the marketplace by itself cannot resolve every problem. Madam Finance Minister, please remember it. However, much we are asked to believe this dogma of neoliberal faith. Whatever the challenge, this impoverished and repetitive school of thought always offers the same recipes of neoliberalism. Mr. Bishop, please conclude. Sir, please. Your time is up. Neoliberalism simply reproduces itself by resorting to the magic theories of spillover or trickle without using the name as the only solution to social problems. Trickle-down theory is... Okay. I am calling the next speaker. Now, last part. Sir, let me quote from Karl Marx also, one sentence, one part, very important. Because Thank you. Sir, Marx is the... Thank you. The next speaker is Kapil Sibal. Marx is the... Sir, please. Marx is the philosopher of tomorrow and today. Yes, please, yeah. I just want to make sure I heard it right. Did Honorable Member Vinay Vishwam first quote Pope Francis and immediately after that is quoting Marx? I just want to be sure. Sir, if you give me 2 minutes, I can explain properly, effectively, and she will be convinced. You will have another opportunity later, but now you conclude because I have called the honorable Sir, next member I have called already. Which is a very pertinent question, I have to respond to it, sir, please. Nothing will go on record now. I have already called the next speaker. Sir, please. Mr. Kapil Sibal. Sir, please, a bit more democrat, please. A bit more democrat, please. 1 minute. 1 minute. Madam, why I quoted Marx after Pope Francis? No, you need not reply to her. You need not reply to her, you conclude. Half a minute. The bourgeoisie has stripped off its hollow every occupation hitherto honored and looked up to with reverent awe. It has converted the physician, the lawyer, the priest,
the poet, the man of science, indicates paid wage laborers. I would Thank doubt. you. I would doubt. It Mr. Chibbal. Thank you. Nothing will go on the record. governments also. Mr. Chibbal. Not Kapil Chibbal's speech will go on record now. Please. जी मैं आपका और अपनी पार्टी का आभारी हूँ कि आज इस बजट पे जो चर्चा हो रही है मुझे उस पे बोलने का मौका मिला। मैडम मैडम Madam, when I was going through the budget speech, so may I just go back and then sort of maybe hopefully... Oh, I come in front. Sorry. This one. This one, yes. Madam, when I was going through the budget speech, I was actually taken in by the key words that you used throughout the speech. Digital, green, climate, Atmanirbhar, made in India, capital expenditure, ease of doing business, tax revenues, GST collection, futuristic economy driven by technology, clean fuel, smart cities. But there were certain words which are missing. What were those? Unemployment, poverty, food security, informal sector, migrants, daily wages, health for all, welfare, social protection, women, youth. Now I ask myself, who is this budget for? Is it for that 1 or 2% of the people at the top who buy all the airports and all the ports? Or is it for, and what's the responsibility of any government and the finance minister? The responsibility is to take care of the people at the bottom of the pyramid. वित्त मंत्री जी, जब आप किसी परिंदे को उड़ते देखते हैं तो वो आसमान पे नहीं देखता। कभी देखा आपने कि परिंदा आसमान की तरफ देख रहा है? और जो पशु, जो जानवर जो नीचे जमीन पे हैं, कभी उनको देखा है कि वो आसमान की तरफ देख रहा है? कभी नहीं देखा ना? क्यों? क्योंकि असलियत जमीन पे होता है। आप लोग आसमान की तरफ देखते हो, फेंकते हो, सपने फेंकते हो, सपने दिखाते हो। जमीन को देखिए, हिंदुस्तान की जनता के हालात को देखिए। जो एक महिला वो ये सोचती होगी कि मेरा कल क्या होने वाला है, उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाऊंगा बिकॉज यू कैन जगल डेटा बट यू कैनॉट जगल फैक्ट्स। तो थोड़ा मैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको कुछ बताता हूं। पहली बात तो यह है कि आप अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, so World Bank data 2019 says that India had a level of unemployment of 23% amongst the youth. 23%. China unemployment rate in neighboring countries 2020, data by the Center for Economic Data and Analysis based on ILO database, China had an unemployment of 5%, Bangladesh 5.3%, Pakistan 4.65%, Sri Lanka 4.84%, and India 7.11%. This is where we are. This is your shining India, whatever. Now, you have said that I have increased the capital expenditure by 2 lakh crore. That's what you say, to 7.5 lakh crores. So, जो 2 lakh crore है, that is for the purposes of building infrastructure.
बट आपने कभी देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ है? आज के दिन अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? मैं आपको बताता हूं, शायद आप भूल गए होंगे। इंडस्ट्री वाइज जॉब लॉसेस आपको बताता हूं। मैन्युफैक्चरिंग 9.8 मिलियन लॉस ऑफ जॉब्स, होटल एंड टूरिज्म 5 मिलियन, एजुकेशन 4 मिलियन, overall services sector 1.8 million, fall in central government employment 3.32 million. In 2012-13 it's now 3.31 million. Employment in railways 1.27 million. ये तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर हैं। तो अगर आप सड़कें बनाओगे तो वो इन सेक्टर्स का क्या होगा? होटल और टूरिज्म का क्या होगा? एमएसएमई सेक्टर का क्या होगा? एजुकेशन का क्या होगा? ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर का क्या होगा? तो व्हेन यू हैव टू डील विद अनएम्प्लॉयमेंट यू हैव टू डू इट सेक्टर वाइज. यू हैव टू गिव देम रिलीफ सेक्टर वाइज. जो आपके सड़कों में जो लोग लेबर आती है वो मोस्टली अनस्किल्ड रहती है. अच्छी बात है कि आपने 2 लाख करोड़ दिया है, उसमें से 1 लाख करोड़ तो आपने लोन दिया है स्टेट्स को, केवल लोन, वो भी 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन. इसका मतलब क्या होगा कि वो पहले तो आप तय करेंगे कि स्टेट को जाएगा, वो ये भी मालूम है कि किन किन स्टेटों को मिलेगा. फिर कई स्टेट चाहेंगे ही नहीं कि आपसे लोन ले, क्योंकि वो टाइड अप रहेगा, क्योंकि अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट डालेंगे तो आपकी अनुमति चाहिए. तो ऐसे बजट नहीं बनने चाहते. कल मेरे चिदम्बरम साहब ने 3 W's की बात की थी. अभी हम वेल्थ की बात करते हैं, बिकॉज I believe that this particular budget has no vision, no real long-term plan. And let me explain something to you, and through you, hopefully the people of India are listening. Anywhere in the world, wealth is created in universities. Wealth is never created by industry. Industry uses the ideas and the innovations that come through young people in the universities and then turn them into goods and services. So if you give benefits to industry, it's not going to create wealth. It is going to create wealth for those individuals, but the real wealth of the nation will be created in the university system. And let me tell you that, and you'd be really shocked. And the other real wealth created will be on the basis of research and development. What kind of investment do you make in research and development? I'll give you some very interesting figures. That's why countries like America are wealthy, and that's why countries like India are where we are. The R&D percentage of GDP, and I'll not go into that, the US spends, mark the figure, $606 billion every year on R&D. What is our expenditure? And this is on PPP terms. Our expenditure is 47 billion. How is this country going to progress? China spends $514 billion on R&D. Countries like Japan spend 172, and they've got much smaller populations, $172 billion. Germany, $131 billion. France, $63 billion. Now, unless you put money in R&D, how will you create wealth? Unless you give your students the freedom, not the kind of freedom that we have seen in JNU, but the freedom to think, to converse, to have the freedom to decide on what to do, to bring about new ideas. If you go to any university in the United States, most of the universities are funded by the government. And in fact, there are businesses who have built campuses in the university system through their investment, aided by government. Now, if you don't give freedom in education, if you don't do investments in research, you're not going to create wealth in this country. And you've seen it in your 2019 budget. Look at the kind of benefits you gave to industry. Reducing the tax to 25%,
then to 15%. The total tax now for new industry is 17%. We set up a new industry. No, they are not going to create wealth for the country. They may create some jobs. So I think that this nation should realize that unless we invest in the university system, for the ideas, for the IP to be created. What happens in the university system? The IP is created, and then business comes and does prototypes, and after prototypes, they actually see whether it's a viable commercial proposition. उसके बाद फिर वो बनती हैं, इंडस्ट्री में जाता है और वस्तुएं बनती हैं और सर्विसेज होती हैं। अगर उसमें आप ध्यान ही नहीं दोगे तो आप कौन से वेल्थ की बात कर रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ी भारी समस्या है। और फिर दूसरी बात कि हिंदुस्तान को मैं समझता हूँ जैसे हमारे घरों में परिवार है, हिंदुस्तान भी एक परिवार है। और जो माँ होती है वो क्या सोचती है? हमेशा सबसे जो कमज़ोर बच्चा होता है ना, हमेशा उसके बारे में सोचती है। और अगर कोई कमी रह गई हो, क्योंकि जो अपने आप में ठीक ठाक है, आत्मनिर्भर है बच्चा, उसको तो आप छोड़ देते हैं कि आप आत्मनिर्भर रहो। हम उन लोगों की मदद करेंगे जो आत्मनिर्भर नहीं हैं। इस बजट में आपने देखा कोई मदद दी उनको आपने? ये बड़े दुख की बात है। और आप बात कर रहे हो अमृतकाल। अमृतकाल, मैं तो 2014 से अब तक राहु काल देख रहा हूं। कौन से अमृतकाल की बात कर रहे हो आप? बस अब देखिए ना, ये कौन सा आप अमृतकाल की बात कर रहे हो? ये तो राहु, देखिए ना। और फिर असलियत क्या है? आप फिर यहां पे मैंने कल प्रधानमंत्री को मैं बड़ा अचंभा रहा कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े लोगों की बात की। टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे भैया मुझे ये बताओ, जो सभ्यता के टुकड़े टुकड़े करता है, जो इतिहास के टुकड़े टुकड़े करता है, जो संविधान के टुकड़े टुकड़े करता है, जो भाईचारा के टुकड़े टुकड़े करता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर है। तीसरी बात, आपने ये जो पेट्रोल पे जो अपने एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है इतने सालों में, और आज भी लागू हुआ है, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि 2014 में पेट्रोल का जो कीमत था पर लीटर वो 71 रुपया था, और जनवरी 2022 में वो 95 रुपये है। सेंट्रल एक्साइज जो हमने लागू की 2014 में वो 9.20 पर लीटर, 9.20 रुपये पर लीटर, और आपने 27 रुपये कर दिया उस पर एक्साइज। कितनी बढ़ोतरी हुई? 203%, 203%। डीजल पे 55 रुपये उसका दाम था पर लीटर, उस पे एक्साइज थी 3.46। आज दाम है 86 रुपये, उस पे एक्साइज है 21 रुपये, और उसकी जो बढ़ोतरी है वो 530% है। 530% बढ़ोतरी। और मैं सोच रहा था, क्योंकि आजकल यहां औरंगजेब की बात बड़ी होती है, तो मैं इतिहास को देख रहा था, और इतिहास में मुझे ये पता चला कि एक शख्स जो हमेशा, हाँ जजिया की बात हो रही है, जो अहमद शाह था 1414 में सबसे पहले जजिया उसने लागू किया। उसके बाद अकबर आया, एम्परर अकबर आया, उसने उसको खत्म कर दिया। फिर औरंगजेब आ गया, उसने दोबारा 1679 में लागू कर दिया, और उसने ये कहा कि जो वंचित लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उस पर लागू नहीं होगा, जो गरीब लोग हैं उस पर लागू नहीं होगा, जो हमारी रक्षा करते हैं आर्मी के लोग, उस पर लागू नहीं होगा। ऐसा औरंगजेब ने कहा। और आप बात करते हो औरंगजेब की, ये तो औरंग से भी बदतर बात है कि आपने सब पे लागू कर दिया, वो भी 530% और 203%। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस दिशा में जा रहे हो? आपको इतना
मालूम नहीं कि जो हमारा गरीब आदमी है और जो मिडिल क्लास भी है, वो जो स्कूटर पे जाता है, जब उसको 95 रुपए 100 रुपए देना पड़ता है, उसको क्या तकलीफ होती होगी। और आप बात करते हो डिजिटल इंडिया की, आप बात करते हो कनेक्टिविटी की, और जहां तक एजुकेशन का सवाल है, मैं कुछ और बातें आपसे सामने रखना चाहता हूं कि इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास सुविधाएं हैं कि वो कनेक्टिविटी के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकें। कितने लोग ऐसे हैं, और मैं आंकड़े आज के दिन आपको नहीं देना चाहता, लेकिन बाय एंड लार्ज देहात में लगभग 6 या 8% लोग होंगे जो कनेक्टिविटी कर पाए। 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और आप कह रहे हो कि आप टेलीविजन चैनल्स खोल दोगे, प्रोग्राम बना दोगे। अरे किस झोंपड़ी में टेलीविजन लगेगा, और कहां वो ये सब लेसन्स लगाएंगे, आपको मालूम है? आपका पहले तो मैं वित्त मंत्री जी आपसे कहूंगा कि मेरी एक गुजारिश है, आपकी पार्टी कहेंगे आपको जरा एक इलेक्शन लड़वा दें, फिर आपको पता चलेगा जमीनी हालात क्या है हिंदुस्तान के। और जहां तक मनरेगा सवाल है, आपने उसका देखिए 73,000 करोड़ कर दिया मनरेगा का आपके एलोकेशन, 1,10,000 करोड़ था, उसका 73,000 करोड़ कर दिया, और उसमें आपने लगभग 13,000 करोड़ अभी प्रदेशों को देना है, तो एक्चुअल एलोकेशन केवल 60,000 करोड़। तो आप किस दिशा में जा रहे हो? फिर रही स्वास्थ्य की बात, क्योंकि वही बहुत, जब तक बच्चे का एजुकेशन सही नहीं होगी, स्वास्थ्य सही नहीं होगा, तो हिंदुस्तान की जो संपत्ति है वो आप पैदा कर ही नहीं सकते। आप बच्चों पे ध्यान दो, ये बड़े बड़े लोगों हैं ना, उनको छोड़ दो, क्योंकि उनको मालूम है कैसे वेल्थ बनाना है, वो आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है। वो सुविधाएं उनके पास हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं उनके बारे में सोचो। Actually, आज मैं सुबह I was reading an article by Ranganathan ji, who has been the governor of the Reserve Bank of India, and he said today that look, what is lacking is gross demand shortage. Unless you put money in the hands of people and they spend, the economy will not move forward. Their purchasing power has to be increased. How do you increase their purchasing power? By reducing Manrega? By not giving them any benefits? Those sectors which have been destroyed by the economy because of the pandemic, you're not at fault at that. You're not at fault at that. इसीलिए आपके प्रधानमंत्री जी को ये जो अमृत काल है उसकी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना वो रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना आपके रहनुमा रहेंगे, और ना नफरत के बयान रहेंगे। 2047 तक वो नफरत के बयान भी नहीं रहेंगे। तो आप जरा इस बात पे सोचिए। Please wind up now. In 1 minute, sir. I'll not take more than 1 minute. Don't worry. So the last thing I was talking about was health sector, and I'll just give you a few figures and then I've done. In the health sector, I just want to tell you one thing, that the health expenditure in select countries in 2018, I don't have the figures after that, I'm sure the finance minister will be able to give them. हमारा जो per capita expenditure in health है वो $172 है, per capita expenditure in health, और जर्मनी का है 771, फ्रांस का 485, इटली का 853, साउथ कोरिया का 1044 पर कैपिटा, चाइना का $334। तो अगर हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हेल्थ का इस हालात, ये जो हालात दिख रहे हैं मुझे, तो बच्चे का ना तो स्वास्थ्य ठीक होगा, ना उसकी शिक्षा ठीक होगी, तो वेल्थ आप अडानी अंबानी से बनवाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Kapil Sibal ji. Now, Sushil Modi ji. माननीय उपसभापति महोदय, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी has passed from JNU. She does not have a degree from Harvard Business School. जो डिग्री चिदम्बरम साहब के पास थी,
लेकिन मैं कह सकता हूं कि निर्मला सीतारमण जी ने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय जो कांग्रेस ने बजट पेश किया था और टेपर टेंटम 2012-13 के समय में जो कांग्रेस ने बजट पेश किया था, शी इज प्रेजेंटेड 100 times better budget, 100 times better budget in such adverse conditions. उपसभापति महोदय, स्पेनिश फ्लू आया था 17-18 में, 1.5 करोड़ लोग मरे थे भारत के अंदर। भारत की आबादी थी 30 करोड़ और 1.5 करोड़ लोग मर गए थे। और उपसभापति महोदय, इस कोविड काल में 5 लाख से ज्यादा लोगों की भारत में मृत्यु हो गई, जो अत्यंत दुखद है। लेकिन उपसभापति महोदय, अमेरिका की आबादी 33 करोड़, which is 1/4 of India, and 9,26,000 people died in America. Brazil has a population of only 21 crore, which is 1/7 of India, and 6,32,000 people died. Russia's population is 1/10 of India, and 3,35,000 people died in Russia. In UK, which is a 20 times less population than India, and 2 lakh people died in UK. सती महोदय, अगर नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व नहीं होता और फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस का सहयोग नहीं होता, तो देश में 5 लाख नहीं 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए होते। सोचते थे 50 लाख से ज्यादा। हमारे पास तो अमेरिका, यूके, फ्रांस, ब्राजील जैसी और हेल्थ की सुविधा नहीं है, फिर भी हमने इस देश के 40-45 लाख लोगों को मरने से बचा लिया। और नहीं तो सती महोदय, क्या होता ये कोई नहीं जानता है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा, वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ये थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विकट परिस्थितियों में देश का नेतृत्व प्रदान किया। आप मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग फेल कर गए। सभापति महोदय, भारत में अभी तक 170 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 170 करोड़, अमेरिका में 53 करोड़, ब्राजील में 36, जर्मनी में 16, रशिया में 15, यूके में 13। और सभापति महोदय, ये जो वैक्सीन मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, और सभापति महोदय, आप कल्पना कीजिए कि अगर भारत ने वैक्सीन भारत में अगर नहीं बनी होती तो 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हमको दुनिया के सामने जाकर भीख मांगनी पड़ती कि हमको वैक्सीन दीजिए, और वर्षों लग जाते तो भी हम देश के 140 करोड़ लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंचा पाते। सत्य महोदय, हमने कोविन का टेक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, QR कोडेड सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड, हमने लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया, 1 लाख कोल्ड चेन स्थापित किया, और लास्ट माइल डिलीवरी तक हमने और वैक्सीन को पहुंचाने का काम किया। अब सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि दुनिया में केवल 7 देश हैं जो वैक्सीन पैदा करते हैं। USA, चाइना, इंडिया, फ्रांस, यूके, रशिया, कनाडा, केवल 7 देश। और आज अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या हाल है, केवल 16% लोगों को फर्स्ट डोज लगा है और केवल 11% लोगों को सेकेंड डोज लगा है। और सती महोदय, इतना ही नहीं, तो भारत ने 150 से ज्यादा देशों को कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल एंड अदर असिस्टेंस देने का काम किया है। और सती महोदय, 28 जनवरी तक हमने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को 14 करोड़ 63 लाख डोजेस वैक्सीन मुफ्त में देने का या कॉमर्शियल एक्सपोर्ट करने का काम किया है। और महोदय, जिस भारत ने कोविड काल में, और ये नरेंद्र मोदी है जो कभी विचलित नहीं होते विपरीत परिस्थितियों में, और दिनकर ने ठीक ही कहा, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह है नरेंद्र मोदी की ताकत। तो सभापति महोदय, पिछले कोरोना काल के अंदर
भारत ने जिस तरह से मुकाबला किया, सती महोदय, मैं कल से भाषण सुन रहा हूं कांग्रेस के नेताओं का, पता नहीं उन्होंने अपने 50 साल में कितने रोजगार पैदा किए, लेकिन सती महोदय इस बजट का अगर कोई एक फोकस है तो दैट इज जॉब जॉब जॉब, रोजगार रोजगार रोजगार। इसके हर एक पन्ने पर रोजगार लिखा है, इसके हर एक पन्ने से रोजगार पैदा होता है। सती महोदय, हम ऐसा विकास देश को दे रहे हैं जो रोजगार पैदा करने वाला विकास है, जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ, ग्रोथ विद जॉब क्रिएशन। सती महोदय, रोजगार लोगों को डोल देने से पैदा नहीं होता है, कैश ट्रांसफर देने से, इनकम सपोर्ट से रोजगार पैदा नहीं होता है। हमने भी इनकम सपोर्ट दिया है, हमने भी लोगों को मदद की कोरोना काल में, लेकिन सती महोदय अगर रोजगार पैदा होता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से, अगर रोजगार पैदा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग से। और सती महोदय, किसी ने ठीक ही कहा, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर शुरू किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वायदा किया है। नरेंद्र मोदी ने केवल जनता से नहीं, खुद से वायदा किया है। सती महोदय, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जिक्र हो रहा है। सती महोदय, पिछले 4 साल में इंडिया हैज स्पेंट, विल बी स्पेंडिंग, इफ यू इंक्लूड 2023, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ हम पिछले 4 साल में, इस साल को मिलाकर केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करने जा रही है, खर्च कर चुके हैं। आज तक आजाद भारत का इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं हुआ था, इसलिए इस साल के बजट में 35% ग्रोथ, 7.5 लाख करोड़, 7,50,000 करोड़, द आउटले हैज बीन इंक्रीज बाय 35%। और कैपिटल एसेट्स थ्रू ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, अगर उसको जोड़ ले तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 10,68,000 करोड़, विच इज 4.1% ऑफ जीडीपी। और सती महोदय, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इफ यू एड 100 rupees, if revenue expenditure increases by 100 rupees, then only 98 rupees is added to the economy. But if you spend 100 rupees as a capital expenditure, 245 rupees is added to the economy in the same year, और बाद के वर्षों में 480 रुपया और इकोनॉमी के अंदर ऐड होता है। सरस्वती महोदय, हमने हर चीज को और इसके साथ जोड़ा है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिमांड भी क्रिएट करेगा, सप्लाई साइड को भी देखेगा। इट विल क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स, ह्यूज जॉब क्रिएशन, स्किल्ड टेक्नीशियन, सीमेंट, स्टील, सैंड, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। और इतना ही नहीं सोती महोदय, सिब्बल साहब तो कभी तो राज्यों से संबंध रहा नहीं, 1 लाख करोड़ हमने राज्यों को दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, एंड 50 लाख 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन। आज तो पता है कांग्रेस ने कभी राज्यों को इंटरेस्ट फ्री लोन 50 साल के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया था कभी, सौती महोदय? और सौती महोदय, रोड के सेक्टर में we will be spending 2,42,000 crore. That is the highest ever expenditure in the road sector, and we will be building 25,000 national highways in the year 2023. और एक बात और बताना चाहूँगा, इस बार के रोड के बजट में हमने कोई बोरोइंग नहीं की है। इसके पहले 65,000 करोड़ हमने बोरोइंग की थी नेशनल हाईवे के लिए, and this year we have supported the national highway with the budgetary support. They will not be taking as a single penny as a borrowing. और सती महोदय, इसलिए केवल रोड सेक्टर नहीं, हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, डिफेंस के अंदर 1,52,000 करोड़, रेलवे के अंदर 1,37,000 करोड़, टेलीकॉम में 54,150 करोड़, मेट्रो पर 19,130 करोड़, एटॉमिक एनर्जी पर 1.9% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सती महोदय, अगर ये रोजगार पैदा, अगर इससे नहीं हो तो किससे रोजगार पैदा होगा? आप ही बता दीजिए कि रोजगार कैसे पैदा होता है। सती महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 14,000 करोड़ बजट था 21-22 का, दिस हैज बीन इंक्रीज 27% इंक्रीज
in the PM Gram Sadak Yojana to 19,000 crore. और ये नल जल योजना, क्या ग्राम सड़क योजना से रोजगार पैदा नहीं होगा? क्या नल जल योजना से अगर हम 3.8 करोड़ घरों में अगर हम 60,000 करोड़ खर्च कर अगर हम टैप्ड वाटर सप्लाई पहुंचाएंगे तो क्या जॉब क्रिएट नहीं होगा? अगर 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए अगर हम 48,000 करोड़ पैदा खर्च कर रहे हैं तो क्या इससे रोजगार पैदा नहीं होगा? अश्वती महोदय, मुझे बहुत हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि चिदम्बरम साहब और कपिल साहब जैसे लोग आरई को 20 से तुलना कर रहे हैं. दे आर कंपेयरिंग रेवेन्यू, ये रिवाइज्ड एस्टिमेट विद बजट एस्टिमेट. अरे चिदम्बरम साहब, इतना तो आपको मालूम है, आप तो इतने बार वित्त मंत्री रहे कि हमेशा बजट एस्टिमेट को बजट एस्टिमेट से कंपेयर करते. अगर मनरेगा में पिछले बार 72,000 करोड़ था और बाद में हमने इंक्रीज किया, इस बार भी बजट में उतना ही रखा जो पिछले बार था. So now you are comparing budget estimate of 2023 with the revised estimate of 21-22. Something महोदय, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 111 लाख करोड़. सती महोदय, 20 से 25 तक 111 lakh crore we will be spending on national infrastructure pipeline, world class infrastructure. और सती महोदय, इतना ही नहीं तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति, ये क्या प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक. द प्रोजेक्ट्स pertaining to these 7 engines of growth in the NIP will be aligned with PM गति शक्ति प्रोग्राम. PM गति शक्ति और NIP, उन दोनों का अलाइन किया गया. मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सिनर्जी अमंग डिफरेंट मोड्स ऑफ मूवमेंट. और सती महोदय, आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं. सती महोदय, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 14 सेक्टर्स में एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन, एडिशनल प्रोडक्शन विल भी अगले 5 साल में हम पैदा करेंगे. और 3,46,000 करोड़ will be spent as a subsidy incentive to the industries in 14 sectors. Semiconductors 76,000 करोड़ सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में हम खर्च करने वाले हैं एज ए इंसेंटिव. सोलर, हमारे देश के अंदर सोलर पीवीज नहीं है. सोलर जो मॉड्यूल, जो सोलर प्लेट्स होती हैं, उनको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है. मैं निर्मला जी और पीएम को धन्यवाद दूंगा. दिस ईयर शी हैज इंक्रीज from 4,500 to 19,000, additional 19,500 crore for manufacturing of solar panels. और सती महोदय, 280 gigawatt of installed solar capacity by the year 2030. Solar capacity 280 megawatt नहीं, 280 gigawatt हम 2030 तक इस देश के अंदर और पैदा करेंगे. इसलिए सती महोदय, चाहे वो सेमी कंडक्टर्स हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल्स हो, फार्मा हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, फूड प्रोसेसिंग हो, टेलीकॉम हो, टेक्सटाइल्स हो, व्हाइट गुड्स हो, ड्रोन्स हो, इस पर हम इतनी बड़ी राशि खर्चा करने जा रहे हैं. और आप कहते हैं कि रोजगार कहाँ से पैदा होगा? सती महोदय, नरेंद्र मोदी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उनको मालूम है, इसे किसी ने कहा हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है. हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है. हम जहां से जाएंगे वो रास्ता बन जाएगा. हम जहां से जाएंगे वो रास्ता बन जाएगा. अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, अगर नरेंद्र मोदी की उड़ान को देखना चाहते हो, अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ ऊंचा करो आसमान को. जितना ऊंचा कर सकते हो आसमान को करो. आसमान को हम अपना हुनर दिखाएंगे. सती महोदय, ये जमाना मेटावर्स का है, वेब 3 का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है. और कहते हैं कि डिजिटल से क्या होगा? कपिल सिब्बल साहब, आप तो कम से कम इस तरह की बात मत बोलिए. डिजिटल करेंसी, दुनिया में अभी तक केवल 9 देश है जिन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है. एंड ऑल दीज कंट्रीज आर नेशन आइलैंड्स. बहामास छोटे छोटे देश हैं जिनकी आबादी 4 लाख 5 लाख होगी, उन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है. इंडिया विल बी द 10th country in this world which will be launching digital currency. इससे ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजैक्शन, रिड्यूसिंग यूज ऑफ ब्लैक मनी, cheaper currency management, online payment more secure and risk free,
interbank settlement not required. और स्वती महोदय, हैंडलिंग, प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक, मैनेजमेंट ऑफ कैश, और आप इसका मजाक उड़ा रहे। स्वती महोदय, डिजिटाइजेशन, क्या बिना डिजिटल वर्ल्ड के क्या आप सरवाइव कर सकते हैं दुनिया की प्रगति की दौड़ के अंदर? बजट में घोषणा की गई है 75 जिलों के अंदर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर 2025 तक देश के सभी गांव तक पहुंचा दिया जाएगा। ई पासपोर्ट, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक, इसके टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, विच विल क्रिएट 20 लाख जॉब्स का पोटेंशियल जिसके अंदर है। किसान ड्रोन्स, अभी यादव जी कह रहे थे कि किसान कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करेगा, तो यादव जी, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स फॉर क्रॉप असेसमेंट, गवर्नमेंट विल यूज दीज थिंग्स, और जो प्रगतिशील किसानों को वो भी ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। चिदम्बरम ये कह रहे हैं कपिल साहब कि चैनल से क्या होगा, आपको पता ही नहीं, आप तो कभी गांव में गए नहीं। बिहार के हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। हर एक भी देश का गरीब नहीं होगा जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची होगी। और आप कहते हैं कि टीवी नहीं है। सती महोदय, 2 करोड़ बच्चे केवल बिहार के अंदर स्कूल से बाहर हो गए। हमारी सरकार ने तय कि क्लास 1 से क्लास 12 तक, 12 के बजाय 200 चैनल्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सती महोदय, ये पोस्ट ऑफिस कल तक केवल लेटर और मनी ऑर्डर पहुंचाने का काम करते थे। अभी तक 20,000 पोस्ट ऑफिस has been converted into core banking, and government has decided in the coming years more than 150,000 post office will be converted into core banking. डिजिटल पेमेंट को सरकार प्रमोट करेगी। वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी, और महोदय, जब इतना डेटा पैदा होगा, डेटा का एक्सप्लोजन होगा, तो हमको डेटा सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। और सती महोदय, इतना ही नहीं, तो सरकार ने यह भी तय किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स जो सप्लाई करते हैं उनको प्रोक्योरमेंट के लिए 75% उनका जो बिल है विल बी पेड विद इन से 10 डेज। और ये ई बिल सिस्टम होगा, एवरीथिंग विल सबमिटेड ऑनलाइन, डिजिटली साइन बिल्स। इसलिए सती महोदय, ये नरेंद्र मोदी हैं जो मुश्किलों से भागते नहीं हैं। किसी ने कहा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी से, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, उनके कदमों में जहान होता है। पूरी दुनिया उनके कदमों में होती है। तो महोदय, हम टेलीकॉम, अभी तो सिब्बल साहब टेलीकॉम मंत्री थे शायद, 5G हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस साल ऑक्शन हो जाएगा और साल के अंत होते होते हम 5G लॉन्च कर देंगे। एंड सरस्वती महोदय, यू नो द स्पीड ऑफ 5G, it will be having 10,000 to 30,000 megabyte per second, 10,000 to 30,000 megabyte per second। और 4G की स्पीड कितनी है? 100 to 300 megabyte per second। और सरस्वती महोदय, इतना ही नहीं, 5G के ऑक्शन से 1 लाख करोड़ मिलेगा। और हम लोगों ने टेलीकॉम रिफॉर्म पैकेज घोषणा की थी सितंबर 21 में, जिससे 30,000 करोड़ फाइनेंशियल 2023 के अंदर इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू उसको इंक्रीज होगा। सती महोदय, BSNL को हमने 2019 में पैकेज दिया था। BSNL को 45,000 करोड़ का कैपिटल हम लोगों ने आउटले प्रोवाइड किया है। और सती महोदय, हम BSNL को भी इस साल 4G में कन्वर्ट करेंगे। और सती महोदय, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, हम केवल 5G नहीं ला रहे हैं। आज ही मीटिंग है कि 6G, यानी भारत अभी से 6G की तैयारी कर रहा है। तो 6G का स्टैंडर्ड क्या होगा? और सती महोदय, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सती महोदय, क्यूमुलेटिव, अभी तक पिछले जब से ये लॉन्च हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 21 लाख करोड़, 21 लाख करोड़ अभी तक हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा बेनिफिशियरीज के खाते में पहुंचा चुके हैं। और मालूम है सरकार सर कितना सेविंग हुआ है? 2,22,000 करोड़ सेविंग हुई है। 2,22,000 करोड़ की बचत हुई है भारत सरकार को केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। 4 करोड़ डुप्लीकेट रेशन कार्ड रद्द कर दिए गए,
4 करोड़ से ज्यादा एलपीजी के फेक कनेक्शन खत्म कर दिए गए। 120 लाख मैट्रिक टन रिडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर सेल में मदद मिली है। और श्रोती महोदय, मोबाइल फोन 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो केवल 2 इकाई थी, 2 यूनिट थी मोबाइल फोन की, और आज मुझे बताते हुए खुशी है 2021 में 200 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स आर इन इंडिया। और जहां 14-15 में हम 6 करोड़ मोबाइल तैयार कर रहे थे, 2021 में वी हैव मैन्युफैक्चर्ड मोर देन 30 करोड़ ऑफ मोबाइल फोन्स इन दिस कंट्री इटसेल्फ। और सती महोदय, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 3874 करोड़ हमने ट्रांजैक्शन किया 1 साल के अंदर यूपीआई के द्वारा, और जिसका वैल्यू है 72 लाख करोड़। और महोदय, स्टार्टअप्स का जिक्र कल कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय, सर यूनिकॉर्न कहते हैं उसको जिसका वैल्यू 7000 करोड़ से ज्यादा होता है, दैट इज नोन एज ए यूनिकॉर्न। और मैं सदन को बताना चाहूंगा, द ईयर 2021 ड्यूरिंग पेंडेमिक 44 स्टार्टअप्स हैव रीच्ड द स्टेटस ऑफ यूनिकॉर्न इन अ सिंगल ईयर। और इतना ही नहीं तो जनवरी 14, 2021 तक 83 यूनिकॉर्न्स विद अ टोटल वैल्यू ऑफ $277 बिलियन, यानी 83 यूनिकॉर्न्स, उन्होंने 7000 करोड़ से ज्यादा का वैल्यू इनका हो चुका है। और आज इंडिया यूएसए और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर, और यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स के अंदर पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और मैं सदन को ये भी बताना चाहूंगा, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी 5,50,000 crore were invested by venture capitals and private equity in the startup ecosystem, which is one of the largest in this world. श्रोती महोदय, जो सरकार इतना काम कर रही है और आप कह रहे हैं, श्रोती महोदय, किसी ने कहा है मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। श्रोती महोदय, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वर्ल्ड में हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज इंडिया के पास, चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत के पास है। FDI, we have the highest foreign capital, foreign FDI inflow. ये कोविड डिस्ट्रप्शन के बाद हाईएस्ट FDI inflow in this country. श्रोती महोदय, एक्सपोर्ट्स 300 बिलियन एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज का हम क्रॉस कर चुके हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम 400 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार करेंगे। श्रोती महोदय, इतना ही नहीं, और जीएसटी के अंदर रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन 1,40,000 करोड़, और पेंडेमिक के बावजूद हमने जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन किया है। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन किया। श्रोती महोदय, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, मैं सदन को बताना चाहूंगा 86 लाख लोगों ने अभी तक उड़ान का इस्तेमाल किया है। अगर उड़ान नहीं होता तो ये गरीब चप्पल वाले लोग और उड़ान का इस्तेमाल नहीं कर पाते। श्रोती महोदय, आईपीओस, वाइंड अप कीजिए, 2 मिनट के आईपीओस। श्रोती महोदय, 21-22 में सो फार 89,066 करोड़ हैज बीन रेज्ड बाय 750 आईपीओस। 75 आईपीओस ने एक साल के अंदर कोविड के बावजूद, और 89,000 करोड़ जो पिछले 10 साल का हाईएस्ट है। और श्रोती महोदय, अंत में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है 25 जनवरी को, एंड ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज ऑन 25 जनवरी बाय IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कहता है India's real GDP is projected to grow at 9% both in 21-22 and 22-23 and 7.1% in 23-24. This project India is the fastest growing major economy in the world in all the 3 years. अगले 3 साल के अंदर भारत दुनिया का सबसे ज्यादा तेज गति से विकास करने वाले देशों के अंदर होगा। अंत में श्रोती महोदय, गरीबों की बात करते हैं। इंडिया टुडे, 1 मिनट और श्रोती महोदय, 1 मिनट केवल। श्रोती महोदय,
इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन सर्वे आया है। ये हमारा सर्वे नहीं है, ये इंडिया टुडे मैगजीन का सर्वे है। और वो कहते हैं कि 68% लोग दे आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पेंडेमिक के बावजूद। 1 मिनट केवल श्रोती महोदय, 1 मिनट केवल। और इतना ही नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है, उसने सर्वे किया 4 दिन पहले, मिनट में आया है। नमो की पॉपुलरिटी 72%, मैक्सिको के प्रेसिडेंट की पॉपुलरिटी 64%, इटालियन पीएम 57%, जापान 47 एंड जो बिडेन केवल 41% है। और अंत में श्रोती महोदय, लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती है, लहरों को, वेव्स को साहिल की दरकरार नहीं होती, हौसले, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। धन्यवाद। लहरों को साहिल की दरकार आप कंक्लूड कीजिए, नहीं होती। सुनने की जरूरत नहीं है, आप कंक्लूड कीजिए। हौसले बुलंद हो तो दीवार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जी शब्दों के साथ मैं निर्मला जी को इस बजट के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज डोला सेन। मिस डोला सेन, यू हैव 5 minutes. Another speaker has already spoken about it. Please, now you start. 5 minutes or 10 minutes, sir? आप शुरू कीजिए। हाँ। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। Thank you, Chairman, sir, for giving me the chance to speak on budget 22-23. हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बहुत दिन बाद, एटलीस्ट 3-4 सेशन के बाद, हम सब राज्यसभा से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर को आते हुए, बैठते हुए, बोलते हुए और भाषण देते हुए देखा भी, सुना भी। और अगर यूपी इलेक्शन ना होती, अगर पंजाब इलेक्शन ना होती, अगर गोवा इलेक्शन ना होती, ये संभव नहीं होता। So again, thanking the central government and the treasury bench from core of my heart. Now coming to my first point on budget, unemployment. In 2014, this Modi ji-led BJP government claimed that it would create 2 crore jobs per year for we the people of India. And the Honorable Finance Minister in her budget speech this year said that the government would create 60 lakh jobs over the next 5 years for we the people of India. I want to ask, sir, who is telling the truth, by the way? Instead, in reality, what have we seen? Pandemic से पहले ही हम लोगों ने देखा, इंडिपेंडेंस के बाद पहला बार 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट in our country. In just 4 years of time, 2016-17 to 2021, and in spite of Modi ji's Make in India policy and call and push, the number of people employed in the manufacturing sector reduced by almost half. In India, 5 million youngsters join the workforce on an average per year. Very unfortunate, but it's the fact that this budget gave no assurance to those youngsters, to the women, to the migrant workers, to the jobless employees, even to the MGNREGA workers of our country. Incidentally, the allocation of MGNREGA fund for this year saw a decrease of 25% from the revised estimate of 21-22 and a decrease of 34% from the actual expenditure of 2021. In this regard, an answer by the minister in Rajyasabha last week also admitted that even the MGNREGA workers have not been paid rupees 3358 crore in wages. क्या बोला जाएगा सर, जिसको पूरा बरसों में सिर्फ 100 दिन का काम मिलता, उसको भी इतना वेज बाकी पड़ गए. What a shame, sir, what a shame. Coming to the second point, sir, privatization of profitable government concerns. Honorable Prime Minister is celebrating Amrut Mahotsav for the 75 years of our independence. And what an irony, sir. Modi ji's Make in India has become Sell India virtually.
रेल टू वेल, सेल टू BSNL, ये देश बेचो सरकार ने सब बेच रहा है, ये स्वाधीनता की अमृत महोत्सव की शुभ अवसर पर। Actually, the ruling party and their predecessors were not at all in the independence movement. स्वाधीनता संग्राम में कितने सारे लोग शहीद हुए, कितने सारे लोगों की जिंदगी चले गए, इसके बारे में इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि only 1 or 2 reference we can get from the history of their predecessors' role in pre-independence era. कोई सेल्युलर जेल में गए और 4 बार ब्रिटिश से माफी मांग के बाहर आए, नहीं तो किसी और ने यूथ को इंस्पायर करने के लिए बोले कि ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन कर दिया जाए। So it's obvious that they don't have the respect for our independence, for our independent country, for our nationalism, for our constitution, for our rights and for our democracy. इसीलिए सर इतने हंसते हंसते ये लोग देश को बेच रहे हैं। Another reason is there too. In fact, very unfortunately, this ruling party have won 303 seats in the last Loksabha election, and now in Rajyasabha too, they are majority. So they think and they claim to be the owner of the whole territory, of all the public assets and of all the national assets too. So they started selling these national treasures and assets, considering and assuming that all these are their own private property and they can't do anything. Sorry sir, it's not democracy by the way. ये लोकतंत्र नहीं है, इसको मेजॉरिटी के घमंड बोलते हैं। This policy includes privatization or disinvestment in all the profitable central government organizations such as our national carrier Air India, national insurer, life insurance and general insurance corporation, state-owned oil refiner, BPCL, IOCL, traditional Bengal chemical, country's lifeline Indian Railways, Port Trust, Hindustan Paper Corporation, FCI, CLW, SAIL, BSNL, CPSE, RINL, Pawan Hans, etc., etc. And there is 100% FDI, foreign direct investment, 100% for the foreigners in coal sector. And even 74% corporatization in defense sector too. Nationalized banks को भी बेचने का इरादा ले लिया इन लोगों ने. They are selling public assets like roads too on long leases to private companies. और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि there is no clarity on the actual benefit of these proposals. लेकिन हमारी एक क्वेरी है सर, सब कुछ जब प्राइवेट हो रहा है तब सरकार की जरूरत क्या? सरकार को भी प्राइवेट कर दीजिए सर, ये अच्छा रहेगा। Now the 4-year national asset monetization plan proposes to generate and vague rupees 6 lakh crore by selling all the assets and properties of we, the people of India. And what a democratic approach, sir. BJP never mentioned anything about this massive economic overhaul in their election manifesto of 2014 and 2019. If they would have done so and then won the election afterwards, we must think that it's people's mandate. तब ये लोग इस NMP के लिए people's mandate नहीं लिया और उन लोगों से हमको लोकतंत्र की भाषण सुनना पड़ता है. After independence in Congress regime, we have seen the nationalization of bank, coal, insurance, etc. And in BJP regime, specifically Modi ji regime is denationalizing them all. और हमको ये भी मानना पड़ेगा कि ट्रेजरी बेंच स्वदेशी भावना से जागरूक है. हम इकोनॉमिकली बहुत आगे बढ़ रहे हैं सर, in all respect, as announced by our honorable Prime Minister. कैसे सर? There are some examples. The global hunger index put India at a dismal 101 out of 116 countries. Bhutan भी हमसे आगे है. 84% of households in the country saw a fall in income. 4.6 crore Indians fell into extreme poverty. Inequality and poverty leads to the death of 21,000 people each day, irrespective of COVID-19. The food subsidy bill has fallen a 28% drop, which also includes the public distribution system. The fertilizer subsidy has been cut, a nearly 25% drop in the raised estimate for the financial year. And is this how, sir, the government aims to achieve its goal of doubling farmers' income? With the Sale India policy and amended labor laws, 4 labor codes, workers and employees are going also to the streets to become beggars. इस सब कुछ को हम लोगों को सबका साथ
सबका विकास मानना पड़ेगा सर. Lastly, sir, I will refer some traditional industry of my state of West Bengal, jute industry. Raw jute is a natural fiber. It is biodegradable, it's eco-friendly, environment friendly. It has enough scope of diversification from carpet to geotextile to strengthen the roads and the river banks. Obviously, it has enormous scope of export, that is foreign currency earning. India is an agrarian country. Jute is an agro-based industry too. And our country is self-sufficient in jute in respect to both agriculture and industry. And in our country of 135 crore population, jute industry is labor-intensive too. Out of our West Bengal's population of 10.5 crore, jute industry contains 2.5 crore population as a whole, including agriculture and industry. But sir, jute industry is in dire crisis now. In 1987, Congress regime has announced mandatory packaging act for jute industry so that 100% food grains and sugar will be packed by jute bags. अभी wind up कीजिए. For the sake of 1 minute is 1 minute is left, sir. Please. So that 100% food grains of sugar will be packed by jute bags for the sake of health of us, we the people of India, and for the sake of the survival of the industry. The industry now wants the central government to reduce the raw jute price from 7,200 per quintal to rupees 6,500 per quintal at least, so that they can buy the raw jutes to run the industry. The government must help the jute growers too. But in this ongoing season, the jute industry has already suffered a loss of rupees 1,500 crore due to the dilution of 4.81 lakh bales of Hessian bag orders from Food Corporation of India to Jute Corporation of India in favor of plastic materials, unfortunately, for food grain packaging. Sugar packaging has already been reduced to 20% only from 100%. Only central government can save this industry, but this budget is silent regarding these traditional industries' revival. Let me finish my speech, sir, with our Honorable Prime Minister's reference. उन्होंने कल इस सदन पर बोले हैं देश की जनता कुछ नेताओं से आगे चल गए. हाँ, ये सच है, ये हम भी मानते हैं. सर, एक सेकंड सर. क्योंकि if we consider world history, we will see that हिटलरी, तुगलकी, तानाशाही, एंटी कैंपेन, झूठ, साजिश, डिफॉर्मेशन कभी लास्ट वर्ड नहीं होते. हर टाइम लास्ट वर्ड होते हैं जस्टिस, सच, न्याय और पीपल. वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड सर. जैसे बंगाल में पीपल ने इन लोगों को सबक सिखाए 2021 पे ममता जी को लैंडस्लाइड विक्ट्री देके, वैसे ही 2024 में देश की जनता भी इसको सबक सिखाएंगे. थैंक्स सर. The next speaker is Dr. Kanimoji NVN Somo. Thank you, sir. I rise to address this august house for the first time with utmost humility. I would like to express my sincere gratitude and thanks to our beloved DMK President and the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, for giving me an opportunity to become a member in this august house. With a pride, I wish to say that I belong to the Dravidian stock. I revere the legendary leaders Thandai Periyar, Peraringer Anna, Kalaignar M. Karunanidhi, with whom my grandfather N.V. Natarajan worked with. My father, the late N.V.N. Somu, was a Minister of State for Defence in the Union government, who died in harshness on his way to address forward troops of Indian Army in 1997 near Tawang in Arunachal Pradesh in a helicopter crash. I am indebted to all of them. Sir, as we enter into the third year of COVID pandemic, we expected the budget 2022-23 would seek to balance short-term fiscal needs with structural reforms to support medium-term growth. However, nothing has been done in this regard, and the road to recovery is very fragile. Every household in the country fails to meet both the ends of the monthly balance sheets. The only sure thing in this last 3 years is the economic uncertainty. Now the Omicron variant has also renewed the economic uncertainty. Even without another full-scale lockdown, substantial fiscal support will be required to keep recovery track month by month. But our Honorable Finance Minister is happy to announce schemes and roadmap for next 5-6 years. There is a saying in Tamil, "Irpadai vittu parappadai pidipadu tagumo." The Finance Minister's action is akin to this.
The COVID pandemic has added 20 crore new poor people into the system and robbed more than 20 crore people their jobs. Tourism and hospitality sector was hard hit and the road to recovery is still very bleak. But the finance minister is happy to announce scheme for the next decades. Kura eri kori pidikadavan vaana meri vaigundam ponana. I think the finance minister knows the meaning of this proverb. Sir, as a medical professional, I would like to emphasize that the COVID-related medical interventions will still remain a top priority for the foreseeable future. The development in medical infrastructure and public awareness by the state governments has reduced the death toll due to COVID-19 pandemic. Unfortunately, the patients with other ailments had to bear the heavy burden in the coming years. Than the estimated fund from last year, this year 500 crores of funds have been cut off in this pandemic budget for the health. Unless the budget allocation for medical care and infrastructure increase to 6% of country's GDP, the country may not be in a position to serve its 140 crore population. Though we are optimistic that COVID pandemic would end soon, the government has no clue how to tackle if there is any other virus outbreak in the future. Unless the government gets the right advices of the medical expertise, whatever planned by the government is like putting cart before the horses. Sir, last time there were many deaths due to the unavailability of the oxygen. I think the PM Care Fund can set up oxygen plants across the country in all the government hospitals. It is very important to protect the health of all citizens from the risks associated with any future pandemic. To mitigate these risks, the role of health insurance sector becomes more vital, necessitating a collaborating effort to improve health insurance penetration and the development of healthcare facilities across the country. One of the largest contributing factors to these high prices is the current 18% GST rate imposed on the health insurance premium. The sector has called for a GST rate cut on health insurance premium and granting infrastructure status to healthcare facilities to boost access to quality healthcare. But the government is turning a blind eye in this regard. In fact, there is a need for GST exemption for several life-saving medicines, equipments and services. As per industry reports, an estimated 56 crore individuals from lower middle class to upper middle class do not have any health insurance cover, and it represents about 40% of India's population. Apart from the lack of awareness about the importance of health insurance, the costs associated with even standard insurance products like Arogya Sanjeevani is a deterrent with prices ranging between rupees 15,000 to rupees 18,000 per year for a family of 2 adults and 2 children, with the senior most member's age being 45. Sir, generally speaking about health is a state subject, but we are at present sitting on a health time bomb and that healthcare should be accorded topmost priority. The budgetary allocation from the union government is absolutely inadequate to achieve quality healthcare for all. Take for example the success story of Tamil Nadu, sir. The pioneering champion of healthcare in Tamil Nadu is a mercurial leader, Dr. Kalenga, who a beloved leader and chief minister, M.K. Stalin, is following the footsteps of Dr. Kalenga in providing free and good healthcare for poor in Tamil Nadu. Tamil Nadu is the first state in the country to provide free healthcare for all needy patients. In Tamil Nadu, any patient can enter any government hospital without even a rupee in the pocket and still get good treatment and healthcare with required medicine and walk out of the hospital cured absolutely free. Dr. Kalenga is a pioneer champion of free healthcare and health insurance scheme. He has introduced Kalenga Health Insurance Scheme for all way ahead before the union government could even conceive the thought of it. He was a pioneering champion to introduce the free eye care to remove the backlog of cataract patients in the state. It is only after Kalenga and Ilavasa Kannoli Dittam in 1972, the union government has able to conceive the idea of National Blindness Control Program and implement it throughout India. Sir, today Tamil Nadu tops in the country in all the medical and healthcare indices, be it in the doctor-patient ratio, hospital beds patient ratio, or hospital PHCs per population. Tamil Nadu has developed a way ahead of other states in the country. This is a remarkable achievement of the Dravidian party rule in Tamil Nadu. While there is an urgency to focus on all the 3 levels of primary, secondary and tertiary healthcare, it is imperative that the union government look towards improving primary healthcare. The budget 2022-23 is a usual bundle of blatant lies and imaginary empty promises that do not reflect the actual accounts of the government's budgeted expenses and receipts.
Instead of setting a stage for the country's actual growth and reform trajectory, the budget plummets the hopes of the people into deep, stinky gorges. Failed promises and false promises are the regular feature of the budget documents since 2015. There are promises repeated in the union budget speeches from 2015-16 onwards. The classic examples are housing for all by 2020, the double the farmers' income by 22. There are many such like the linking of the peninsular rivers, 1 crore loan in just 59 minutes for the eligible SME startups, generation of 175 gigawatt renewable energy or green energy by 2022. In 2022, all the promises still remain a distant dream. Sir, the Housing for All by 2022 announced in 2015 with the aim to construct over 2 crore houses for Indians belonging to particular economic sections. In 2022, the Finance Minister has announced 48,000 crores have been sanctioned for the completion of 80 lakh houses for the eligible beneficiary under the Prime Minister Awas Yojana in rural and urban areas in the year 22-23. At this rate, it may take another 5 years to achieve the desired results. And by the time the backlog of houses required for the poor urban and rural household may go up to another 2 crores, this is only a conservative figure. The real numbers may bring more dark spots in this Housing for All program. Sir, I am immensely proud to also say that Dr. Kalaignar, who introduced the pioneering scheme of providing Pakka house to the slum dwellers way back in 1970s, and later the distribution of pre-concrete houses to poor people of the sections of the society, namely the Samathuvapuram village housing scheme with 100 houses in each Samathuvapuram. There are so far 145 Periyar Nanavu Samathuvapuram in Tamil Nadu. No other leaders have even dared enough to thought of constructing houses for Dalits along with the other communities to promote social equality and uphold social justice in the country. This has also been allotted to the poor, transgenders and to the physically disabled. Had the Samathuvapuram schemes were replicated throughout India, we could have established a social equality among the people. At least from now on, I would like to urge the union government to take a leaf out of Dr. Kalaignar and his far-sighted social upliftment program, sir. Sir, ever since the government has imaged the railways in the general budget, its importance has been reduced and the stage is set for the privatization of railways. It took 67 years for the rulers from Jawaharlal Nehru to Manmohan Singh to develop railways into one of the world's largest network and employers. But Honorable Prime Minister will take less time to derail the great Indian railways. The commercial sale of railway routes to private players means dividing the Indian railways into two. One for the rich, elite and affordable, and another for the poor, downtrodden, unaffordable people. It will create all the stations into two, one for the rich class and another for the poor class. This will lead to the discrimination like in the colonial times. Are we heading towards such discrimination and division? Indian Railways so far has been a symbol of Indian unity and social integration. It is the prime duty of the union government to maintain the same levels of unity, integration, communal and social harmony in railways. Sir, a stepmotherly treatment in Tamil Nadu by the union government budget stands exposed again. Under the fund allocation for the new railway lines, it has been granted rupees 59 crore for 11 projects, out of which 10 projects have been allocated only a token amount of rupees 1,000. Whereas the Northern Railway gets the highest share across all zones, with rupees 18,926 crores for 14 projects, along with a token amount of rupees 15,000 for 15 other projects. Make in India, make for world is mantra Prime Minister Narendra Modi gave in his 2020 Independence Day speech. For this vision to be successful, over 6.3 crore MSMEs must be taken on board. Whether the Finance Minister has taken any serious note on it needs an answer. To ease credit and liquidity concerns, the Emergency Credit Line Guarantee Scheme should be expanded further to ensure outreach among smaller enterprises within MSMEs. MSMEs need support to improve production and exports to attain Atmanirbhar Bharat or self-reliance in line with Prime Minister's vision. Sir, Tamil Nadu is India, India is Tamil Nadu. When Tamil Nadu progresses, India too shall progress. Tamil Nadu is a champion state as far as the socio-economic development in these is concerned. Whether it is education, employment and economic generation, income generation, infrastructure development, wealth creation, enterprises, health infrastructure, social justice and communal harmony, Tamil Nadu stands second to none other in the country. Unfortunately, the centre sometimes deny and jeopardize the rightful share to Tamil Nadu. Even in the 1960s, our great predecessors have said
வடக்கு வாழ்கிறது, தெற்கு தேய்கிறது. I strongly believe that the same situation is still continuing. In spite of facing denials of various kinds, Tamil Nadu has remained a pioneering champion in the state, in the country. Thanks to the political renaissance created by our party, DMK, spearheaded by a genius leader, Peraringar Anna, sustained by one and only Dr. Kalaignar. Now the baton has been handed over to our beloved Chief Minister, M.K. Stalin. The people of Tamil Nadu, especially the poor, downtrodden and oppressed, the religious, the linguistic minorities, feel that they are very much safe in the hands of Muthuvel Karunanidhi Stalin, the statesman par excellence. Thank you. Thank you, Dr. Kanemoji. Now, and the next speaker is Elamaran Korim. Is it there? Ah, yes, please. Thank you, sir. I would like to mention that this is an anti-people budget aiming for all-out privatization. I call this government 3A government. A government of Adani, Mr. Karim, for Adani, you have only 8 minutes Adani. because rest of the time has been exhausted of your party. What is that? So you have 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes? No. 12 minutes. I have to... Your This budget is full of high decibel sound bites with no substances. Your other speaker has taken the rest of the time. So you will have 8 to 9 minutes. You can. Yes. We can adjust, sir. Yes, we all know that budget is presented in the backdrop of an economic scenario when majority of the people are facing unimaginable miseries in the form of huge loss of livelihood, loss of earnings, deepening poverty and intensified hunger in the midst of unprecedented price rise of fuels and essential commodities. Sir, unemployment is so bad that there are job riots in Bihar and UP. Wealth and income inequalities are among the worst in the world. Millions have been pushed into poverty because of the pandemic and the lockdown. And inflation is accelerating even in the midst of massive unemployment. No budget in the recent period had been presented at a time when the economy is going through such a challenging situation. In this scenario, what was needed in the budget was a big push towards job creation and increasing domestic demands. But this budget failed miserably in addressing these issues. Union Budget 22-23 has been presented in the overall background of desperate and destructive privatization drive, forgetting the need of the common man. The so-called inclusive growth, financial inclusion mentioned by the finance minister in her speech displays shameless hypocrisy of the union government. Sir, the total budgeted government expenditure for 22-23 is 39.45 lakh crores, which is just 4.6% higher than the revised estimate for 21-22. That means the increase is below the rate of inflation and hence also below the growth rate of real GDP of 8.5 projected by the economic survey. The budget has proposed a growth in total expenditure by around 1.75 lakh crores from the revised estimates of 21-22. But as percentage of GDP, the total expenditure has come down from 17.8% in 2021 to 15.3% in 22-23 budget estimates. This squeeze on expenditure is visible not merely in the central government expenditure. By squeezing the transfer of resources to states, the state governments are also being forced to do the same. These transfers are to come down from 6.91% of GDP in revised estimate of 21-22 to 6.25% in 22-23. The growth of revenue receipts has primarily grown as corporates were able to accumulate profits during the pandemic, reflected through increased corporation tax realization and also garnered through GST hike
and petroleum price from indirect taxes levied upon the common people. The revenue expenditure budgeted in 22-23 of Rs 3.19 lakh crores supposed to include the welfare schemes named after Prime Minister marks an increase by less than 1%. Despite a huge increase in GST collection as claimed by Finance Minister in her budget speech. The allocation of MNREGA is reduced to Rs 73,000 crores from 98,000 crores the previous year. In the face of increased intensity of widespread hunger, food subsidy is also reduced. National food security has been slashed down by 30%. Fertilizer subsidy has been also drastically cut by 25%. Petroleum subsidy by 11%. In the face of the skyrocketing fuel price. Even the allocation for midday meal scheme, that is for the poor students, now renamed as PM Poshan, faced a drastic cut by 1,267 crores. Sir, budget did not bother about the miseries being faced by the working people during the pandemic in the form of loss of livelihood and earnings, and also widespread informalization of employment. Despite demands for relief and expansion of social security for all, the budget remained absolutely in a denial mode for the working people who actually create wealth for the nation. The budget does nothing to stimulate demand for affecting the economic revival and also for providing relief to the working people. The outlay for a whole range of programs that provide relief to the poor have actually been slashed compared to last year. Sir, what was required was introducing an urban employment guarantee scheme. On the contrary, it has cut down expenditure of MNREG. Sir, MNREG is a demand-driven program. Funds will be made available if the demand crisis for such funds, that is the claim of the government. But if the wages are delayed, the enrollment in the employment may get reduced. So, these lifeline projects introduced by the UPA government, now you are killing that project through these budgets. Sir, the privatization, the budget is presented in the overall background of desperate and destructive privatization drive, embracing the infrastructure, manufacturing, and mineral sector, facilitating transfer of our resources from national exchequer to private hands. So, the corporates could double their wealth during this pandemic, COVID pandemic. The finance minister at the very beginning of her budget speech itself was praising the government for its successful sale of the national carrier Air India and Neelachal Ispat to the Tatas. The budget has reiterated government's commitment of further transfer of state-owned capital assets to private sector, both domestic and foreign. In fact, under this regime, economic policy making is gradually moving towards purely anti-people destructive trend, much to the detriment of the national interest. Sir, on farmers, what was the promise in the budget of 2021? Point 22 in the budget 2021, it said, our government is committed to the goal of doubling the farmers' income by 2022, this year. Sir, a commission was appointed by the then government, Ashok Davle Commission. That commission gave the report, 14-volume report. It is still sleeping in the shelf of the government. Now, in this budget, there is a single word mentioning regarding the doubling the income of the farmers. In contrary, the revenge to the farmers, what you have done, the farmers' reliefs are cut short by drastically. Procurement remunerative price of non-waiver were not even addressed. We have two more speakers. Yes, I am concluding, sir. Total allocation was 4,74,750 crores in 21-22, which has now fallen to 3,70,303 crores. That is over a lakh crore reduction. That is a revenge on the farmers who were on the struggle against the controversial farm laws. The share of the rural development in the budget has also fallen from 5.59% to 5.23%.
Allocations for all major schemes for farmers have also seen budget cut. The allocation for procurement of FCI and under decentralization procurement sum has been reduced by 28%. Allocation for funds for the fertilizer subsidy has been reduced by 25%. Under PM Kisan, 12.5 crore farmer households are supposed to be provided 6,000 rupees each, which requires an allocation of 75,000 crores, but only 68,000 crores are allocated. Thank you. You conclude. And finally, I'm one calling the minute, sir, next 1 minute, speaker. sir. Please. In the post-COVID period, we there don't is a have need much for time. provide more assistance to states, including Kerala, but the budget has been inconsiderate and silent on this. Should have Even liked to budget did hear not you aid the more, taking but forward there is no development of time. Kerala. I mean, there's Kerala has paucity always of time. raised so many demands. Again, I have to and request aims, a railway zone and Mr. other Ajit Bhuya. important projects which were put Will into you the speak government. today or It tomorrow? is not considered. It is very sorry to say. So I can't support this budget. Thank you, sir. So you speak tomorrow. Now, Mr. Sanjay Singh. आपने मुझे इस बजट पे अपनी बात कहने का मौका दिया। सर, मैं इस बजट पे और इनके डिजिटल इंडिया पे राजीव जी की एक कविता है, वो एक बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने लिखा है, वो सदन के सामने सुनाना चाहूंगा। खाओ डिजिटल, गाओ डिजिटल, देश का बैंड बजाओ डिजिटल, रुपया डिजिटल, बैंक भी डिजिटल और सेना का टैंक भी डिजिटल, बच्चे पाएं डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। बच्चे पाएं डिजिटल शिक्षा और फिर मांगे डिजिटल भिक्षा। डिजिटल डॉक्टर, डिजिटल गोली, डिजिटल ईद और डिजिटल होली, डिजिटल सड़क पर डिजिटल कार, डिजिटल संसद और सरकार, डिजिटल खेत में करो किसानी, डिजिटल खाद और डिजिटल पानी, डिजिटल दूध और डिजिटल गाय, डिजिटल चीनी, डिजिटल चाय, भर के खाओ डिजिटल रोटी और फिर कर दो डिजिटल पोटी। ये इस बजट के बारे में एक कवि की प्रतिक्रिया है मान्यवर। और जो इस सरकार के दावे हैं, अब उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं मान्यवर। इन्होंने कहा है कि 60 लाख नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो स्वयं स्वीकार कर लिया, पहले तो आप 2-2 करोड़ करके लोगों को मूर्ख बनाते रहे, और अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 2 करोड़ आपके बस की नहीं है। अब आप 60 लाख नौकरियां देने की बात कह रहे हैं। और आप नौकरियां कैसे दे रहे हैं नौजवानों को मान्यवर? 35,000 रेलवे भर्ती के लिए 1 करोड़ नौजवानों ने उसमें फॉर्म भरा, और उसके बाद जब उसका परिणाम आता है उसमें घोटाला और गड़बड़ी की जाती है। जब वो नौजवान सड़क पर नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं, उनको लाठियों से पिटवाया जाता है प्रयागराज में, उनको पटना में लाठियों से पिटवाया जाता है, घर में घुस के लाठियों से पीट पीट के आप नौकरी दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ छोड़ के आप नौकरी दे रहे हैं। आप कर्मचारियों की बात इस बजट में कर लीजिए मान्यवर। जब कर्मचारियों की चर्चा होती है, पूरे देश के कर्मचारियों की एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। 40 दिन कोई सांसद और विधायक रह लेता है, पूरे जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है, उसकी पेंशन आपने खत्म कर दी। पेंशन तो छोड़िए, टैक्स के राहत की उम्मीद थी कर्मचारियों को, आपने इस बजट में वो भी नहीं दिया। इसके साथ साथ मान्यवर, आपने इस बजट में किया क्या है? 22 तक सबको घर देने की आपकी योजना थी, वो 22 तक घर देने की योजना भी पूरी तरीके से जमीन पर उतर के नहीं आई, वो भी फेल साबित हुई। जब आपसे पूछा जाता है सरकार की उपलब्धि क्या है, सरकार की आमदनी क्या है, आप सीना ठोक के कहते हैं अरे हमने तो आमदनी बढ़ा दी, देश का एयरपोर्ट बेच दिया। फिर आपसे पूछा जाता है कुछ आमदनी बढ़ी क्या सरकार की, कहते हैं हाँ बिल्कुल बढ़ा दी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच दिया, कोल इंडिया बेच दिया, बीपीसीएल बेच दिया, LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेचने का काम किया। ये आपका मेक इन इंडिया है, ये आपका डिजिटल इंडिया। मानवर मैं खत्म कर रहा हूं मानवर, मैं मनरेगा की आप बड़ी पीठ थपथपाते हैं अपनी, मनरेगा की चर्चा बहुत होती है, मनरेगा का बजट आपने खत्म कर दिया, खाद की सब्सिडी आपने कम कर दी। इसका मतलब जो गरीबों को अन्न देने की योजना है, वो भी योजना एकमात्र आपकी दिखावा है, और मार्च के बाद गरीबों को अनाज हिंदुस्तान में मिलना बंद हो जाएगा। अंत में आपके माध्यम से एक ही सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा
कि अपना ध्यान देश की तरक्की पर लगाइए, देश को आगे बढ़ाने पर लगाइए। बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, गुंडागर्दी मत कीजिए। आप तय करने वाले कोई नहीं होते। कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या कैसे रहेगा, कौन Zafar Islam, I'm sorry. Please. Thank you very much, sir. First of all, I would like to thank my party and my leaders for giving me this opportunity, and also thank you for giving me this opportunity, sir. Sir, I want to really congratulate the Honorable Finance Minister. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, she has presented a very important budget. It is an all-encompassing budget where it has taken care of everyone. So there is something for everyone in this budget. सर, लेकिन इस बजट को मैं बहुत लोगों को सुन रहा था, यहाँ पर बहुत पुराने जो मंत्री भी रह चुके हैं ऑपोजिशन बेंच पे, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स को मैंने सुना जिन्होंने बजट के बारे में काफ़ी टिप्पणियाँ की। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सर, बजट को किसी बैकड्रॉप पे देखना चाहिए, किसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। आइसोलेशन बजट को कभी नहीं देखना चाहिए। जब बजट प्रेजेंट करती है सरकार तो उसका कोई मकसद होता है, और उस मकसद को देश के मकसद से को अकेले रख के नहीं देखना चाहिए। इस बजट में सरकार ने जो बजट पेश किया, इसको आइसोलेशन में नहीं, साइलो में नहीं, बल्कि इस बजट को एक कंटिन्यूटी में देखना चाहिए कि पिछले सारे जो बजट अभी तक पेश किए गए सर, और जितने आत्मनिर्भर पैकेज रहे, और जो सरकार 2014 से जो एक चरबराती इकोनॉमी को सुधारने की जो पेशकश कर रही है 2014 से, उसी नज़रिए से देखना चाहिए कि उस पूरे 7 सालों में जो हमने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स किए हैं, रिफॉर्म मेजर्स लिए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, पॉलिसी रिफॉर्म मेजर्स किए हैं, और बहुत सारे जो ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे आज जो है इकोनॉमी जो है एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी उभर के आई है। ये हमें सबको मालूम है, और मेरे ख्याल से अपोजिशन बेंच को ही मालूम है कि हम 2 साल, एक तीसरा साल है सर, जब हम कोविड से जूझ रहे हैं सर। हमें बधाई देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि और देश के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे और सारे साइंटिस्ट को, कि आज हम बड़ी अच्छी स्थिति में, बड़े सुरक्षित स्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक लीडरशिप थी, इसके पीछे एक सोच थी, और प्रधानमंत्री इसके बधाई के पात्र है। लेकिन उससे हट के मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये कोविड आया, और कोविड के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए जब Sri Jafar Islam, it is beyond 3 now. The 3 House was supposed to adjourn. But we have some pending business like special mentions and all, very short business. So we want to finish it. If the House we want to extend the House for another 15 minutes. If the House agrees. Okay. Okay. So thank you, sir. Yeah. Yeah. Let him. He has just started. He will. Please. Why? Please carry on. Thank you very much, sir. I'll finish in 15 minutes. So I was talking about the period we had in COVID, और वो 2 साल का वक्फा जो तीसरा साल है सर, उसमें हमने जो तकलीफ़ों का दौर देखा है, जिस तरह से पूरी दुनिया की इकॉनमी चरमराई, जिस तरह से पूरी दुनिया की इकॉनमी लड़खड़ाई, भारत को एक्सेप्शन देश नहीं था, भारत की अर्थव्यवस्था को भी असर पड़ा। लेकिन हमने जो रिफॉर्म्स मेजर लिए थे, आज जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इकॉनमी अच्छी हालत में नहीं है, वो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज के हालात में अगर इकॉनमी को देखिए सर, तो आज के हालात में अगर आप देखिए तो इकॉनमी जो है सबसे तेज़ी से चल रही है। इस बार का हमारा जो 9.2 का जो जीडीपी रहा है, जीडीपी ग्रोथ, वो अपने इस बात को दर्शाता है कि हम एक बुरे दौर से वापस आ गए हैं। हमने रिकवरी मोड में है, रिकवर करके तेज़ी से हमारी इकॉनमी बढ़ रही है। जिस पैरामीटर पे देखिए चाहे सर, जितना भी आप जिस पैरामीटर पे भी अगर देश की इकॉनमी को देखेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इकॉनमी तेज़ी से बढ़ रही है। चाहे आप देखिए एक्सपोर्ट का नंबर देखिए, चाहे टैक्स टू जीडीपी नंबर देखिए सर, रिकॉर्ड हाई है टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है इस बार का जो है। हमारा बजटेड जो फिगर था सर, बजटेड जो 2022 फाइनेंशियल ईयर का जो बजटेड बी था वो 9.8% था, 9.9% सर।
but eventually 10.8% जो है रिवाइज एस्टिमेट जो है 10.8%, दैट ओनली सजेस्ट कि इकोनॉमिक रिकवरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और ये 10.8% सर अगर आप देखिए पिछले 2 डिकेड में सबसे ज्यादा जो है इस बार जो है टैक्स टू जीडीपी जो बेस्ट नंबर जो है वो इस बार का रहा है। और इस बार जब देखिए अगर आप अगर जो इस पे एक्सपोर्ट्स का नंबर देखिए तो एक्सपोर्ट्स का नंबर जो है सर ऑल टाइम हाई चल रहा है सर, पर मंथ जो है वो $32-33 बिलियन का चल रहा है। अगर आप देखिए क्रेडिट ऑफटेक जो है नहीं हो रहा था बिकॉज पिछली सरकार ने इतने लोन बांट लिए थे, उसके बारे में कभी नहीं बात करते हैं कि हमने इतने लोन बांटे, लेकिन वो बात करते हैं कि लोन जो वापस कभी नहीं, उसको सुधारने के बाद डिलेवरेज कंपनी करने, जो लेवरेज इतना कंपनी कर चुकी थी उसको उन्होंने डिलेवरेज किया। और अब इकोनॉमिक रिकवरी के साथ साथ ये भी दिख रहा है कि देखिए क्रेडिट ऑफटेक भी है, अभी 9.9% प्लस में क्रेडिट ऑफटेक है जो कि पिछले महीने में 7% था। तो ये सब चीज़ें दर्शाती है कि सर इकोनॉमी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बैक इन ऑर्डर और इट्स मूविंग वेरी फास्ट। दैट्स वाई अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और दुनिया के जो निवेशक है वो हिंदुस्तान में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो रिकॉर्ड जो है हमारा FDI है 62 बिलियन, अगर प्रो रेटा बेसिस पे देखें तो 64 बिलियन डॉलर जो है हमारा आएगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए कि इंडिया को आप ब्राइट स्पॉट देखते हैं। क्या सोचते हैं सर ग्लोबल इन्वेस्टर्स, क्या सोचते हैं? ग्लोबल इन्वेस्टर्स देखते हैं 2 चीज़ की, देश की अर्थव्यवस्था में एक ऐसी लीडरशिप के हाथ में है जो कि ठीक है कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था सबकी खराब हुई थी, क्या ऐसी लीडरशिप है जो इसको अच्छे डिसीजन ले सकती है और उसको वापस पटरी पे खड़ा कर सकती है। तो आज हमने ये देखा कि उस इकोनॉमी को जो वापस ऑर्डर पे आई, उसके बाद इसको और तेजी से कैसे ले जाना है उसकी भी जो है इस बजट पे पेशकश की। जो बहुत छोटे संक्षेप में बोलूँगा सर, अभी कुछ हमारे सीनियर लीडर जो अपोजिशन के वो कह रहे थे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखिए तो आपने कोई ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके रखा था 70 सालों में कि जिसको हमने खराब कर दिया हो। हमने तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के अगर हिसाब से देखें CAGR जो एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, उस पर 23% हमने जो है वो उस रेशियो से हमने खर्च किया है। इसलिए कि वो कंपेयर कर रहे हैं कि पर कैपिटा दुनिया की 20% आबादी हिंदुस्तान में रहती है, पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है $175। अरे आप कंपेयर करना है तो करिए कि इटली और उसको भी देखिए कि आपने जिस समय में उन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया तो आपने क्या किया। आपने तो दुनिया के जो 200 कंट्रीज में के पाद आप आते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, जबकि आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट है आपका अमेरिका का है, आपका इटली का है जो कि नंबर 1 नंबर 2, आप फ्रांस और जर्मनी की बात करते हैं। ये इन सब कंट्रीज की बात करते हैं जिन्होंने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लीड लिया था सर। जब हम सो रहे थे तो उन्होंने लीड लिया था, अब ये सरकार जो है लीड ले रही है, इसीलिए खर्चा भी कर रही है। और उसका ये भी दिख रहा है कि आज जो पिछले साल बजट में सबसे बड़ा लार्ज एलोकेशन हेल्थ सेक्टर में हुआ और उसके बाद हमने देखा कि जो गांव-गांव तक जो हमको आज राहत पहुंचाने का काम हम कर पा रहे हैं, जो हमने जो गांव-गांव में जो हेल्थ केयर सेंटर जो हम खोल रहे हैं, इससे किसको फायदा होगा? इससे आम जनता जो आज भाग के अगर छोटे शहर में, हम जैसे लोग जो छोटे शहर से आते हैं सर, जो हमने बचपन छोटे शहर में गवाया है, तो हमने छोटे शहर में जब हमने गुजारा है तो देखते थे कि कोई बीमार पड़े तो उसको किसी बड़े शहर में ले जाना पड़ता था। आज इस सरकार की एक कोशिश है कि हर छोटे शहर में एक अस्पताल हो, मेडिकल सेंटर हो, ऐसे सेंटर हो जिसमें इलाज हो सके। तो ये सरकार की सोच है, आपकी सोच नहीं थी। आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन आप अपना इंट्रोस्पेक्ट नहीं करें कि आपने क्या किया था। उसी तरह से अगर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं सर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में हमने इस बार जो है एजुकेशन सेक्टर में 1 लाख एजुकेशन के लिए 1 लाख करोड़ का जो है बजटरी एलोकेशन किया है। आप जरा 2014 में देख लीजिए आपका क्या बजटरी एलोकेशन था। आपका बजटरी एलोकेशन था नॉट इवन 50,000 करोड़। वहाँ से हम अपने 7 सालों में डबल कर दिया सर बजटरी एलोकेशन। आप इसलिए कि हम चाहते हैं कि गांव-गांव तक एजुकेशन में हर तरह का वो सपोर्ट मिले अपने आने वाली पीढ़ी को, ताकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ पाए। सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बजट में क्या है। इस बजट में लोग कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। साहब अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ठीक होगा? आपने तो बार बार CMI का डेटा, आपने हर जगह पे आप CMI का डेटा बात करते हैं। जब आप CMI का डेटा ले लीजिए, पिछले जो प्री कोविड लेवल और अभी ले लीजिए, तो आपको समझ में आएगा प्री कोविड लेवल में
जो सिचुएशन थी उससे वापस आ गए, कोविड लेवल में जितने 24% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वापस आ गए, हम ठीक से आ गए हैं। और जब तेजी से इकोनॉमी बढ़ रही है और जब इस तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हमने कमिट किया है कि हमारा फोकस क्या है सर, कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। आप कह रहे हैं कि डिमांड कंजम्पशन बढ़ाएगी, कैसे डिमांड कंजम्पशन बढ़ेगा? सिर्फ पैसा बांट देने से, या कि परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है? परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकलता है सर? जब आप इन्वेस्ट करेंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस करेंगे, इसलिए कि मल्टीप्लायर इफेक्ट है इसका जीडीपी पे। आप अगर चाहे ₹1 इन्वेस्ट करते हैं तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, रेल में करते हैं तो 5-5.5% रुपये उसका नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों को लेते हुए आप रोड पे करते हैं तो 3-3.5 रुपये का होता है। उसी तरह से हमारे सरकार का फोकस और जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ेगा, जब जैसे ही हम कैपेक्स जो अपना जिस तरह से शुरू होगा तो जाहिर है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइवेट कैपेक्स शुरू होगा, प्राइवेट कैपेक्स शुरू होगा तो नौकरी और बढ़ेंगी। तो ये तो बिल्कुल वर्चुअस साइकिल है सर। हमारी सरकार ने उसको ध्यान रखते हुए किया है कि हम इस तरह की पॉलिसी लेकर आएंगे ताकि परमानेंट सॉल्यूशन, हमारे पुराने जो सरकारें रही हैं उनकी सोच होती थी कि कुछ बांट दो, थोड़ा सा बांट दो, उनको छोड़ दो, उनकी स्थिति में छोड़ दो। लेकिन हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हम मजबूत बनाएंगे, हम एम्पावर करेंगे, हम हाथ थामेंगे, हम ऐसी सिचुएशन बनाएंगे, हम क्रिटिसिज्म से कतराएंगे नहीं, बल्कि हम उनको मजबूत करेंगे। अपोजिशन क्रिटिसाइज कर सकता है, लेकिन अपोजिशन को मालूम है कि पटरी पे चल रही है सरकार, इकोनॉमी और तेजी से चल रही है। जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएशन की बात कर रहे हैं हम, जॉब क्रिएशन होगा, इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन होता है सर। सबसे ज्यादा डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की वो जो बात करते हैं वो सबसे ज्यादा इसी वक्त ये इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ेगा। हमने 7.5 लाख करोड़ किया है सर। 7.5 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आप जरा सा 2014 में देख लीजिए, आपको अपना बजट भी देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि 2014 में आपके बजट में 2 लाख करोड़ के लिए आपने पूरा कैपेक्स के लिए डाला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। अभी 7.5 लाख करोड़ है। और उस वक्त के साथ देखिए सर, बजट जो जीडीपी का साइज 2014 में छोड़ा था जीडीपी का साइज 112 लाख करोड़ का। आज हमारे जीडीपी का साइज जो है, जीडीपी का साइज है 258 लाख करोड़ का। जो FY 23 का जो बजट खत्म हो रहा है, वाइंड अप कीजिए सर। 5 मिनट, 3:15 है सर, 3:15 15 मिनट जो आपने दिया तो उसी में बोलूंगा। इसके बाद और एजेंडा है सर, बस 5 मिनट में, बस 5 मिनट। मैं अपनी बात संक्षेप में खत्म कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए सर, इस बजट का जो either you will have to wind up now or you will speak tomorrow. नहीं सर, मैं वाइंड अप कर रहा हूं, 2 मिनट में वाइंड अप कर। So in 1 minute you wind up because I have other business. No, don't you address to the chair and listen to the chair. Sir, you have 1 minute to finish. Sir, I will conclude. I will conclude in 1 minute. I will go to the another agenda. I'll conclude in 2 minutes, sir. Sir, my final. I'm just concluding, sir. Sir, the focus of this budget is growth oriented. The government has very clearly committed large allocation, budgetary allocation for capex. That will ensure that there is enough job creation, there is enough demand, there is enough consumption, and obviously there will be a virtuous cycle for private investment as well. सर, इस दूसरी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें फोकस रहा है सर, कि हमारे जो चाहे वो रूरल सेक्टर हो, अगर रूरल डेवलपमेंट में देखें तो इस बार हमने I'm going to the other agenda now because the house has other business also. If you have not finished, you can finish it tomorrow. Well, I have not finished, sir. I have just started, but anyways. You can continue tomorrow. You can continue tomorrow. Will you? You can continue tomorrow. Sir, there is time constraint. Okay, so okay, either you finish it now. Sir, if you give me 2-3 minutes, I'll finish it. Already there is no time. I cannot make another extension of the house. I'll have to take sense of the house. So please, you'll speak tomorrow. So I'm going to the sir, I'm just concluding it, sir. I'm concluding it, sir. No, sir, no. Now you'll speak tomorrow. Now special mention, Professor Manoj Kumar Jha. Don't have to read.
Thank you, Honorable Vice Chairman, sir. It is with regard to demand to contain damage by arsenic contamination as a priority. The government must take action on it, ensure a speedy delivery of purified water under Jal Jeevan Mission, and rehabilitate the people affected by poisonous contamination. Table of the House, my special mention to address the anomaly in defense disability pensions. Thank you. Sri ZVL Nasimara. Mention is about Lepakshi monuments, to give World Heritage status to the Lepakshi monuments. Thank you. And the allocation of funds for conservation and promotion. Only you have to lay. है कि देश का नाम केवल भारत हो, एक दास, एक देश, एक नाम. दुनिया में शायद भारत ही सा देश है जिसको आप लेकर दीजिए बस. जी धन्यवाद. श्री केसी राममूर्ति. The concern over wastage of food in the country, need for sensitizing people about the importance of food. Thank you. The House stands adjourned to meet at 11 hours. Tomorrow. So to meet at 10 hours on Thursday, the 10th February 2022. Thank you.